Here our first topic is the permutation and combination. Now, as far as this topic is concerned, many students found this topic as a nightmare, but believe me, it's very easy and very logical topic. Provided you just go with the flow, you will get an edge over other candidates. Also, many students leave this section, right? But believe me, CAT cannot be cracked by leaving any of the topic or any of the section, right? So, we'll start with this. So, before starting, here is a snapshot of what we'll be doing in this series, particularly this topic. So the first topic is what we call it as a SATA method, that is select and then arrange method, then arrangement of people and digits, then distribution of the objects in the four categories, that identical to distinct, distinct to identical, right? Distinct to distinct. Partition theory, a very important topic as far as CAT is concerned. Another problems on the grids, problems on the pathways, problems on the chessboards, rank of the word as in the dictionary, and also the Fibonacci series. This is the micro detailing of our plan. So let's start with the first shortcut or the first concept, that is SATA, that is select and then arrange method. But before starting, just let's have some basics first. It will hardly take 2 minutes for us. Okay? So just quickly go through it. So the first word is combination and the another is permutation. In one word, just remember what is the combination means: to select only, whereas permutation means to select as well as arrange. So just remember this. So जब arrangement नहीं होगा तो automatically वो selection हो जाएगा. So this is denoted as NCR. This is denoted as NPR, right? So the formula for this is, everyone must be knowing, that is n factorial divided by n minus r factorial. For NCR, the formula is n factorial divided by n minus r factorial, here r factorial, right? Let's go do some calculation part of it. If I want to, let's say, NP2, you can do it by the formula, but just simple सा है, याद रखना, 10P2 मतलब 10 में से 2 बार इसको कम करके multiply कर दो, that's it. So 10P2 is nothing but 10 into 9, that is 90. If I say 12P3, what will be 12P3 in the same case? 12 को 3 बार कम करके multiply कर दो, 12 into 11 into 10. Right? Now, if I consider C, so 10C2, the first step will be same, that is 10 into 9. Second case, just divide it by 2 factorial, that is 2 into 1. So, though the answer of this is 45. If I say 12C3, 12C3 will be what in that case? 12 into 11 into 10 divided by 3 into 2 into 1, right? So this is a way of calculation, okay? Because I will be using this, so you shouldn't get confused. One more thing, remember that selection is always equal to rejection, right? CAT is not a selection exam, it's a rejection exam. If I want to, let's say 100 में से see 98, if I want to select 98 people out of 100, selecting this many people is a tedious task. So better way, if I identify those 2 people to whom I want to reject, so it would be 100C2. So just remember that selection is always equal to rejection. So if I say 500C497, it will be equal to 500C3, right? But remember, this is only applicable for combination. This is not applicable for permutation, right? Never do this, that 100P98 is equal to 100P2. No. Okay, this will not work here. It is only applicable for the selection, right? Okay, having said this, the last concept is factorial, right? Everyone knows this, right? If I say, what is a 5 factorial? 5 factorial, you will say that is 5 into 4 into 3 into 2 into 1. But this is not the definition, right? Or this is the representation of a factorial. But what is the simple concept that, let's say there are the 5 students A, B, C, D, E, and there are 5 chairs. So now the first person A have how many choices? A has 5 chairs to sit. वो किसी एक चेयर पे बैठ गया. B के पास कितने choices है? B will have 4 choices. C will have 3 choices. D will have
2, and last will have 1 choice. So that is it, the factorial. So please remember the definition of factorial. If I say n factorial, what is n factorial? Is nothing but placing n people or n objects at n places, right? So that is what my definition of a factorial is. N factorial is the first person will have all the n options, then second will have 1 option less, third will have 2 option less, and so on so forth. Last will have only 1 options. Alright, so this is what we call it as factorial. Also remember, and in terms of P and C is always equal to multiplication. ठीक है, जब भी and आया आपको multiply करना है, जब भी और आया आपको plus करना है. ठीक है, so these are the some basics which will require to go ahead. ठीक है, so having said this, let's go to the questions now. I'll start with a very simple question, that is a CAT 2004 question. That among 10 students, how many rank lists are possible such that Ram is always above Sham? These are the 2 particular students in which Ram should always be above Sham. Now I'll go with that SATA method only. What is the SATA method? It was select and then arrange, right? Basically nothing but the permutation का definition है, right? So among 10 students, first select, ये जो भी 2 लोग हैं इनके लिए पहले हम 2 जगह सिलेक्ट करते हैं. तो in how many ways that can be done? That can be done in 10C2 ways. What is 10C2? I have selected 2 places out of 10 places for these 2 particular students, Ram and Sham. Now and means, as I said, and means into. Now let's try to arrange them. Let's say the 2 selected places are this. Let's say second place I selected, and let's say this 5th place I selected. Now when I try to arrange, because Ram हमेशा शाम के ऊपर चाहिए, तो second place surely will be occupied by Ram and 5th place will be occupied by Sham. Whatever place you select, not necessarily second or 5th, first, 10th, whichever place you select, अरेंजमेंट एक ही तरीके से होगा. राम ऊपर वाली पोजीशन लेगा, शाम नीचे वाली पोजीशन लेगा. सो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस 2 पीपल इज 1, राइट? सो अब ये दोनों का हो गया अरेंजमेंट. जो बचे 8 लोग हैं, 10 स्टूडेंट्स बिठाने थे ना, तो बचे 8 लोग, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. सो 8 स्टूडेंट्स एट 8 प्लेसेस, इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज? एज वी सेड, नथिंग, दिस इज नथिंग बट द फैक्टोरियल. सो 8 लोग 8 जगह पे बैठ पाएंगे 8 फैक्टोरियल वेज से. So this is the answer of this question, right? I hope this point is clear. Let's go to the next question. Now second question. Here there are 5 people, P, Q, R, S, T. These are the 5 boys who are asked to come one at a time and make a presentation. In how many ways? P should come first, then Q, and then R. So again condition is for P, Q, R. So मैं पहले PQR के लिए जगह सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट? सो 5 में से 3 जगह ये PQR के लिए सिलेक्ट करेंगे. दैट कैन बी डन बाय 5C3 वेज, राइट? एंड इनटू. नाउ लेट्स ट्राई टू अरेंज दिस PQR. कितने तरीके से अरेंज होगा? ओनली 1 वे. जगह आप कोई भी सिलेक्ट कर लो. लेट्स से मैं लेता हूँ फर्स्ट, लेट्स से सेकंड, एंड लेट्स से लास्ट. फर्स्ट पे कौन आएगा? P ही आएगा. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी. देन Q, एंड देन लास्ट वाले पे R. So arrangement way for this PQR is only 1. Now the remaining 2 people, that is S and T, they don't have any objection. So these 2 people can be arranged in how many ways? 2 people, 2 places, 2 factorial ways. So this is the answer of this question. As it is asking in the value, let's solve it. 5C3 क्या होगा? 5 को 3 बार कम करके मल्टीप्लाई कर दो. 5 into 4 into 3 divided by 3 into 2. So 3 2s and into 2. So this 2 gets a 5 for the 20 should be answer of this question. Right? I hope this concept is clear. A very easy concept and very important one, right? I'm starting with the easy question. Gradually we'll take the difficult questions as well. Now the third question. In how many ways the letters of word Jupiter can be arranged in a row such that vowels appear in the alphabetical order? What are the vowels? A, I, E, O, right? Here the vowels are U, I and E, but I wanted that in the alphabetical order. That means E should come first, then this should come second, and this should come third, right? So again, out of how many places did Jupiter have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So out of 7 places, first select 3 places for these 3 vowels. So that can be done by
7, C, 3 ways. Now try to arrange them. Obviously it can be done by only one way. कोई भी आप जगह सिलेक्ट करो, लेट्स से मैंने सेकंड किया, थर्ड किया एंड लेट्स से सेकंड लास्ट किया. पहले पे पक्का है कि ई ही आएगा, फिर आई आएगा, फिर यू आएगा. आप जगह कोई भी सिलेक्ट करो बट ऑर्डर हमेशा वही होगा कि पहले पे ई, सेकंड पे आई एंड लास्ट पे यू. सो अरेंजमेंट का वे इज ओनली वन. नाउ हाउ मेनी this letters are remaining, the consonants are remaining. How many consonant? 4. So 4 consonant, 4 places. Answer should be what? 4 people, 4 places. It should be 4 factorial. So this should be the answer. Okay, as you can see, it's a very easy concept if you get a hold of it. Just try to solve this. 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2. 4 factorial is nothing but 24. So 3 to the 6, 6 gone. 35 into 24. So 35 into 2700 plus 140, that is 840 should be the answer. Right? I hope this point is clear. Answer is 840 for this particular question. Right? Okay, let's go to the next question. Question number 4. Again a simple question. Prasad has 5 children: Anna, Bartley, Champak, Dudlum, Ismail. In how many different ways that a sequence of their birth can be possible if Bartley and Champak are both elder than Anna. So condition तीनों पे है, तो पहले इन तीनों को ही देख लेते हैं. इन तीनों के लिए जगह सिलेक्ट कर लो. In how many ways that can be done? That can be done in 5, C, 3 ways. Now let's try to arrange them. Let's say the 3 places are second, third and let's say last 5th. अब उससे कंडीशन क्या बोला है? बाटली एंड चंपक आर एल्डर देन अन्ना. सो ये तो पक्का है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो अन्ना है, तो अन्ना विल टेक द लास्ट प्लेस फॉर श्योर. बट बाटली एंड चंपक के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट बाटली इज एल्डर देन चंपक और चंपक इज एल्डर देन बाटली. राइट? अन्ना तो पक्का लास्ट में ही रहेगा इन बोथ द केसेस. सो अरेंजमेंट वेज आर 2. डोंट रट्टाफाई कि हमेशा हमेशा अरेंजमेंट एक ही आएगा. राइट? ट्राई टू अरेंज. जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि ये दिया था, यहाँ पे 2 अरेंजमेंट पॉसिबल थी. राइट? सो नाउ वी हैव मेड देम सेटेड दिस 3 गाइज. बचे कौन है? 2 लोग बचे, डुडलूम और इस्माइल. उनको अरेंज करने का 2 लोग 2 जगह. इट इज 2 फैक्टोरियल. 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2 ओनली. 2 1s are 2. So this should be my final answer. So what is this? 5 into 4 into 3 by 3 into 2 into 2 into 2. right? एक 2 कट जाएगा, एक 3 कट जाएगा. 5 4s are 20. 20 into 2 40 should be my answer. Right? So answer of this question is 40. So I hope you are getting this method. Believe me, it's a very easy and very helpful. Right? So the next is question number 5. Now what is saying, how many 4-digit numbers can be formed such that A is greater than B is greater than C is greater than D. So these are the 4 digits. A is at the 1000 place, B is at the 100 place, C is at the 10th place and this D is at the unit place. Right? So हमेशा ऐसा ही ऑर्डर चाहिए. ये सबसे बड़ा होना चाहिए, then ये and ये. So again students will try to make the cases 0 पहले पे आएगा या नहीं आएगा उसके केसेस में, बट बिलीव मी एक स्टेप का क्वेश्चन है, सिंपल. राइट? हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है? वी हैव 0, वी हैव 1, वी हैव 2 टिल 9. 10 डिजिट्स अवेलेबल है. बट हमको कितने डिजिट्स चाहिए? हमको सिर्फ 4 डिजिट का नंबर चाहिए और हमारे पास कितने डिजिट्स अवेलेबल है? 10. सो द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट दोज 4 डिजिट जो यहाँ पे बैठेंगे. सो आउट ऑफ 10 सेलेक्ट 4 डिजिट्स. राइट? नाउ ट्राई टू अरेंज देम. लेट्स से 0 का केस लेता हूं मैं. लेट्स से 0 सेलेक्ट किया, लेट्स से 6 सेलेक्ट किया, लेट्स से 3 सेलेक्ट किया, लेट्स से 8 सेलेक्ट किया. दिस जस्ट एन अजम्पशन. आई एम जस्ट अज्यूमिंग एनी 4 डिजिट्स. यू कैन टेक एनीथिंग. आप इनको भी अरेंज करने की कोशिश करो. सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? दैट इज 8. सो बाय डिफॉल्ट 8 यहां आ जाएगा. बाय डिफॉल्ट 6 सेकंड प्लेस पे आएगा, ये 3 होगा और 0 विल बी ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ बाय दिस मेथड. राइट? सो यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड. तो अरेंज करने का एक ही तरीका है कि बड़ा सबसे पहले ए आएगा, फिर सेकंड बिगेस्ट, देन सी एंड देन डी. तो वेदर यू टेक 0 और वेदर यू टेक डोंट टेक 0, इट डजंट मैटर. जो भी सबसे छोटा होगा लास्ट पे आएगा एंड लास्ट पे 0 आने से हमारी कोई कंडीशन चेंज नहीं होती है. फर्स्ट पे होती है. राइट? कि अगर पहले पे मेरा 0 आ जाए कि 0 है, बट पहले पे आ ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट, दिस कंडीशन. राइट?
So 0 will be taken care of. So arrangement ka way is only 1. So answer of this question is 10C4. Right? So I hope you get this point. Seemingly difficult question, but अगर आपको फंडा क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. या ये उसे टाइप का, आई थिंक दिस इज अ दैट क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर द ईयर. सिमिलर 4 डिजिट का नंबर बनाना है. हियर 1000 डिजिट, दैट मीन दिस इज 100 digit, this is 10th digit, this is unit digit. So what is the condition? 1000 digits should be greater than 10th digit, which in turn should be greater than unit digit. So there is no condition for the 100 digit. Okay, please keep that in mind. And again the digits available to us are 0, 1, 2 and so on till 9. So let's try to first जिन पे condition है उनके करते हैं. तो condition 3 जगह पे है. So मैं पहले इन्हीं के लिए digits select करता हूँ. How many digits I have? 0 to 9, the 10 digits. 10 में से मुझे 3 यहाँ चाहिए. So that can be arranged in 10C3. Sorry, that can be selected in. So 10C3. कोई भी 3 डिजिट होने दो. लेट्स से मैं फिर से 0 लेता हूँ, 6 and 8. अब इसको अरेंज करो. एक ही तरीका अरेंज करने का. 1000 पे 8 बैठेगा, 10 पे 6 आएगा, यूनिट पे 0 आएगा, राइट. सो यहाँ अरेंज करने को तो एक ही वे. सो आई हैव placed 1000, I have placed tens, I have placed units. Now the remaining is 100. अब 100 डिजिट पे मुझे कौन कौन आ सकता है? 100 डिजिट पे मेरा 0 भी आ सकता है, यहाँ पे 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है, till 9. All digits can come, right? So at 100 place, how many digits can come? At 100 place, all from 0 to 9, any digit can come because it will not violate the basic condition which it question has given. So there are 10 ways in which my 100 digits can be filled. So answer should be 10C3 into 1 into 10. So let's try to solve this. So 10C3 is 10 into 9 into 8 divided by 3 into 2 into 10. So this is 3 3s are 9. 2 4s are 8. 4 3s are 12 into 100. So answer of this question should be 1200. Right? Yeah. So, question number 7. Yeah. अब क्वेश्चन नंबर 7 हमने इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था, राइट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. यू कैन सी यहाँ पे क्या था इनइक्वालिटी, a greater than b greater than c greater than d. Whereas in 7, what is the inequality? a less than b less than c less than d. So it is a reverse inequality. So what difference it will make? Just see. So which place is the smallest here? I can see a is my smallest. तो मैं अरेंजमेंट में कुछ भी करूंगा, स्मॉलेस्ट यहाँ पे आके बैठ जाएगा, यहाँ पे लार्जेस्ट बैठ जाएगा, राइट. नाउ थिंक, अगर मैं 100 सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी 0 सिलेक्ट करता हूँ, तो चार डिजिट सिलेक्ट करने आउट ऑफ 10, तो 10C4, राइट. सपोज इफ आई सिलेक्ट 0, 3, 8 and 6. नाउ ट्राई टू अरेंज दिस. सबसे बड़ा जो है 8, वो तो यहाँ पे आएगा, फिर 6 यहाँ पे आएगा, फिर 3 यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे आएगा. अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया? 0368 is not a 4-digit number. He is clearly asking us a 4-digit number. 0368 is a 3-digit number. So what learning we get here is, कुछ भी आप कर लो, 0 आप सिलेक्शन के रेंज में नहीं रख सकते, बिकॉज जैसे ही आपने 0 को सिलेक्शन टीम में रखा और 0 सेलेक्ट हुआ, so it have no place to sit but at the first place. और जैसे ही वो फर्स्ट प्लेस पे बैठ गया, it will not be a 4-digit number, it will automatically convert to a 3-digit number. So in my selection I should not keep 0 because 0 आ ही नहीं सकता, right? So apart from 0, every digit can be selected. So I am scrapping 0. So how many digits are there? 1 से लेके 9 तक there are 9 digits. Select any 4 digits out of it. अरेंजमेंट का तरीका एक ही होगा, कोई भी वो डिजिट्स हो, सारे वो एक ही तरीके से अरेंज होंगे, राइट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9C4. You remember the answer of this question was, question number 5 was 10C4 because there 0 was involved, no issues about it. But in this question, question number 7, you cannot take 0.
सो गाइज हियर इट इज, ऐसे ही लर्निंग होती है, आप एक कंसेप्ट उठाते हो राइट, और उसको जगह जगह उसके क्वेश्चंस अप्लाई करके देखो। जिस दिन आपको क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होने लगे यूजिंग अ मेथड, बिलीव मी यू आर ऑन द राइट ट्रैक, राइट। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, कैट 2015 क्वेश्चन, राइट। सिंपल वही क्वेश्चन है, तो जस्ट डिजिट की जगह P1 P2 दे दिया, हार्डली 10 सेकेंड क्वेश्चन। There are 12 numbers, whatever they are, P1, P2, and this is the order, P1 greater है, P3, P, so on so forth. मुझे उठाने हैं 3 numbers जिनको मैं नाम देता हूँ A, B, C, and A should be greater than B should be greater than C. So what I'll do, I'll select 3 numbers out of this 12, so that is 12 C3। अब वो कोई भी नंबर्स हो दो, लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया P3, लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया P1, लेट्स से मैंने सिलेक्ट किया P8। अरेंजमेंट का एक ही पॉसिबिलिटी है, सबसे बड़ा वाला P8 है वो यहाँ पे आएगा, राइट, फिर P3 यहाँ पे आएगा और P1 यहाँ पे आएगा। अरेंजमेंट देयर इज ओनली वन वे, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी 12C3 into 1 as it is given in the numbers. Let's solve this. What is 12C3? 12 को 3 बार कम कर दो, 3 into 2, so 6 2s are 22 into 10, 220 should be the answer. That is the fourth option, right? So guys, I hope you like the concept of select and arrange. Believe me, it's very easy. Just try to apply this. कोई भी doubt हो, you can ask in the comment section, we'll surely reply. A very important topic, that is arrangement of peoples. Believe me, it's a very important and very easy as well, right? So this is the shortcut, that is the arrangement of people. So I divided into certain concepts. So this is the first concept, that is the concept of case of not together, right? So let's say this is the first question. What it says, there are 4 boys and 4 girls to be arranged in a row such that if no 2 girls should stand together, in how many ways this arrangement can be done. So just remember, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहा नॉट टुगेदर का, सिंपल सा ट्रिक है और सिंपल सा शॉर्टकट है, यू ऑलवेज स्टार्ट विथ अ पर्सन जो उसको नॉट टुगेदर नहीं रखना है। जैसे यहाँ पे हमको गर्ल्स नॉट टुगेदर चाहिए, सो आई विल स्टार्ट नॉट विथ द गर्ल्स बट आई विल स्टार्ट अरेंजिंग whom, आई विल स्टार्ट अरेंजिंग बॉयज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, ठीक है। सो कितने बॉयज है? 4 बॉयज, 4 बॉयज 4 जगह कितने तरीके से अरेंज हो पाएंगे? दे कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज, राइट। द बेसिक डेफिनेशन ऑफ n factorial, that n people n places n factorial ways it can be arranged. So 4 boys at the 4 places, let's say these are the 4 places, they can arrange themselves in 4 factorial ways. Let's say these are the boys B1, B2, B3 and B4, ठीक है। Now as boys are done with, let's try to arrange girls. ये बॉयज के बीच में कितने स्पेसिंग क्रिएट हुए? सी दैट। सो यहाँ पे एक लेफ्ट में एक 2, 3, 4 and 5. So among these 5 places you can arrange these 4 girls. They will never be together. There will be always be boy between them. So now the remaining 5 places can be arranged. So I need to put it P, not C. So out of 5 places I need to put 4 girls. So this is the answer of this. Okay. So I hope you got it. So let me repeat it. What it is? जो भी नॉट टुगेदर होगा, जैसे यहाँ पे गर्ल्स नॉट टुगेदर, विल स्टार्ट विथ होम बॉयज. सो 4 बॉयज इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज्ड? 4 फैक्टोरियल वेज. अमॉन्ग देम हाउ मेनी स्पेसेस विल बी क्रिएटेड? स्पेस हमेशा एक एक्स्ट्रा क्रिएट होती है, तो 4 बॉयज है तो देयर विल बी 5 स्पेसेस क्रिएटेड. सो इन दिस 5 स्पेस यू कैन अरेंज एनी ऑफ दिस 4 गर्ल्स. तो अरेंजमेंट है इसलिए P, राइट. लेट्स लुक एट द अदर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 2, सेम टाइप है, 4 boys, 5 girls, again no 2 girls. So again you will start with whom? You will start with a boys only. So again 4 boys can be arranged in how many ways? 4 factorial ways. वही same चीज, B1, B2, B3 and B4. How many spaces will be created among them? 1, 2, 3, 4 and 5. So among these 5 places you can arrange this now 5 girls. So it would be 5P5. Just remember NPN
is always n factorial, right? Because what is npm? You need to arrange n people at the n places. That is nothing but the definition of factorial. So answer of this question would be nothing but 4 factorial into 5 factorial. Right? I hope this is clear. So let's go to the next question again. Question number 3. Here 4 boys, 6 girls, no 2 girls again. Okay? So again I'll start with the boys. So boys are 4 factorial, again b1, b2, b3 and b4. Again spaces is 1, 2, 3, 4 and a 5. But 5 जगह है, 5 spaces, but girls are more, right? There are 6 girls. How can you make them sit at the 5 places? So answer for this question will be not possible because जगह कम है, लोग ज़्यादा है, right? आप एक के ऊपर एक तो बिठा नहीं सकते. So answer of this question will be not possible, और हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा कुछ डेटा इनकंसिस्टेंट दिया हुआ ऑप्शन. ठीक है, if they want to trap you, they will trap you like this. So answer for this question is data inconsistent or not possible, right? So please remember this. हमेशा जब भी not together वाला क्वेश्चन है, स्टार्ट याद रखो, अपने आप आपको आ जाएगा. ठीक, let's look at the other question. Question number 4. Again the 4 boys, 6 girls, but this time no 2 boys should be together. So यहाँ पे boys not together चाहिए. So हम किससे शुरू करेंगे? You'll start with girls first. So how many girls are there? 6 girls. They can be arranged in how many ways? 6 factorial ways. So as these are the 6 girls, G1, G2, G3, G4, G5 and let's say G6. Spaces कितने create होगी? Obviously one extra space will be created, right? So let us count if you want. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. In this 7 space you need to arrange 4 boys. जगह ज्यादा हुआ तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जगह खाली गई तो चलता है, बट कम जगह लोग ज्यादा नहीं हो सकते, एज इन द लास्ट केस. सो एट दिस 7 places I need to arrange 4 boys. So answer of this question is 6 factorial into 7p4. Okay, so I hope you got the all variations from this 4 questions of the not together. Just remember the starting point, you will never get confused. Okay, great. So now let's look at the second concept. Now this is a second concept of alternate. Many students confuse this alternate with not together wala question, right? But believe me, they are not the same, both are different. Alternate is a sub part of what you can say not together, right? But they are not same, so don't mix up the 2 questions, right? So question number 5 says 4 boys and 4 girls are to be arranged in a row such that girls and boys are alternate. अब alternate में 2 ही टाइप का टिपिकल क्वेश्चन आएगा. फर्स्ट, जब दोनों सेम हो. अल्टरनेट में व्हाट डिपेंड्स इज द हु इज एट द फर्स्ट प्लेस. लेट्स से इफ आई कीप बॉय एट द फर्स्ट प्लेस, एट सेकंड इट हैज टू बी गर्ल बिकॉज इट हैज टू बी अल्टरनेट, राइट? देन थर्ड हैज टू बी बॉय, देन गर्ल, थर्ड बॉय, देन गर्ल एंड सो ऑन सो फोर्थ. और अगर गर्ल फर्स्ट हो तो सेकंड मैंडेटरीली हैज टू बी बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय. दिस आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटी, राइट? There is no other way. So simple है, इसमें हमेशा जो स्टार्ट होगा उससे डिपेंड करेगा. तो 4 बॉयज है तो 4 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 4 factorial ways. 4 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 factorial ways into 2 factorial. ठीक है, why this is 2 factorial we have taken? This 2 factorial, that is because your line either can start with a boy or it can start with a girl, right? So simple it is 4 factorial into 4 factorial into 2. तो जब भी अगर सेम हो, अगर x बॉयज हो और x गर्ल्स हो, आंसर इज ऑलवेज x फैक्टोरियल इंटू x फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इन केस ऑफ अल्टरनेट. ठीक है, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. अब यहाँ पे क्या है, 4 बॉयज है, 5 गर्ल्स है, 1 गर्ल ज्यादा है. अब यहाँ पे चाह के भी बॉय से शुरू नहीं कर सकते लाइन, बिकॉज इम्बैलेंस है ना, राइट? Let's say if I try to do that, एक boy, एक girl, एक boy, एक girl, एक boy, एक girl, and last one. So here 4 boys gone and 4 girls gone. अभी भी एक girl बची है, right? Where will you keep that girl? Obviously you can't keep it here. There is only one place for that girl, that it has to be at the start.
So this is the only arrangement possible. So answer of this question will be 4 factorial for the boys, 5 factorial for the girls. Don't make a mistake of multiplying by 2, because here 2 cases are not possible, only 1 case is possible, right? So कभी भी अगर एक x boys हो और एक x plus 1 girls हो, ठीक है, एक का डिफरेंस हो, so answer is always x factorial into x plus 1 factorial. So just remember this small points. Okay, so this is a cases of alternate way of doing. Next, now here 4 बॉयज है 6 गर्ल्स. अब इसमें आप कुछ भी कर लो, पॉसिबल ही नहीं अल्टरनेट होना, राइट? बिकॉज अगर मैं यहाँ पे ऐसे, सॉरी, इवन बॉय गर्ल, राइट, इवन इफ आई ट्राई टू पुट इट, यू विल रियलाइज 5 गर्ल्स हो गई, 4 बॉयज हो गए, ठीक है, बॉयज एग्जॉस्टेड, गर्ल्स 5 हुई, अभी भी एक गर्ल बची, अब कहीं तो उसको अरेंज करोगे, राइट? सो वहां पे ये अल्टरनेट का केस टूट जाएगा. सो जस्ट रिमेंबर, ठीक है, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी अगेन नॉट पॉसिबल or data inconsistent, right? So please remember, alternate का क्वेश्चन अगर कभी पूछा तो उसका आंसर 2 ही केसेस में पॉसिबल है. एक तो बोथ सेम हो, राइट? अगर बोथ सेम होगा तो आपका आंसर होगा, इफ बोथ आर सेम तो आपका आंसर होगा x फैक्टोरियल इंटू x फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. एक का डिफरेंस होगा, 1 डिफरेंस, तब भी आंसर आ सकता है, राइट? दैट इज x फैक्टोरियल इंटू x plus 1 factorial. बट अगर एक से ज्यादा का डिफरेंस हो, so answer is always not possible or data inconsistent, as you can see. ठीक है, I hope you got the difference between the concept of not together and the concept of alternate. Very simple question there, you just need to know them beforehand. Okay, now the next concept is circular arrangement. Many of you must be knowing, but still, राइट, क्या होता है वो, अगर मैं लीनियर में अरेंज करता हूं, लीनियर में n people n places, आंसर इज ऑलवेज n फैक्टोरियल, राइट? बट सर्कुलर में व्हाट हैपेंस, सर्कुलर में n people n places, आंसर इज ऑलवेज n minus 1 factorial. Why this is a factor of 1 here, right? तो just understand the logic behind it, that will help you to tackle many questions. ठीक है, इसलिए मैं इसका एक लॉजिक शॉर्ट में बता देता हूं. जब भी हम लीनियर अरेंज करते हैं, लेट्स से 4 लोग हैं, 4 लोगों को अगर मैंने लीनियरली अरेंज किया, लेट्स से दिस आर द 4 प्लेसेस, ठीक है, जस्ट इग्नोर दिस डायग्राम फॉर अ व्हाइल. दिस इज अ लेफ्ट हैंड एंड दिस इज अ राइट हैंड. सपोज यू टू आर, आप 2 दोस्त हो, एक दोस्त पहले जा रहा है, दूसरा बाद में आ रहा है, पहले वाले को दूसरे को मैसेज करना है कि एग्जैक्टली वेयर ही इज सिटिंग. सो लीनियर में तो इजीली बता सकता है कि जैसे वो पोजीशन 1, भाई आई एम सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पोजीशन, और सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, और थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, और सेकंड फ्रॉम द राइट, और एट द राइट मोस्ट पोजीशन. मैंने चारों वक्त अलग अलग डायलॉग बोला था, राइट? बट नाउ जस्ट इमेजिन कि, जस्ट सेकंड, या, कि these are the, थोड़ी डायग्राम स्मॉल हो रही, बट these are the 4 positions of a circle and all chairs are identical. अब मुझे बताओ कि अगर आप पहले जा रहे हो, you are the first person, always think from a first person perspective. सिर्फ पहले बंदे का पकड़ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा. आप यहाँ पे ना कोई लेफ्ट हैंड है ना राइट हैंड है, राइट? दिस इज अ सिंपल सर्कल. आप कहीं भी बैठो बात एक ही होने वाली, बिकॉज देयर इज नो डिस्टिंग्विशन, नो लेफ्ट हैंड, नो राइट हैंड, कुछ नहीं बोल सकते, राइट? सो ये तब होगा जब सारे चेयर्स आइडेंटिकल है. तो फर्स्ट पर्सन कैन बी सिट इन ओनली वन वे, ही हैव नो ऑप्शन, वो कहीं पे भी बैठे बात एक ही है. लेट्स से पहला पर्सन ये यहाँ बैठ गया. नाउ दिस ए विल बिकम रेफरेंस फॉर अदर्स टू कम. तो ए तो बैठ गया वन वे से, तो जो सेकंड बंदा आएगा वो ए को रेफरेंस करके बता सकता है कि भाई जहां पे ए बैठा है मैं उसके अपोजिट में बैठा हूं, तो बराबर वो यहाँ आ जाएगा, या उसके 1 एंटी क्लॉकवाइज हूँ या उसके 1 क्लॉकवाइज हूँ, राइट? नाउ दिस ए विल बिकम रेफरेंस्ड फॉर अदर्स टू कम. सो बाकियों के लिए जो सेकंड बंदा आएगा उसके लिए बराबर 3 ऑप्शंस रहेंगे, फिर 2 और फिर 1, राइट? सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव. जब हम सर्कल में बैठाते हैं, पहले बंदे के पास हमेशा एक ही ऑप्शन होता है, बिकॉज ऑल चेयर्स आर आइडेंटिकल. सेकंड के पास सारे ऑप्शन रहना शुरू हो जाते हैं, n-1, n-2 एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो दैट इज व्हाई इट इज n-1 फैक्टोरियल, राइट?
So what will be answer of this question? In how many ways 8 people can be seated around a circular table? All chairs are identical or are yellow, right? तो पहले बंदे के पास तो एक ही ऑप्शन है, वो कहीं भी बैठ जाए. लेट्स से ए है, वो बंदा यहाँ बैठ गया. अभी सेकंड के पास ये सारे पोजीशंस अलग है, राइट? दिस इज फर्स्ट फ्रॉम द क्लॉकवाइज ऑफ ए, दिस इज सेकंड फ्रॉम द क्लॉकवाइज ऑफ बी, दिस इज थर्ड फ्रॉम द क्लॉकवाइज एंड सो ऑन सो फोर्थ. So second will have 7 position, then 6, then 5 and so on so forth till 1. So it is effectively nothing but 7 factorial. So answer of this is 7 factorial. Okay, I hope you got the concept of circular arrangement. A very important but a very easy. चलो let's go to the next part. अब इसमें बताओ क्या होगा. सेम 8 लोग हैं. What we need to find is a reference. है ना, मुझे आज भी याद है एक क्वेश्चन आया था स्नैप में कि जहाँ पे ऐसा कुछ सर्कुलर टेबल दिया था और एक टेबल के ऊपर गांधी जी की फोटो दे दी थी. सो दैट विल एक्ट एज अ रेफरेंस, राइट? अपोजिट ऑफ दैट फ्रेम, सेकंड टू द क्लॉकवाइज. तो बच्चों को रेलेवेंस ही नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों दिया है वो पिक. सो यू जस्ट नीड टू फाइंड अ रेफरेंस. बट अब यहाँ पे सारे चेयर्स ही अलग है तो सारे ही रेफरेंस है. आप इजीली बता सकते हो भाई वहाँ पे एक ही येलो चेयर है, मैं वहाँ बैठा हूँ, राइट? मैं पर्पल पे बैठा हूँ, मैं ग्रीन पे बैठा हूँ. तो यहाँ तो सारे चेयर डिस्टिंक्ट है. व्हेन ऑल चेयर्स आर डिस्टिंक्ट यू डोंट नीड टू सबट्रैक्ट 1. यहाँ पहले बंदे के पास भी सारे के सारे 8 ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट? ऑल आर डिफरेंट. सेकंड के पास फिर 7, फिर 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 8 फैक्टोरियल. डोंट सबट्रैक्ट 1. ठीक है, वो रट्टा मार के कि सर्कुलर आया तो -1 करना, ऐसा नहीं है. -1 तभी होगा व्हेन चेयर्स आर आइडेंटिकल. ठीक है, so here chairs are not identical, so my answer will be simply 8 factorial. Okay, now let's go to the next question. Okay, so here are a bunch of 3 questions to get you the clarity. क्या दिया इसने इंस्ट्रक्शन में? There are 10 people needed to be seated across the circular table such that the पहला question, there are 11 identical chairs. This is an important point. Equally apart. So 10 लोग हैं. Tell me first बंदे के पास कितने ऑप्शंस है? ऑप्शंस मीन्स चेयर के ऑप्शंस, पोजीशंस. As there are 11 different chairs और identical 11 identical chairs. So he don't have any reference. तो कहीं पे भी बैठे जो पहला बंदा है he has just one way to sit, right? किसी एक चेयर पे बैठ गया. अब ये बंदा रेफरेंस बन जाएगा बाकियों के आने के लिए. तो जो सेकंड पर्सन आएगा, हाउ मेनी चेयर्स आर देयर फॉर हिम? एक पे तो पहला बंदा बैठा है, वो रेफरेंस बन के और सारे 10 के 10 पोजीशन अलग से सिग्निफाई कर सकता है यूजिंग दैट फर्स्ट पर्सन एज अ रेफरेंस, राइट? सो द नेक्स्ट पर्सन विल हैव 10 चॉइसेस. सिमिलरली 2 लोग बैठ गए, थर्ड विल हैव 9 चॉइसेस एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज नथिंग बट द 10 फैक्टोरियल, राइट? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इट सेज? देयर आर 11 डिस्टिंक्ट colored chair. Distinct means we already got the reference, right? कुछ भी हो सकते हो color, distinct, red, blue, छोटी बड़ी, whatever, but all chairs are different. So obviously you can signify them. So first person will have how many options? सारे chairs distinct है तो सारे options available है उसके पास. तो पहले बंदे के पास 11, वो किसी एक पे बैठ गया तो 10 चेयर बची, दूसरे के बाद 10, फिर 9 and so on so forth, right? So this answer of this will be 11 factorial, right? I hope this first and second question are clear. Now the 12th question. There are 10 identical chairs and 1 distinct colored chair. इसका क्या होगा? Obviously answer has to be the 10 और 11 factorial, दो में से ही एक है. I hope आपको लॉजिक याद हो. जब n-1 फैक्टोरियल करते हैं सर्कुलर में, -1 क्यों करते हैं? बिकॉज पहला बंदा हमारा रेफरेंस बन जाता है वहां पे, राइट? सो यहाँ पे मेरा रेफरेंस ऑलरेडी हैज गिवन 1 डिस्टिंक्ट कलर चेयर है, राइट? तो वो मैं 1 डिस्टिंक्ट जो कलर है उसी को रेफरेंस बना के मैं बाकी पोजीशन सिग्निफाई कर सकता हूं. सपोज दैट 1 चेयर इज लेट्स से रेड एंड लेट्स से all the rest chairs are black, right? But using this red chair I can give numbering to all the black chairs, right? कि भाई ये black first from the clockwise to the red, right? This is second to the clockwise to the red, this is third and this is the first anti-clockwise and so on so forth. So I can signify each position, right? So जो मेरा पहला बंदा काम कर रहा था वही मेरा बंदा ये red chair काम कर रहा है, right?
So the first guy will have 11 options to sit because सारे chairs अलग है यहाँ पे. Chairs in fact positions अलग है. So first will have 11 positions to sit, second will be 10 and then 9 and so on so forth. So answer of this question is again 11 factorial, right? So I hope the concept of circular is clear with this 4 to 5 questions, right? Yeah. Now let's go to the next part. This is the application of this. जो भी अब तक हमने सीखा उसका application है circular में. And believe me, you will find this question many a time across, like in the mocks and even in the CAT, right? What it says, just a second. There is a rectangular table, right? And you need to make sit 4 people on each on the longer side. So let's say 1 here, 2 here, 3 here, 4, 1, 2, 3 and a 4. तो 4 ऐसे बिठाने, 4 ऐसे बिठाने longer side, right? अभी बहुत लोग इसमें ग्रुपिंग या कुछ कुछ करना शुरू कर देते, बट बिलीव मी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड यू नो द फंडा अर्लियर. टाइम पे दिस आर नॉट द इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चंस, यू कांट डेवलप द लॉजिक फॉर सच क्वेश्चन देन एंड देयर. ये तभी आएगा जब इसको आपको पहले से पता, एंड बिलीव मी नॉट मोर देन 10 सेकंड. ठीक है, जस्ट सी दिस इज एक्चुअली, अगर आप देखोगे लीनियर और सर्कुलर के बीच का केस है, राइट? बिकॉज लीनियर में लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड है. यहाँ पे भी रेक्टेंगल में भी मेरे पास ये लेफ्ट पोजीशन होगी, ये राइट होगी, राइट? बिकॉज दे विल बी सिटिंग लाइक दिस इफ दे आर सिटिंग ऑन दिस चेयर. और अगर यहाँ पे हुआ तो दिस विल बी राइट एंड दिस विल बी लेफ्ट, बिकॉज इन दिस केस दे विल बी सिटिंग लाइक दिस. सो लेफ्ट और राइट है. सेकंड, सर्कुलर की तरह ये भी क्लोज्ड फिगर है, there is not a open ended, so basically this will come between this two part. So यहाँ पे conceptual clarity होना बहुत जरूरी है, right? So remember a trick or a shortcut for such question. बहुत ही सिंपल सी चीज है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए always think from a first person perspective. सिर्फ पहले बंदे का पोजीशन सोचो, वो आपको मिल गया तो that's it, question done. फर्स्ट पर्सन, ठीक है? तो वही मैं एनालॉजी दूंगा दो दोस्तों की. आप पहले जा रहे हो, आपका दोस्त आपके पीछे जा रहा है, आपको आपके दोस्त को मैसेज डालना है कि एग्जैक्टली आप कहाँ बैठ रहे हो. सो लेट्स से इफ आई सेलेक्ट दिस पोजीशन, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि बॉस आई एम सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड चेयर एंड देयर आर 3 चेयर्स टू माय राइट, बराबर? इसको आप क्या बोलोगे? दिस चेयर इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड थर्ड फ्रॉम द राइट. इसको बोलोगे थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट और सेकंड फ्रॉम द राइट, और इसको बोलोगे एक्सट्रीम राइट हैंड चेयर, राइट? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. ठीक है, सो ही हैज नोटेड ऑल दिस कि भाई फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द राइट, लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट. ठीक है, अब वो आता है यहाँ पे, अब उसका ओरिएंटेशन हो जाएगा ऐसे, राइट? नाउ लेट्स ट्राई टू डिफाइन दिस पोजीशन. अब वो बोलेगा फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट. एज सुन एज यू से भाई आई एम सिटिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पोजीशन, आपका दोस्त बोलेगा तूने ये सेम चीज मुझे पहले बोली है. कहाँ बोली थी उसने? एट दिस पोजीशन, राइट? ये वन वही था ना, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड. सो टेक्निकली ये दोनों पोजीशन सेम है, नॉट द चेयर, ऑब्वियसली चेयर्स आर डिफरेंट, बट पोजीशंस इफ आई टॉक अबाउट दिस पोजीशन और दिस पोजीशन इट इज सेम. सिमिलरली दिस इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सॉरी, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, ये भी यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है. सो कैन यू ऑब्जर्व, भले ही वहां पे 8 चेयर्स है डिफरेंट, बट पोजीशंस पहले वाले के पास 4 ही है. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज. सो हियर, सो फर्स्ट पर्सन विल हैव हाउ मेनी ऑप्शंस टू सिट? फर्स्ट पर्सन हैज ओनली 4 वेज टू सिट. यहां तक क्लियर है? पहले बंदे का 4 आ गया. ठीक है, अब आते हैं सेकंड पर्सन पे. अब लेट्स से पहला बंदा कहाँ बैठा? लेट्स से कहीं भी बैठा, लेट्स से 2 वाले पोजीशन पे मैंने बैठा देता हूँ. लेट्स से ए, लेट्स से ए इज सिटिंग एट दिस 2. ठीक है, अब ये जो सेकंड बंदा है उसके लिए सारे पोजीशंस अलग है. कैसे अलग है? How can you differentiate between this left and this left? Yes, he will say I am sitting at the extreme left hand position where A is sitting. तो बराबर ये वाले लेफ्ट पे नहीं बैठेगा, ये लेफ्ट पे आके बैठ जाएगा, राइट? और I am sitting at the extreme right hand position in the row where A is not sitting. तो he will come in this case, right? So using this A as a reference, all these remaining 7 positions can be defined uniquely. So बचे हुए जो 7 लोग हैं उनके लिए सारे सातों जगह अलग है. तो इसका आंसर होगा पहले के लिए 4 पोजीशन और बचे 7 लोग 7 फैक्टोरियल. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
4 factorial into 7 factorial of this. Is it clear? समझ में आया? अच्छा कंसेप्ट है, एक बार क्लियर समझ में आएगा, इट्स वेरी इजी. ठीक है, लेट्स ट्राई टू टेक द अदर क्वेश्चंस, उससे क्लियर होगा. अगर सपोज इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलता ये अरेंजमेंट ऐसा है, ठीक है, आई एम जस्ट गिविंग एन इम्प्रॉम्प्टू क्वेश्चन कि यहां पे 4 लोग हैं बट यहां पे 3 लोग हैं. अब कुछ यूनिफॉर्मिटी है क्या? नहीं, राइट. नाउ इन दिस केस आई कांट से कि ये वाला लेफ्ट और ये वाला लेफ्ट मेरा सेम होगा. ये लेफ्ट, ये राइट, ये राइट, ये लेफ्ट. ठीक है, इसका ओरिएंटेशन ऐसा, इसका ओरिएंटेशन ऐसा. नाउ दिस लेफ्ट एंड दिस लेफ्ट इज नॉट सेम. व्हाई? आप अपने दोस्त को क्या बोलोगे? भाई आई एम सिटिंग एट द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन, बट याद रखना 2 लेफ्ट मोस्ट पोजिशन है, मैं उस लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पे हूं जहां पे मेरे राइट में 2 चेयर्स है. या इसको डिफाइन करना हो तो मैं उस लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे हूं जहां पे मेरे राइट में 3 चेयर्स है. तो दोनों बार मैंने बात अलग बोली. यहाँ पे मेरे राइट में 2 चेयर थे, लेफ्ट में लेफ्ट पोजीशन के राइट में, और यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट पोजीशन के राइट में 3 चेयर्स है. तो दिस एंड दिस इज नॉट सेम. हियर ऑल पोजीशंस आर डिफरेंट. तो ये अगर क्वेश्चन होता तो इसका आंसर होता सिंपली 7 फैक्टोरियल, राइट. सो ये छोटी छोटी चीज है, मैंने 7-8 क्वेश्चन और लाए. बिलीव मी, एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल गेट द हैंग ऑफ इट. ठीक है, जस्ट बी देयर. लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. क्या बोला इसने? स्क्वायर. स्क्वायर है, स्क्वायर पे मुझे 4 इधर बिठाने, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ठीक है, अब फिर से वही लॉजिक कि ये वाला अगर मेरा लेफ्ट मोस्ट 1 है तो ये भी 1 होगा. दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, राइट. ऑल आर फेसिंग इनवर्ड. ऑब्वियसली कोई भी ऐसे ही इनवर्ड ही बैठते हैं ना, हम आउटसाइड नहीं बैठते कभी. तो सेम लॉजिक, ये भी मेरा लेफ्ट मोस्ट है, राइट. ये 1 2 3 4 सेम है. सिमिलरली ये भी 1 2 3 4 सेम है. सो टेक्निकली पहले बंदे के पास 4 ही ऑप्शंस है. सो पहले बंदे के पास 4 ऑप्शन, एक बंदा कहीं भी बैठ जाए. लेट्स से ए यहां बैठ गया 3 पे. अब जो बचे हुए 15 पोजीशन है सारे आप डिफाइन कर सकते हो यूजिंग ए. सो द रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग 15 पीपल दे विल हैव 15 फैक्टोरियल वेज. सो 4 into 15 फैक्टोरियल, दैट इज डी, राइट. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में एक शॉर्टकट भी है. ठीक है, जस्ट इफ यू वांट टू रिटेन, अगर ऐसा कुछ पॉलीगॉन हो तो इसमें टोटल जितने लोग हो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन. ठीक है, तो यू कैन जस्ट गेट दैट आंसर. तो जैसे इस क्वेश्चन में कितने, इन दिस क्वेश्चन हाउ मेनी पीपल आर देयर? 16. सो इट वुड बी व्हाट? 16 फैक्टोरियल अबव. कितने साइडेड पॉलीगॉन है ये? जहां पे बैठाने लोग 4 साइड पे बिठाने. सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 4. So 16 factorial is nothing but 16 into 15 factorial, right? Divided by 4. So it would be nothing but 4 into 15 factorial. ठीक है, so this can also come handy. अगर आपको चाहिए तो इससे भी आप कर सकते हो. ठीक है, let us try to apply this formula in the last question as well. इसमें भी वही था ना, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं. So 8 factorial divided by number of sides of the polygon in which you have to make to sit the people. तो 4 साइड है भले ही रेक्टेंगल, बट मुझे 2 ही साइड पे बिठाना है, राइट, लॉन्गर साइड पे. सो आई विल डिवाइड इट बाय 2 नॉट बाय 4. सो इट इज नथिंग बट 8 into 7 फैक्टोरियल बाय 2. सो आंसर ऑफ दिस इज 4 into 7 फैक्टोरियल. ठीक है, आई होप दिस 2 क्वेश्चंस आर क्लियर. गुड. चल नेक्स्ट में. नाउ दिस these are very proper CAT level, mock level question. You just need to think, right? थोड़ा सोचोगे, हार्डली 10 सेकेंड क्वेश्चन. जैसे ये देखो, इसमें क्या दिया? 8 लोगों को बिठाना है स्क्वायर में, लाइक दिस. अगर आप आपके दोस्त को बताओगे, क्या बताओगे? आप 2 ही टाइप के पॉसिबिलिटी है. आप क्या बोल सकते हो? एक तो भाई मैं कॉर्नर में बैठा हूं. कौन सा कॉर्नर? आई कांट सिग्निफाई दैट, राइट. कुछ नहीं बोल सकते हो क्या कॉर्नर को, आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज एवरी इट्स अ कॉर्नर. और यू कैन से आई एम सिटिंग एट द मिडल. दिस आर द ओनली 2 पॉसिबिलिटी. और कोई तीसरा तरीका ही नहीं है, राइट.
सो पहला बंदा, मैंने जो कहा था ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज ट्रैक द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, बस पहले बंदे की चॉइस निकालो, रेस्ट अपने आप आ जाएंगे। तो पहले बंदे का दो ही चॉइसेस है कि भाई मैं एक तो कॉर्नर में बैठूंगा या फिर मिडिल में बैठूंगा। इधर आई विल सिट एट दिस कॉर्नर, देयर आर 4 corners, all are identical, or the middle. So the first person has only 2 choices, whether he will sit at the corner, any of them, all are identical, or he will sit at the middle. So अगर जैसे ही पहला बंदा बैठ गया, बचे कितने 7 लोग, it would be 7 factorial. So answer of this question is 2 into 7 factorial. Right? चलो next. Try this now as well. Please pause the video and just give it a try. ठीक है, till then मैं डायग्राम बनाता हूँ. Rectangular table. इस बार 10 लोग बिठाने हैं, 4 on the longer side and 1 on the shorter side. तो ये 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ये 1 और ये 1. Now tell me how many identical positions are there. ये 1 इस 1 के बराबर है, ये 2 इस 2 के बराबर है, ये 3 इस 3 के बराबर है, राइट, और ये 4 ये 4. एंड सिमिलरली ये 5th पोजीशन इट इज ऑल्सो आइडेंटिकल, राइट. ये 5वीं पोजीशन. सो हाउ मेनी चॉइसेस डज अ फर्स्ट पर्सन हैव? ही हैज 5 ways टू सिट. वो एक पहला बंदा कहीं भी बैठ गया, लेट्स से यहाँ बैठ गया, बचे हुए अभी सारे पोजीशंस डिफरेंट हो जाएंगे. यू जस्ट नीड टू फाइंड अ रेफरेंस. जैसे ही पहला रेफरेंस मिल गया, सारे पोजीशन डिफरेंट हो जाएंगे. सो द रिमेनिंग विल बी 9 people, 9 places, 9 factorial. So answer of this question will be 9 factorial ways, right? Okay. 17th. Yeah, good question. What it is given here? 9 people are there. I need to make them sit in a equilateral triangle. Just give me a moment. Yeah. So 3 on each of the sides. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 1, this is 2, this is 3, 1, 2 and 3. Now think, all sides are equal or same or the congruent, right? Let's try to define the position, right? मैं ऐसा कुछ बोलूँगा, I'm sitting at the leftmost corner, 2 chairs are to my right. I'm sitting in the middle, I'm sitting at the rightmost corner. सेम चीज आप यहाँ भी बोलोगे, बिकॉज जब आप ऐसे बैठोगे ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा. दिस इज द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर, दिस इज 2, दिस इज 3. सिमिलरली इफ यू सिट इन दिस ओरिएंटेशन, दिस विल बी योर लेफ्ट एंड दिस विल बी योर राइट. सो दिस विल बी 1, 2 and 3. सो होप यू ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट पर्सन हैज ओनली 3 ऑप्शंस टू सिट. सो पहले वाले के पास 3 ऑप्शन, जैसे ही वो बैठ गया, बच्चे वाले कितने पोजिशन है? 8 लोग 8 जगह, 8 factorial is answer. और you also remember that shortcut भी याद होगा तो क्या था? Total number of possibilities divided by number of sides of the polygon. The total possibilities are 9 people, 9 factorial divided by कितने triangle है, तो it is 3 polygon, 3 sided polygon, तो I'll divide it by 3. So 9 into 8 factorial divided by 3. So basically 3 into 8 factorial. So either of the way you can try this question. But these questions are not to be left off, and believe me, they are the very easy questions. Don't leave these questions. Chalo, next question. Yeah, in this question again it's a triangle, but it's now isosceles triangle, right? Just let me draw the diagram. Right, it's an isosceles triangle where these 2 sides are same and this is my unequal side. Right, now what is saying, 8 लोगों को बिठाना है, 4 इधर 4 उधर, right, along the 2 congruent sides. So this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 1, this is 2, this is 3 and this is 4, right? Now many students will make a mistake of to take the answer of this question as 4 into 7 factorial, कि ये 1 2 3 4 और ये 1 इस 1 के बराबर है, right? तो बट थोड़ा सोचोगे तो नहीं है ऐसा. जस्ट लिसन अप हियर केयरफुली. मैं
क्या डायलॉग बोलूंगा ये 1 के वक्त, ठीक है। सपोज आई वांट टू डिफाइन 1, मैं 1 के लिए क्या बोलूंगा, दिस इज इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है, आई एम सिटिंग ऑन वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट साइड, राइट, एंड देयर आर 3 चेयर्स टू माय राइट एंड 4 चेयर्स टू माय लेफ्ट। यहां से ये लेफ्ट में ही पड़ेगा ना इसके, 4 chairs are to my left. Now, 4 chairs to my left and that too on the congruent side. ठीक है, is the dialogue clear? ये जो लेफ्ट मोस्ट पोजिशन है, इसके राइट में 3 चेयर्स है और लेफ्ट में 4 चेयर्स है विच लाई ऑन द कॉन्ग्रुएंट साइड। अब ये यहाँ पे आप कुछ देखो क्या है, ये वाले लेफ्ट में आप क्या डायलॉग बोलोगे, ये अगर आप ऐसे ओरिएंटेशन में हो तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। आई एम सिटिंग सच दैट देयर आर 3 चेयर्स टू माई राइट, ठीक है, या हाफ ऑफ द डायलॉग इज राइट। पिछले बार भी आपने ये बोला था, दिस इज लेफ्ट, 3 चेयर्स आर टू माई राइट, यहाँ पे भी 3 चेयर्स आर टू माई राइट, ठीक है, यहाँ तक हाफ डायलॉग सही है। बट व्हाट हैपेंस ऑन द लेफ्ट, माई लेफ्ट हैंड साइड इज एम्प्टी, दैट इज अनइक्वल साइड, बट यहाँ पे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 4 चेयर्स आ रहे थे, राइट। सो इसीलिए ये 1 और ये 1 सेम नहीं है। सो ये 4 है तो ये कुछ डिफरेंट पोजीशन होगी, 5वीं, ये 6वीं, ये 7वीं और ये 8वीं। सो हियर ऑल ऑफ द 8 पोजीशंस आर डिस्टिंक्ट, ऑल आर डिस्टिंक्ट मीन्स तो आंसर क्या होगा, 8 पीपल 8 प्लेसेस, आंसर वुड बी 8 फैक्टोरियल। जैसे ही सारे डिस्टिंक्ट हो गए तो कोई फंडा ही नहीं, answer would be simply 8 factorial. So I hope you got the difference between the equilateral or isosceles wala, right? Just take the last question on this and I hope just revise this question, you will get any of this type of question. This one, 8 लोग ऐसे बिठाने जहाँ पे 2 टेबल्स है, 4 इधर 4 उधर, ठीक है। Again I'll suggest pause the video, try to answer yourself and then see the solution of it. Again you will tend to make a mistake कि भाई एक तो 2 into 7 factorial होगा या 4 into 7 factorial होगा। Most of you try to इन दोनों में ही आएगा मोस्ट, सबका आंसर मोस्टली। अगेन जो मैंने कहा था गाइज, वो फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव बिगेस्ट ट्रिक दैट इज, अगर आपको वो ट्रिक समझ में आ गई, और उसके लिए मैंने बेस्ट तरीका बताया, 2 दोस्तों की एनोलॉजी, जस्ट 2 फ्रेंड्स है, एक पहले जा रहा है एक बाद में जा रहा है, जस्ट उतना करो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो अगेन आई विल ट्राई टू डिफाइन ईच एंड एवरी पोजीशन। लेट्स से दिस पोजीशन 1। अब इस पोजीशन को कैसे डिफाइन करूंगा कि भाई मैं ऐसे टेबल पे बैठा हूं कि जब मैं यहां बैठता हूं ये वाला टेबल मेरे लेफ्ट में आता है, 1 टेबल लाइज टू माय लेफ्ट, राइट। 1 के लिए क्या बोला, 1 टेबल लाइज टू माय लेफ्ट टेबल, ठीक है। चलो उसने नोट कर लिया। ये सेम डायलॉग वो यहां बोलेगा, राइट, बिकॉज आप उल्टा यहां देखोगे तो योर दिस विल बी लेफ्ट, तो दिस वन एंड दिस वन इज एक्चुअली सेम। अब इस पोजीशन को क्या बोलोगे, 2। आई एम सेटिंग सच दैट 1, ये आप ऐसे ओरिएंटेशन में हो तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, राइट। सो आप ऐसे बैठे हो, ये 2 कि 1 टेबल लाइज टू माय राइट, सो 2 के लिए आई विल से दैट दिस इज राइट टेबल, मेरे टेबल बिलोंग्स टू माय राइट, ठीक है। लेट्स से दिस 3, इस 3 के लिए क्या बोलोगे, जस्ट विजुअलाइज यू आर सिटिंग लाइक दिस, I am sitting such that 1 table lies in front of me, एकदम face to face, right? ऐसे ही होगा ना, this is my table, I am sitting here like this. So जो उधर होगा वो भी मेरे front में ही आएगा. So this is basically third, I can say the table lies in front table, I can say. ये same 3 दूसरे टेबल में कहाँ पे आएगा, ये 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो चौथी पोजीशन है, इसको आप क्या बोलोगे, ये 4, अगर आप जस्ट बैठे ऐसे, you will be facing inwards. You will say that this table lies to my back, right? मैं अगर ऐसे बैठा हूँ, ये वाला टेबल मेरे पीछे रहेगा, right? So fourth, मैं इस तरह बैठा हूँ कि मेरा एक जो टेबल है अदर वन, that table lies to my back. Now can you see, मैंने हर बार अलग अलग चीज बोली है। पहले में बोला मेरा टेबल लेफ्ट में आता है, सेकंड में मैंने बोला टेबल मेरे राइट में आता है, थर्ड में मैंने बोला टेबल मेरे फ्रंट में आता है, फोर्थ में आई सेड कि मेरा टेबल बैक में आता है। चारों चीजें अलग है, तो दैट मीन्स ऑल द 4 पोजीशंस आर डिफरेंट, राइट। तो फर्स्ट गाय विल हैव हाउ मेनी ऑप्शंस टू सिट, 4। जैसे ही वो बैठ गया, बचे सारे पोजीशंस अलग हो जाएंगे, तो बचे 7 लोग 7 जगह 7 फैक्टोरियल। सो आंसर इज 4 into 7 फैक्टोरियल, सी ऑप्शन, राइट। सो बहुत सारे आज हमने कंसेप्ट सीखे गाइस, जस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस इट। कुछ भी डाउट हो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल be happy to answer them, right? So just to end, we'll like to have the summary of it. So arrangement of people जो
मैंने ट्रिकी वाले क्वेश्चंस ही उठाए और ट्रिकी वाले कंसेप्ट्स, राइट? सो जो कंसेप्ट फर्स्ट वी हैव लर्न दैट कंसेप्ट ऑफ नॉट टुगेदर, व्हाट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट, सबके सिर्फ स्टार्ट याद रखो, हुक बना के रख लो दिमाग में. सो जब भी नॉट टुगेदर वाला आता है आप क्या करोगे, जो भी नॉट टुगेदर, लेट्स से इफ ही सेज बॉयज नॉट टुगेदर, यू विल स्टार्ट विथ होम, यू विल स्टार्ट विथ गर्ल्स. सो आप गर्ल्स से शुरू करोगे, फिर उसके बीच में स्पेसेस काउंट करोगे और उसके बीच में आप बॉयज को अरेंज करोगे. दैट इज अ वे ऑफ नॉट टुगेदर. अल्टरनेट में मैंने कहा था दो ही टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक तो दोनों सेम हो, सेम मतलब लेट्स से एक्स बॉयज हो, एक्स गर्ल्स हो, तो क्या आंसर होगा इसका, सिंपली एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स फैक्टोरियल इंटू 2. या फिर एक का डिफरेंस हो, एक्स बॉयज हो और एक्स प्लस 1 गर्ल्स हो, इसका भी आंसर आएगा. इसका क्या आंसर आएगा, सिंपली एक्स फैक्टोरियल इंटू एक्स प्लस 1 फैक्टोरियल. इंटू 2 मत करना बिकॉज वो गर्ल्स से ही शुरू होगा. और अगर 2 से ज्यादा डिफरेंस हो, मतलब 10 बॉयज 15 गर्ल्स, उनका आंसर नहीं आएगा. अल्टरनेट में इन दोनों का ही आंसर आ सकता है. इससे अगर डिफरेंस ज्यादा हो, 10 बॉयज हो 12 गर्ल्स हो, अल्टरनेट दे कैन नॉट सिट. ओके. सर्कुलर अरेंजमेंट, प्लीज रिमेंबर दैट n-1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला कब लगता है, व्हेन द चेयर्स आर आइडेंटिकल, राइट? एज सून एज यू गेट अ रेफरेंस, this formula will not be applicable, it will be n factorial. And obviously we did the application part of the it and the on the rectangular arrangement, square arrangement हमने triangle में भी लगा के देखा, right? Partition theory in detail. Believe me, it's one of the favorite topic of CAT, and just follow this video, you will get to know all the variations pertaining to this topics. Okay, so let us start. So the first micro topic in this is distributing identical objects. Okay, so here it goes, the question number 1, that in how many ways the 8 identical chocolates be distributed among 3 children such that each can get any number of chocolates. Second question, find the whole number of solutions to a plus b plus c equal to 8. Third question, what are the number of distinct terms in the expansion of a plus b plus c to the power 8? You will be surprised that all the 3 questions are same, just the difference in their language. सबका आंसर एक ही है, सबका कंसेप्ट भी एक ही, जस्ट सबका लैंग्वेज अलग है. ठीक है. सो फर्दर गोइंग अहेड, जस्ट लेट्स लर्न द कंसेप्ट फर्स्ट एंड देन विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ओके. सो partition theory, right? So if I want, let's say this is a number of balls, if I want to divide them in, let's say, among 3 parts or 3 groups. So one partition if I give here, one partition if I give here. Suppose I want to divide it into 3 students. So what will happen? How many balls student 1 will get? Student 1 will get 0 balls. यहाँ कोई भी ball नहीं, right? Student 2 will get 1 ball, and student 3 will get 7 balls in fact, right? Suppose ये मैंने partition यहाँ से हटा के, I remove this partition, let's say both or 1. एक मैंने यहां लगा दिया, एक पार्टीशन यहां लगा दिया, राइट? और तो अभी फर्स्ट वाले को मिलेगा 2, सेकेंड वाले को 6 एंड लास्ट वाले को 0, राइट? सो जितने भी तरीके से मैं पार्टीशन रिमूव यहां से मूव कर सकता हूं, दैट मेनी सॉल्यूशंस आई विल गेट. सो आई नीड टू काउंट दिस सॉल्यूशंस, कितने हैं ये. सो हाउ विल यू डू दिस? ऑब्वियसली यू नीड टू सेलेक्ट 2 places for this sticks or these 2 partitions, right? And 6, in fact this 8 places will be taken by the balls. So 8 places will be taken by the balls and 2 places will be taken by these 2 partitions. So in total I need 10 places. So in total there are 10 places, of which I need to select 2 places for these 2 partitions. So total number of possibilities or combinations will be 10C2. That is my answer, right? Now this is the funda. So how will you apply this to the questions? So जैसे ये क्वेश्चन है, in how many ways 8 identical chocolates. So let's say these are the 3 students, a plus b plus c equal to 8. अब ये मेरे balls है या chocolate जो भी है, and this plus part is my partitions, है ना? ये जो मेरा plus part है ये partition है. So 8 और ये 2 plus, that is 10, and this 2 plus नीचे आप रख दो, that is 10C2. So answer of this question is 10C2. ठीक है. बुक्स में बहुत जगह फॉर्मूले से दिया होता, बट बिलीव मी दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब अगले क्वेश्चन का भी वही आंसर होगा. व्हाट इट इज सेइंग? होल नंबर सॉल्यूशन. व्हाट इज द होल नंबर सॉल्यूशन? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0.
right? 0 1 2 3. So identically what he is asking us to find कि कितने solution, जैसे 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, ये 8 हो सकता है, या ये 8, ये 0, ये 0, this 1, this 7, this 0, और any combinations. हमको ये सारे combinations ढूंढने हैं. तो it is nothing but वही 8 and this 2 plus, that is 10 C2. Right? In fact, third question का भी आंसर सेम ही है, but just let's the analogy of it. Find the distinct terms in the expansion of this. ठीक है, to get the hang of it, just take the similar example which we know. So if I take, let's say example, this is, please keep this in mind, a plus b whole square. Everyone knows this. कितने terms आते हैं इसके expansion में? 3 terms, right? Which are those 3 terms? A square, 2ab and b square. So it is as good as जो भी हम कर रहे थे चॉकलेट्स वाला क्वेश्चन, राइट? यहाँ पे ये 2 प्लस है, ये 2 चॉकलेट्स है, और सॉरी 1 प्लस है. सो 2 प्लस 1, राइट? कितना हुआ ये? 3, और प्लस को नीचे रख दो, 3c1. 3c1 is nothing but 3 only, and these are the 3 distinct terms. So basically what we are doing, we are distributing these 2 powers among a and b. This is possible that a takes 2, b takes 0, that is the term of a square, or b takes 2, a takes 0, that is the term of b square, or both of them take 1 1, right? So that is the term of 2ab. So the funda remains the same. So what will be the answer of this question? Again same, this 8 and this 2 plus, so that is 10 C2, right? So don't worry, we'll go into the detail of it, just try to get the hang of it. Okay, so let's go to the next question. Okay, so this distribution of identical objects, here we'll get 5 question types. So the first question type is no limit. No limit means you can give 0 as well. जैसे अभी वाले क्वेश्चन में था कि 8 चॉकलेट बांटने 3 बच्चों में, कोई लिमिट नहीं था, सब किसी बंदे को सारा भी मिल सकता है, किसी को 0 भी मिल सकता है, राइट? तो दैट इज अ नो लिमिट. नाउ सेकंड इज अ लो लिमिट. लो लिमिट मींस कि लेट्स से 0 नहीं चलेगा. अगर वो सेम क्वेश्चन में ऐसा कर दूं, in how many ways that 8 chocolate be distributed among 3 children such that each student should get at least 1 chocolate, right? सबको कम से कम एक तो मिलना चाहिए, तो that will be what? Low limit. Third is another unique case, that is involving inequality, right? अगर कुछ भी greater than, less than, so we'll deal that also. Fourth is the high limit. कि suppose there is a high limit, no low limit, but let's say maximum a student can get is a 5 chocolate or a 4 chocolate, anything can like it. And last case is involving both low and high limit, कि कम से कम let's say 1 chocolate, maximum 5 chocolate. So these all are the 5 question types you can get in this section. So let's go one by one. Low limit तो हमने किया था, जल्दी से कर लेते एक बार. Question number 4. A group of 4 hunters went to the hunt rabbits. They managed to bag a total of 82 rabbits. In how many different ways they could have done so? So let's say this is hunter 1, this is hunter 2, hunter 3 and hunter 4. What is he saying? 22 rabbits से कितने तरीके से हो सकता है, राइट? अगेन वही कि हो सकता है सारा hunter 1 नहीं hunt किया, 22 बाकी सब 0 all distribution. So what will be the answer of it? A simple case there. This is a case of low limit, no limit, right? 22, and count this plus, not the hunters. So 1, 2 और 3. 22 plus 3, 25 C3 should be answer of this question, right? Am I clear with this? Great. Question number 5. What is this? In how many ways I can purchase total 10 fruits which has mango, apple and oranges? Again a no limit question, straightforward. Let's say mango, orange and apple fruits 10. So what will be the answer? 10 and this 2 plus. So answer of this question should be 12C2. Right? So these are very plain vanilla question. हो जाने चाहिए. चलो next. Yeah, CAT 2008 question, same. What is the distinct number of terms in the expansion of a plus b plus c to the power 20? So 20 and this 2 plus, we already done with this, right? 22c2. So what is the 22c2?
22 into 21/2 है ना। ये कल हमने कैलकुलेशन पार्ट देखा था कैसे करते हैं। सो दिस विल बी 11 into 21, दैट इज नथिंग बट 231 शुड बी माई आंसर। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन प्रोवाइडेड यू नो द कंसेप्ट अर्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द फर्स्ट ऑप्शन 231. दिस एक्चुअल कैट 2008 क्वेश्चन। Okay, question number 7. What it says, find the number of non-negative integers. Please remember, whole number का जो other name है, that is non-negative. So don't get confused there. Also remember for the natural numbers. Natural number का कभी कभी जो नाम देंगे वो question में, they will sometimes say as counting numbers. ठीक है, तो whenever I say counting numbers, that means it should be natural number, because zero से हम कुछ काउंट नहीं कर सकते। natural number starts from 1, ठीक है। similarly whole number will start from 0. so what is saying non-negative, that is whole number solution of this equation। तो दो इक्वेशन दिए हमको अलग अलग, a plus b plus c plus d plus equal 20 and a b c e। so first let me write the equation first। a plus b plus c plus d plus e equal to 20, and the second equation is b plus c plus e equal to 10. If I substitute value of this b c e in the first equation, so what will happen? b plus c plus e, this is 10, right? So if I substitute here, the equation which I will get is a plus d, b plus e 10 है, वो उधर जाएगा, 20 minus 10 हो जाएगा। so the final equation I will get is a plus d is 10, right? so solve one by one। what is this b plus c plus e? इसका अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करूं तो क्या होगा, 10 और ये 2 plus 12c2। similarly if I put this value of b plus c plus e here and these three things in totality, they make 10, 20 minus 10, I will get a plus d as 10. now solve this equation, right? because don't count for a b plus c plus e, that we have already counted in 12c2। so a plus d क्या होगा, ये होगा 10 plus एक plus है, तो that will be 11c1 and multiply them। so what will be the answer? 11c1 is nothing but 11, 12c2 is 12 into 11/2, that is 2 6, that is 11 into 66 should be my answer। so 11 into 66 will come out to be 726। so answer of this particular question is third option, 726, right? so I hope you are getting the hang of this. Is a very easy question, you just need to practice a bit। let's move to the next question। yeah, now here comes the second concept, that is a low limit, right? here you can see the question is find the natural number solution, right? natural number starts from where? natural number starts from 1, so there is a low limit, that is a limit of 1, you can't give 0 to anyone, है ना? so just say a plus b plus c equal to 8। so if I take this solution 8 0 0, this will not work, right? so that is the meaning of this question। so let's see if I want to frame same question in terms of chocolate, what it will be, in how many ways you can distribute 8 chocolates such that each student gets at least 1 chocolate, right? तो सेम चीज है। so सबको कम से कम एक चॉकलेट चाहिए, दे दो एक एक सबको, तो a को दे दो 1, b को दे दो 1, c को दे दो 1, because they need to have at least 1। so that will be nothing but 8 में से 3 गया, what it is 5। so now everyone got at least 1 so let's say a1 b1 and let's say c। now apply our method। what is our method? अभी चल जाए, because everyone got the least 1। so this is 5 and the 2 plus, that is 7c2 should be my answer। 7c2 is 1 into 6/2, that is 21। so 21 is the final answer of this question। okay, so I hope it is clear। low limit जितना भी देना है minimum देके आगे चलिए। so let's practice a bit question। question number 9, in how many ways 12 identical hats be distributed among 3 boxes such that each box holds at least 2 hats? ठीक है, so let's frame the equation first। box 1, box 2, box 3
इक्वल टू 12। उसने बोला सबको मिनिमम 2 देना है, दे दो सबको मिनिमम 2। सो बॉक्स 1 भी 2 लेके गया, बॉक्स 2 भी 2 लेके गया, बॉक्स 3 भी 2 लेके गया। कितने चॉकलेट्स बचे अभी? द नंबर ऑफ चॉकलेट्स रिमेनिंग नाउ आर 12 में से 6 गए 6, राइट। नाउ अप्लाई आवर मेथड। सो ये जो भी है B1 plus B2 B3, everyone has got already 2 chocolates, so applying our method, so this 6 and this 2 plus, the answers for this question should be 8C2, right? Okay, so this was the 9th question. Let's go to the 10th question. Oh, I think this is a repeated one. Yeah, 11th. 5 friends sitting around a table eating kebabs. There are total 28 kebabs initially. If 5 friends finish off the kebabs and each of them eat at least 2 kebabs, then in how many ways they could have distributed kebabs among themselves, right? So let's say A plus B plus C plus D plus E. So there are total 22 kebabs among 5 students, right? And the condition given is at least everyone has 2 kebabs, right? So let us give them 2 kebabs. So A ने भी 2 खा लिए, B ने भी 2 खा लिए, C ने भी 2 खा लिए, D ने भी 2 और E ने भी 2। कितने गए टोटल? 10 kebabs गए, बचे कितने? 12। 22 में से 10 गए 12। Now what, let's say A2, B2, C2 and D2 and E2, ठीक है, दिस इज जस्ट रेफरेंस। नाउ अप्लाई आवर मेथड। तो क्या होगा? ये 12, 1, 2, 3 and 4। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी 12 plus 4, 16C4, राइट। सो दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल से कंसेप्ट होते हैं। चलो नेक्स्ट क्या दिया है? टू सेटअप अ फार्मर बाइज goes to buy some animal. He select cows, sheep, goats, chickens and pigs. In how many ways he can select? 15 animals. So क्या क्या है? cow है, sheep है, goat है, chicken है, let me write CH, and pig है। Total 15 animals लेने, right? Lower limit है? Yes. What is the lower limit? cow को कम से कम 1 देना है, right? So दे दो cow को कम से कम 1, शिप को 2 देना है, गोट कम से कम 2, चिकन कम से कम 3, पिग को कुछ नहीं देना है, तो डोंट इन्वॉल्व एनीथिंग फॉर द पिग, इट विल बी 0। सो कितना गया ये? 5 plus 3 8, तो 15 में से 8 गए, द रिमेनिंग इज 7। नाउ अप्लाई आवर मेथड, ठीक है। तो 7, आई विल नॉट राइट द सेम इक्वेशन अगेन, डायरेक्टली यू कैन डू दिस। सो इट वुड बी नथिंग बट 7 and this how many plus this will be 1 plus 2 3 and 4. So 7 plus 4, that is 11C4. So answer of this question is 11C4. Okay. So this is a low limit questions. Yeah. 13. This is also sort of low limit, but what is saying? I'll find natural number solution first of all. Okay. Natural number solution to A plus B plus C plus D equal to 20 such that there are 2 sub questions. All are even and all are odd. Now everyone knows what is even and what is odd. So we just need to make sure. तो अगर ये भी सेम क्वेश्चन चॉकलेट में भी पूछा तो वही होगा कि 20 चॉकलेट बांटनी है 4 बच्चों में। In how many ways you can make the combination such that they get even number of chocolates or odd number of chocolates. To tackle this, see here how we will do this. Everyone knows that even number can be represented in the form of 2n, right? And odd number can be represented in a form of 2n plus 1 or 2n minus 1, right? But remember here, this, if I take this odd ka first form, this here n will be natural number, right? That means n belongs to either 1, 2, 3 and 4. Whereas here, because the lowest odd number is 1, oh my bad, this here n will be a whole number, because here lowest odd number is 1, so it will be what? 2 into 0 plus 1, okay, that is okay. But in this case the n has to be mandatorily natural number, right?
जस्ट थिंक इफ आई टेक हियर n as 0 तो क्या होगा 2 into 0 minus 1 तो it will be -1 and -1 is not an odd number, it's a odd integer. Please remember this fact. Whenever the term number comes, the number stands for positive things. If I say -5 is an odd integer, not the odd number. So here to get +1, mandatorily my n has to be lowest 1. That will be 2 into 1 minus 1. The answer will be +1. So here n has to be natural number. That is n belongs to either 1, 2, 3 or so on so forth, right? So just keep this condition in mind, whichever form you use, right? So let's try to solve this. The first question, that is the even one. So what is given? A plus B plus C plus D is equal to 20. Now I need to make sure that each number is even, each one gets even. So what I'll do, I'll convert this into this even wala form, right? So I'll consider that, let's say A equal to some 2P, B equal to some 2Q, C equal to some 2R, and let's say D is equal to some 2S, right? So if I put it here, क्या होगा ये? It will be 2P plus 2Q plus 2R plus 2S equal to 20. If I take 2 common out and divide this, so this equation will be P plus Q plus R plus S equal to 10. But see here n is also a whole number, तो यहाँ पे 0 है, but question में clearly बोला it has to be natural number. So I need to give at least 1 to everyone. So here 1 given, 1 and 1. Remaining is 10 में से 4 गए, बचे 6. Right? Now apply our method. So 6 and this is 1, this is 2, this is 3. So 6 and plus 3, that will be 9C3. So answer of this particular question is 9C3 for the first question. Right? And why we did this P? Because आप P का वैल्यू कुछ भी रखो, अगर मैंने P का वैल्यू 1 रखा so A हो जाएगा 2, that is the even number. P का वैल्यू मैंने 3 रखा तो भी A हो जाएगा 6, that is the even number, right? So whatever it is multiplied by 2, it will get converted into even number. So that is the answer of the first question. Let's solve the second one. Now it is for odd. I'll try putting both the things. Let's say मैं पहले ये वाला put करता हूँ. So my parent equation was A plus B plus C plus D plus equal to 20. If I put this first wala form, that is 2n plus 1. Remember here n is a whole number. So what it will be, convert that A equal to 2p plus 1. मैं A को रख देता हूँ 2p plus 1, n की जगह p. B में रखूंगा 2q plus 1, C में रखूंगा 2r plus 1 और D में 2s plus 1. Now this will be 20. ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये कितने 4 है, तो ये प्लस 4 उधर जाके माइनस कितना हो जाएगा 16. सो इट वुड बी 2 PQRS 20 minus 4 is 16, राइट? मैंने एक स्टेप हटा दी. सो P plus Q plus R plus S equal to 8. Now see here is PQRS का जो ये है लोअर लिमिट इज हाउ मच, right? So it is 0, right? Whole number. It's already whole number. So what will be gonna do? अगर मैंने यहाँ पे P0 भी रख दिया तो it is not a issue because यहाँ पे जो मेरा parent है it is a whole number. So the lower value PQRS will take will be how much? It will be 0, right? So in this case you don't need to give anything here, right? Because it will be natural number. अगर मैंने यहाँ पे P का वैल्यू 0 भी रखा तो A will be natural number 2 into 0 plus 1, right? So directly आप यहाँ पे अपना मेथड लगा सकते हो. So 8 is 1 plus 2 plus and 3 plus. So 8 plus 3, 11C3 should be the answer, right? Let's see कि अगर मैं दूसरा फॉर्म लेता हूं तो उससे भी सेम आंसर आता है. ठीक है, जस्ट लेट्स गिव इट अ ट्राई. Okay, so same equation, A plus B plus C plus D equal to 20. This is a very conceptual question, guys. इसको please अच्छे से करना. I am now using this form 2n minus 1. Now remember here n is a natural number. तो अगर n मेरा natural number है, that means अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2p minus 1, तो obviously my p also belongs to the natural number. तो 1, 2, 3. तो the lowest value of p will be 1.
सो b हो जाएगा मेरा 2q minus 1, दैट इज 2r minus 1, 2s minus 1 इक्वल टू 20. सो ये -1 उधर जाके हो जाएगा +4, सो बेसिकली 24 हो जाएगा वो, और डिवाइड बाय 2 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, तो p प्लस q प्लस r प्लस s, दिस विल बी 24 by 2, 12, राइट. बट रिमेंबर हियर एज आई सेड p q r s को लोअर लिमिट है कितना, एटलीस्ट 1 देना पड़ेगा बिकॉज दे बिलोंग टू द नेचुरल नंबर. सो p को 1 दे दो, q को 1 दे दो, r को 1 दे दो, s को भी 1 दे दो, बचा कितना 8. So 8 and this 3 plus, so this will be nothing but 11C3. So अगर आप देखो तो दोनों से भी आंसर सेम आएगा. तो सेकंड का आंसर इज 11C3. I just give the illustration of both. Why? Because you should not mix up both of them. ठीक है. I hope both the approaches are clear to this questions. Let's go to the next question. Again guys, these are the not impromptu questions. आपको पहले से पता हो तो ये आएगा, राइट. नाउ अगेन सी है द क्वेश्चन नंबर 14. ये तो थोड़ा और डेडली क्वेश्चन है. इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मॉड, राइट. सो अच्छा, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है, मैं सिर्फ बता देता हूँ, बट पर्सनली आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ द शॉर्टकट्स ऑफ सच. बट स्टिल सपोज कभी ऐसे इंटीग्रल सॉल्यूशंस उसने मांगे, लेट्स से मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई इक्वल टू n, राइट. It is called integral solutions, okay? So इसका जो आंसर होता है और the shortcut remember is always 4n. Same thing अगर 3 मॉड हो, जैसे इसमें है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y प्लस मॉड ऑफ z इक्वल टू n, तो इसका आंसर हमेशा होता है 4n square plus 2. ठीक है. So if I put this n here, what is n here? 10. So answer of this question should be 4 into 10 square plus 2, that is 402, right? But this is by the shortcut, right? Let's do by the general way जो अभी हमने सीखा है. ठीक है, how to apply जो अभी general method which we learn. Now this mod you must be knowing that, let's say mod of plus 5 is also 5, right? And mod of minus 5 is also 5. You must be knowing the definition of this mod, that each mod can give us the 2 positive values, that is for the positive as well as the negative, both will be same thing. So यहाँ पे बट एक चीज है जिसका पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, दैट इज 0. ठीक है, 0 को पॉजिटिव दो या नेगेटिव दो, इट डजंट मैटर. सो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा मेरा 0. सो आई विल टेक केस बाय केस ऑन द बेसिस ऑफ 0. लेट्स से माय केस 1, व्हेन none of x, y, z is 0. सो इनमें से अगर कोई भी 0 ना हुआ तो ठीक है. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, मैं मॉड हटा रहा हूं टेम्पररी, तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू 10, राइट. सो ये 10 एंड बिकॉज कोई 0 नहीं है तो एटलीस्ट 1 मुझे देना पड़ेगा, तो मैं दे देता हूँ सबको एटलीस्ट 1, 1, 1, 1. सो रिमेनिंग इज 7, राइट. 7 और ये 2 प्लस, तो कितना हुआ ये 9C2. ठीक है. अब जब मैं 9C2 दूंगा, अब इसमें बिकॉज दिस x is in the mod, it will have 2 values for the x. One is positive, one is negative, right? So I should multiply it with 2. With the same logic, mod of y will also have 2 values. With the same logic, mod of z will also have 2. So this is the answer for the first case. Let's solve the second case. Or what is the case 2? When one of them is 0. One of them is 0. ठीक है, कोई भी एक 0 ले लो. Let example, let x equal to be 0, right? अगर x 0 हो गया तो mod of 0 0, तो it doesn't make any difference. तो जो मेरा इक्वेशन होगा y plus z equal to 10. Again I need to give at least 1 1, तो मैं एक एक दे देता हूँ. बचा कितना 8 and this is 9C1, right? This is only 1 plus, so 8 plus 1, 9C1. So y can take 2 values because it's in the mod, plus of y and minus of y, so it should be into 2. Similarly z will be into 2 and there will be into 3 का factor as well. Why into 3?
मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिया, हो सकता है y इक्वल टू 0, उसका भी सेम आंसर आएगा, हो सकता है z इक्वल टू 0, उसका भी सेम आंसर आएगा, राइट? सो दिस 3 स्टैंड्स फॉर हु विल बी 0 आउट ऑफ x, y, z, all the 3 cases considered, right? So this is the answer of the second case. We'll add up all of them, right? This is or means plus. Now the last case, case 3. 2 are 0, any two of them are 0. ठीक है? So let me change the color. Suppose x इक्वल टू y इक्वल टू 0, मैं इन दोनों को 0 मानता हूं, तो बचा क्या? मॉड ऑफ z इक्वल टू 10. इसका तो क्या सिंपल सोल्यूशन है, दो ही सोल्यूशन हो सकते हैं इसके, प्लस 10 इक्वल टू 10 और माइनस 10 इक्वल टू 10, राइट? माइनस 10 इन द मॉड, तो इट विल हैव ओनली टू सोल्यूशंस. इज इट क्लियर? तो एक तो प्लस 10 का मॉड होता है 10 और माइनस 10 का मॉड होता है 10. इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट? बट x और y 0 हुआ तो हो सकता है y और z भी 0 हो और x और z भी 0, राइट? तो दिस आर द 3 केसेस, x and y 0, y and z 0, x and z 0. तो I should multiply this with 3. ठीक है? So this is the answer of the third case. Now let's add all of them. So ये तो हुआ मेरा 6, right? What is this? 9 into 4, 36, 36 into 3, 108. This is the second case का answer. What will be the first answer? 9C2 is 9 into 8 into 2 into 2 into 2. So basically 9 is the 72, 72 into 4. What is 72 into 4? Just let 72 into 4. 4 to the 8. 7 4 are 28. So 288 should be the answer of the first case. Now add all of them. Right, so if you add them, this will come out to be 402. ठीक है? No doubt this was a tedious and a long method, but a beautiful application of what we learned today. Right? Also मैंने इसका शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट से तो हार्डली 10 सेकेंड लगता था, 4n² + 2. ठीक है? इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं. डोंट गो टू द 4 mod and 5 mod, they will never come in an exam. In fact 3 mod भी बहुत मुश्किल से मॉक में आपको आएगा. Right? Okay, so let's go to the questions next. Yeah, now this is the concept 3. After the lower limit, we are into concept 3, that is involving inequality. Now what is asking? Find the whole number solutions to the equation a plus b plus c less than or equal to 12. So अगर ये वाला क्वेश्चन मुझे चॉकलेट के टर्म्स में बोलना है तो मैं इसको कैसे बोलूंगा? In how many ways maximum of 12 chocolates can be distributed among 3 students, right? यही होगा ना इसका. ये मैथमेटिकली व्हाट कैन हैपन, दैट a plus b plus c इक्वल टू 12. ये चलेगा, आपको 12 भी बांट सकते हो और इसके कुछ सॉल्यूशन आएंगे, दैट इज लेट्स से 14c2, राइट? और a plus b plus c हो सकता है 11, राइट? तो इसका आंसर आएगा आपका 13c2 और a plus b plus c equal to 10 and so on so forth. It will go till 0, right? But obviously you can't do this in an exam. So simple से इसका शॉर्टकट याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, just involve a dummy variable. What I mean by dummy, a plus b plus c, मैं एक वेरिएबल ऐड करता हूँ d, it's a dummy, इसलिए मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ. Now this inequality will convert it into equality और अपने मेथड से भी सॉल्व कर लो. ठीक है? क्लियर ये शॉर्टकट. सो 12 कितना ये प्लस हुआ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस. सो आंसर शुड बी 12 प्लस 3 15. C3 शुड बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. राइट? व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दैट डमी? व्हाटएवर इज दिस, कि जब भी लेट्स से आपको 12 चॉकलेट्स बांटने बच्चों में, तो डमी को कितना मिलेगा? 0. अगर आपको कभी ये सेकंड केस 11 चॉकलेट बांटने हैं, सो ABC में 3 ही बटेगा, बट जो एक बचेगा वो डमी में जाएगा. सिमिलरली अगर आपको 10 बांटने तो ABC 10 बांटने ABC में 10 जाएगा, जो डमी होगा उसको 2 मिल जाएगा. सो जस्ट रिमेंबर, कभी भी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना, जस्ट ऐड अ डमी टू इट. राइट? लेट्स डू द सेकंड क्वेश्चन, इट विल बी मोर क्लियर लाइक दिस. पहली बात तो यह ध्यान रखना, यहाँ पे नेचुरल नंबर सॉल्यूशन है, मतलब आपको एटलीस्ट 1 1 तो देना पड़ेगा, नॉट टू द डमी. डमी को कुछ नहीं देना. द लोअर लिमिट इज देयर, सो इट्स अ लो लिमिट. व्हाट इज द लो लिमिट? लो लिमिट इज ऑफ 1. ठीक है? अच्छा, इज इट 50 इंक्लूसिव? नो, इट इज सेइंग लेस देन 50. तो 50 तो नहीं चलेगा. मैक्स कितना दे सकते हो आप चॉकलेट? सो मैक्स चॉकलेट कैन बी गिवन दिस 3 स्टूडेंट्स इज 49.
right? Now, how to remove this inequality? I just said add a dummy to it. So a plus b plus c, a dummy variable d, I'm circling it, equal to 49. But here the lower limit as well, lower limit 1 1 दे दो. So a को 1, b को 1, c को 1, don't give anything to dummy, that is d. So remaining is 46. So what will be my final answer? So 46 and 1 2 3. So 49 c3 should be the answer, right? So I hope this is clear. Let's go to the next question. Yeah, it's a good question, a worded one. What is saying? There are 3 students A, B, C plucking some flowers. If it is known that each of them plucked at least 1 flower, again a low limit is there, right? So low limit, and all together have plucked less than 10 flowers. It is not exactly 10 flowers, it is less than 10. So again it's a question of inequality, right? So both the concept makes low limit as well as inequality. So let's convert it into the equation. क्या equation होगा ये? A plus B plus C less than 10. That is A plus B plus C. मैक्सिमम 10 नहीं चलेगा आपको, राइट? तो मैक्सिमम आप कितना प्लग कर सकते हैं फ्लावर्स? 9, ठीक है? सो प्लीज हियर इट इज नॉट सेइंग लेस देन और इक्वल टू 10. अगर लेस देन और इक्वल टू 10 होता तो 10 चलता, बट आप 10 फ्लावर्स नहीं ले सकते हो. मैक्स यू कैन टेक इज द 9 फ्लावर. नाउ आई नो द ट्रिक हाउ टू गो अबाउट इट, how to convert this inequality into inequality. Just add a dummy to it, right? So it would be A plus B plus C plus a dummy D equal to 9, right? But remember here is a lower limit as well. सब ने एटलीस्ट एक एक फ्लावर प्लग किया है तो दे दो. A को 1, B को 1, C को 1, D को कुछ नहीं देना. तो बचा कितना? 6. ये 6 और 1 2 3 प्लस 6 और 3 प्लस that is 9. So 9C3 should be answer of this. Let's solve this. 9 into 8 into 7, 3 into 2, 3 3s are 9, 2 1s are 2 4s are 8, 4 3s are 12, 12 7s are 84. Is it in the option? Yeah, first option. Am I clear? ठीक है, beautiful concept. You just need to practice and look for such questions. Okay. कुछ भी डाउट हो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में हमको अप्रोच कर सकते हैं, विल आंसर इट. नाउ द सेकंड लास्ट कंसेप्ट इज द हाई लिमिट. अगेन नॉन नेगेटिव मींस होल नंबर एटलीस्ट 0, so इट्स अ नो लिमिट क्वेश्चन टिपिकली, राइट? कुछ नहीं, सॉरी लोअर लिमिट नहीं है बट हायर लिमिट है. व्हाट इट इज? जस्ट A plus B plus C equal to 12, and what is saying? A, B, C, none of them exceeds 6. मतलब max of A, B, C value, max A, B, C can take is 6. All of them have to be either 6 or less than equal to it, right? So how to do this? Now it is a slightly tough or a tricky, you can say. Just pay attention here. The method I know is for the low limit. I know the trick for low limit. Simple होता है, जितना उसको देना है कन्वर्ट कर लो. So what I'll do, I'll convert this high limit question to a low limit question, right? So what is saying? He's saying at most or the maximum he's saying 6, right? मैक्सिमम 6 चलेगा. सो राइट, सो व्हाट आई विल डू, वो केसेस उसमें से हटा दूंगा. टोटल केसेस कितने होंगे पहले इसके बताओ. नो लिमिट, टोटल मींस विदाउट लिमिट एनी. सो 12 और ये 2 प्लस, राइट? 12 और ये 2 प्लस, दैट इज 14C2. दिस इज द टोटल पॉसिबिलिटीज, राइट? इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. सो मैक्स 6 चलेगा. तो हमको क्या नहीं चलेगा, हम वो वाली केसेस माइनस कर देंगे जिसमें भी जहां पे भी 6 से ऊपर है. सो दैट इज आई कैन से मिनिमम 7 वाले केसेस आई विल रिजेक्ट. सो मिनिमम 7 मुझे दे दो. तो लो लिमिट में कन्वर्ट कर दिया मैंने, राइट? सो अगर मैंने मिनिमम लेट्स से A को 7 दिया, कितना बचा? 12 में से 7 गए 5.
अब अपना मेथड लगा दो। सो 5 और ये 2 प्लस कितना हुआ, ये 7c2, राइट। बट रिमेंबर दीज आर टू बी सबट्रैक्टेड, तो टोटल में से ये वाला माइनस होगा 7c2, राइट। बट अब जैसे आपने a को 7 दिया, हो सकता था आप b को भी 7 दे सकते थे या c को भी 7 दे सकते थे, राइट। सो दिस वुड बी into 3, राइट। सो दिस इज माय आंसर। आई होप यू गॉट द हैंग ऑफ इट। हमने क्या किया, पहले हमने सारे टोटल केसेस निकाले और टोटल में से जितना मैक्स लिमिट हमको चाहिए था वो छोड़ के उसके ऊपर वाले सारे केसेस सबट्रैक्ट कर दिए। तो इसमें जब मैं मिनिमम 7 बोल रहा हूँ तो a का 7 वाला केस हमको नहीं चाहिए था, उसमें और ऐड होगा तो 8 भी नहीं चाहिए, 9 भी नहीं चाहिए। सो ऑल केसेस विल बी सबट्रैक्टेड, यू विल गेट द आंसर ऑफ इट, राइट। लेट्स ट्राई द अदर क्वेश्चन और उससे क्लियर होगा आपको। Yeah, 19. In how many ways a person can score a total of 100 marks in an exam consisting of 3 sections of 50 marks each? Right? तो हर पेपर 50-50 मार्क का, टोटल 150 है, 150 में से उसको 100 चाहिए। So let us say A plus B plus C equal to 100 marks he wants, right? These are the 3 sections. आई नो ए में कोई भी एक सेक्शन, लेट से क्या ए सेक्शन में हो सकता है उसको 60 मार्क्स मिल जाए, नहीं, बिकॉज ए सेक्शन ही 50 मार्क का, राइट। सो देयर इज अ हाई लिमिट। व्हाट इज दैट हाई लिमिट? दैट ए बी सी मैक्स दे कैन टेक इज मैक्स ए बी सी दे कैन टेक इज हाउ मच, 50, राइट। सो मुझे कौन से केसेस नहीं चलेंगे जहां पे ए या बी या सी ने 51 लिया, 60 लिया, वर्ड। सो आई विल रिजेक्ट विच केसेस, आई विल रिजेक्ट all the cases where minimum of any of them, that is A, B, C is 51. So पहले टोटल केसेस निकाल लेते हैं। टोटल केसेस कितने होंगे, 100 और ये 2 प्लस 102 C2, दिस इज द टोटल केस। हो सकता है 100 हो, ये दोनों 0 हो। अब मुझे इसमें से माइनस कौन से करना है, ये वाले जहां पे मिनिमम किसी को भी 51 या उससे ज्यादा मिला है, माइनस करना है। तो लेट्स से मैंने A को 51 दे दिया। व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, 100 में से 51 गया, 49। अब अपना मेथड लगा दो। तो 49 और ये 2 प्लस कितना हुआ, 51 C2। नाउ अगेन अगर मैं A को 51 दे सकता हूं तो B को भी 51 दे सकता हूं, C को भी 51 दे सकता हूं, राइट। सो इट वुड बी अगेन इनटू 3। सो दिस विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। आई एम टेकिंग स्लाइटली वे अबव डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। थोड़ा सा शायद समझने में आपको ये लगे, बट बिलीव मी, डोंट गिव अप, ट्राई करो। एक बार समझ में आ गई, कोई भी क्वेश्चंस भूलने वाले नहीं होते हैं, राइट। या नाउ कमिंग टू द लास्ट कंसेप्ट। अब तक जो हमने सीखा, लो एंड हाई लिमिट दोनों को क्लब करना है। सो इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन कैन बाय 13 फ्रूट्स of 3 types, mangoes, apple, oranges, he buy maximum of 7 and minimum of 1. So यहाँ पे both limit है, right? हमको minimum भी है, so minimum limit is how much? Minimum is 1 and maximum is 7. So how to tackle this? So A, right? Let's say not A. लेट्स से मैंगो, लेट्स से एप्पल, लेट्स से ऑरेंज। कितने लेने हमको, 13 फ्रूट्स। सो पहले लो लिमिट टैकल कर लो, उस वो तो इजी है। व्हाट इज द लो लिमिट, मिनिमम सबको 1 देना है, दे दो। मैंगो 1 ले लो, एप्पल 1 ले लो, ऑरेंज 1 ले लो। बचा कितना, 13 में से 3 गए, 10 और ये 2 प्लस, सो दैट इज 12 C2। क्लियर है यहां तक, ठीक है। दिस इज टेकन केयर ऑफ। बट अब इसमें ऐसे भी केसेस आएंगे, मैंने तो सिर्फ लोअर लिमिट टैकल किया कि मैंगो कम से कम 1 हो सकता है, 12 भी हो जाए। बट व्हाट इज द मैक्स लिमिट, 7। सो जब भी ऐसे मैक्स लिमिट होता है हम इसको क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, मैक्स लिमिट को वी कन्वर्ट इट इनटू लोअर लिमिट। सो अगर मुझे मैक्स 7 अलाउड है, सो कौन सा अलाउड नहीं है, इस 7 के ऊपर वाले। सो मिनिमम 8 वाले केसेस आई नीड टू रिजेक्ट। ये सारे केसेस मुझे रिजेक्ट करने हैं, राइट, बिकॉज एटमोस्ट 7 अलाउड था, एटलीस्ट 8 वाले में सारे केसेस रिजेक्ट कर दूंगा, राइट। बट अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। व्हाट इज इट,
कि ठीक है मुझे मिनिमम 8 है जो केसेस रिजेक्ट करनी है, दैट इज ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मैंगो। मैंगो को ऑलरेडी 1 मिल चुका है, तो अगर मुझे मैंगो को 8 बनाना है तो मुझे और कितने देने पड़ेंगे उसको मैंगोस? मुझे सिर्फ 7 देने पड़ेंगे, बिकॉज इन द फर्स्ट राउंड ही हैज ऑलरेडी गॉट 1। सो ये जो 10 बचे थे मैंने 10 में से 7 दे दिए, और कितने बचे अभी फ्रूट्स? अभी बचे 3 ओनली, राइट? सो दिस 3 and this 2, that is 5C2, and obviously this cases will be rejected. So 5C2. तो जैसे आपने मैंगो को 7 दिया, हो सकता है आप एप्पल को भी 7 दे सकते थे, ऑरेंज को भी, राइट? सो दिस वुड बी into 3. So this should be my answer of this question. Let us try to solve it. 12 into 11 by 2 minus 5 into 4 by 2 into 3. So this is 2 ones are 2 6 are 66 minus 2 ones are 2 2s are 10, 10 minus into 3 30. So 36 should be the answer. C option. Right? Slightly way above difficult question, no doubt about it, but believe me, pretty much gettable if you have the concepts at the place. Let's take another question on this. There is an orthogonal, not a hexagonal, orthogonal. It has 8 faces. So again, low limit is how much? Low is 1. And what is the high limit? High is 8, right? So first tackle the low limit, and there are 4 dices. So let me make the equation. Let's say A, B, C, D are the 4 dices. I am not writing D1, D2, D3. And sum of all of them is less than or equal to 20. Inequality involved, right? So less than or equal to 20. I know how to tackle inequality. A plus B plus C plus D, let's involve a dummy one, that is E, equal to 20. Okay, now tackle the lower limit first. Lower limit is 1, so let's give A21, B21, C21. Don't give anything to dummy. So कितना बचा ये? 12 में 20 में से 4 गया 16, 16 1 2 3 4 16 4 20C4, राइट? अब इसमें से मुझे केसेस रिजेक्ट कौन से करने हैं? मैक्सिमम अलाउड इज 8, मैक्सिमम 8 अलाउड है, तो कौन सा अलाउड नहीं है? मिनिमम इसके ऊपर वाले, दैट इज 9। ये सारे केसेस मुझे रिजेक्ट करनी है। बट अगेन एक को ऑलरेडी 1 जा चुका है, तो अगर मुझे उसको 9 बनाना है तो इट शुड बी व्हाट? 8 ही देना पड़ेगा, बिकॉज ऑलरेडी हैज गॉट 1 इन द फर्स्ट राउंड। सो 16 में से 8 गया, रिमेनिंग इज 8, राइट? सो अगर मैंने इसको 8 दे दिया, सो 8 1 2 3 एंड 4, सो दैट इज 12C4। तो अगर मैं A को 8 दे सकता हूं तो B को भी 8 दे सकता हूं, C को भी, D को, डमी को कुछ नहीं देना है। सो दिस शुड बी इनटू 4, राइट? सो इफ यू सॉल्व दिस, the answer comes out to be 2865. Okay, I'm not solving this as of now, but please solve this and try to retain as much as possible. We have covered all the 4 types. Now in the next classes we'll do the application of this, but believe me, this is not over yet. Partition theory we'll do in the next class as well. So a quick summary: distribution of identical objects. What was the first one? No limit question. It was a pretty much simple. जितना भी identical objects और जितने plus है वो add करके C plus, right? सेकेंड वॉज द लो लिमिट। लो लिमिट में जितना भी लो लिमिट था देके उसको निपटा के फॉलो और नॉर्मल मेथड। थर्ड इज द इंपॉर्टेंट हाई लिमिट क्वेश्चन। जब भी हाई लिमिट आएंगे क्या करोगे आप? हाई को कन्वर्ट कर लो लो लिमिट में। I hope you guys understood this. I know this topic is bit complicated. आपको थोड़ा टच में भी नहीं रहते हो, थोड़ा इसका डर भी है, but believe me, it's a very scoring topic. कुछ भी डाउट हो, you can message us, you can write in the comment section. We'll get back to it. Thanks a lot. Number of pathways or the route. What exactly it's like? कि just give me, let me give the example, and then we'll solve the question. कि let's say this is a particular grid. Pardon me for the diagram. Let's say I want to go from A to B. ठीक है, it is unidirectional. You can't go to and fro. A से B अगर मुझे जाना है तो in how many ways I can travel.
Okay, so there are 2-3 ways. So first we'll go with the what we have learned, that is nothing but the partition theory. Basically, if you see here, there are two horizontal, I can say, this blocks or the right. This is one horizontal and this is also second, and there are two vertical column. So I have two horizontal things and I have two vertical, this whatever you can say, line or a bar. So just remember, जब भी ऐसा पाथवे वाला क्वेश्चन है तो ये मेरे चॉकलेट्स हो जाते हैं और ये मेरे पार्टीशन हो जाते हैं. तो आई होप यू रिमेंबर. तो व्हाट विल बी द आंसर? नथिंग बट 2 + 2 4 C 2, that is nothing but 4 × 3 / 2, that is 6. So there are 6 different ways to go from A to B, right? Like this and whatever. या फिर आप शॉर्ट में ऐसे ही याद रख सकते हो इसको. जस्ट रिमेंबर द शॉर्टकट और द फॉर्मूला. जो भी हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है दोनों को ऐड कर दो, और एक जो भी रखना नीचे, एक तो हॉरिजॉन्टल रख दो या फिर वर्टिकल रख दो. आई होप यू रिमेंबर, सिलेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिजेक्शन, तो इट डजंट मैटर, राइट? सो सपोज अगर मैं एक दूसरी डायग्राम देता हूं, जस्ट लेट्स से दिस वन. सो इसमें कितने वेज होंगे? A to B. So here there are how many horizontal I can say brackets. So it will be horizontal, it will be 1, this is 2, and this is 3. Vertical will be 1, this is 2. So you just need to count the levels, right? So 3 horizontal, 2 verticals, 3 + 2, that is 5. C 2 should be the answer, that is 5 × 4/2. So 10 is the answer of this question. So I hope you got the concept. Now let's move to the questions. So this is a CAT 2004 question. Okay, I just forgot. This is a CAT 2004 question. A very plain vanilla question. Just give it a try. What is saying? The lines represent one-way road, allow travel only northwards or only westwards. So जैसे एक ऊपर की ही डायरेक्शन में जाना, either north or west. So how many distinct routes are possible? So the same thing. So how many horizontal brackets are there? 1, 2, 3, 4 and 5. So I have horizontal 5 bracket. And how many are vertical? I have horizontal 5 brackets. Okay. How many are verticals? Vertical will be 3, right? Vertical are 1, 2 and 3. So I have 3 vertical. So as we just said, क्या होगा इसका आंसर? Horizontal, vertical you add, and obviously in an exam calculation जो भी small वाला होगा वो रखेंगे, तो vertical ही रख दो, ज़्यादा better है, right? So answer of this will be 8C3. What is 8C3? 8 × 7 × 6 divided by 3 × 2. So 3 2s are 6 and 6 gone. 8 7s are 56 should be your answer. Right? So I hope this point is clear. Let's move to the next question. Now what is asking? If you can travel only south or to the right, एक तो आप नीचे जा सकते हो या फिर right is there. Find the number of ways going from A to B. That is, I need to go from A to B. So if you can see, these are the 3 squares. So ये बीच में let's say मैं कुछ points लिख देता हूँ. This junction, let's say I call it as a P, and let's say this junction I call it as a Q. So what will be my way? I'll first go from A to P, and then I'll go from P to Q, and then I'll go from Q to B. This will be my route, right? And प्लीज रिमेंबर, मैंने पहले भी कहा था, जब भी कहीं पे भी एंड आए, एंड का मतलब हमेशा होता है मल्टीप्लिकेशन, और का मीनिंग होता है एडिशन, राइट? सो A to P, हाउ मेनी वेज आर देयर? हाउ मेनी आर द हॉरिजॉन्टल? 1 2 3 4 5, एंड वर्टिकल 1 2 3 and 4. So 5 horizontal, 4 vertical. I'll directly writing the answer now. Add them, that is 9. छोटा वाला वैल्यू रख दो, दैट इज 4. C4 एंड मीन्स इनटू P to Q, 2 horizontal 2 vertical, so 2 + 2 4 C2 into Q to B, 3 horizontal 3 vertical, so again answer should be 6 C3. So this is the answer of this question, right?
So I hope you got this point, how to solve a normal typical path or the roots question, right? Now this question, अगर आप इसमें देखोगे, इसमें नॉर्मल मेथड ये जो अब तक हम कर रहे थे वो लगाना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे इट्स नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर और अ रेक्टेंगल. सो लेट्स लर्न द अदर वे एज वेल, बिकॉज ये तो भले ही शायद हो जाए, बट जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस वो इस मेथड से नहीं होंगे, ठीक है. सो लेट्स लर्न द जनरलाइज मेथड विच विल, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन और रूट्स को सॉल्व कर सकते हो. तो आई विल यूज हियर पास्कल ट्रायंगल. I hope everyone must be knowing what is a Pascal triangle. It goes like this कि 1 1, right? Then what it happens कि ये 1 plus 1 add हो जाता है, that is 1 2 1. फिर क्या होता है, ये start का 1, then this 1 plus 2, that is 3, right? This is 1 plus 2, that is 3. Then 3 plus 2 plus 1, that is again 3, and last में 1 again. This is 1, this is 1 plus 3, that is 4, 3 plus 3, that is 6, 3 plus 1, that is 4, and 1 again, and so on so forth, right? So this is known as the Pascal triangle. Now how will we use this? Okay, I'll explain on the previous question solved as well, ठीक है, to get the better clarity. जो अभी हमने question solve किया है उस पे भी हम लगा के देखते हैं. Let's say this basic question first. जैसे ये इसका आंसर था कितना 6 एंड इसका था 10, ठीक है. जस्ट लेट्स ट्राई टू लर्न द पास्कल्स ट्रायंगल. सो A to B जाना है, जस्ट रिमेंबर द डायरेक्शन, आई नीड टू गो फ्रॉम A to B, ठीक है. तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा, यहाँ पे 1, बिकॉज पास्कल ट्रायंगल स्टार्ट्स विद 1. जो जहां से भी आप शुरू कर रहे हो वहां 1 1 लिख देना. सो इधर यू नीड कैन गो दिस वे और दिस वे, तो मैंने दोनों जगह 1 1 लिख दी. तो यहाँ से एक वे आ रहा है, यहाँ से एक वे आ रहा है, तो इस जंक्शन पे कितने ways I have? From this I have 1 way and from here I have 1 way, so I'll write it 2 here. So इस पॉइंट पे मैं दो तरीके से आ सकता हूं. Now this point, यहाँ पे कितने वेज है मेरे पास? यहाँ से 2 रास्ते और यहाँ से 1 रास्ता. So particularly at this point I have 3 ways, right? Now come to this part, this point. यहाँ पे कितने वेज है? यहाँ से ऊपर से 1 आ रहा है, यहाँ से 2 आ रहा है, तो 2 plus 1 I have 3 ways. Now last B पे कितने पॉइंट्स होंगे? यहां से 3 रास्ते, यहां से भी 3 रास्ते, 3 और 3 6, right? That was our answer. So this is a Pascal triangle. Let's try to use here as well. ठीक है, let's quickly do it. So again, north direction I need to remember. So this will be 1, this will be 1, this will be 1, again 1 and a 1. So 2 here, just a matter of practice. It's 3 here, 2 plus 1. Here it will be 3, 2 from here, 1 from here. Here it will be 6, 3 from here, 3 from here. Here it will be 3 here, 1 here, it will be 4. And last at B, it will be 6 and 4, 10. That was our answer, right? So pretty much easy, not very difficult, just a matter of practice. Let's do at this as well, right? So I need to go from here to here. Just let me erase. Answer of this question was 56, right? So एक बार quickly कर लेते हैं. So 1 1 1 1 1 1. So here it will be 2. Here it will be 3. Here it will be 4. Here it will be 3. Just 1 1 getting added, right? Here it will be 4. It will be 5 and 6 here. Now at this moment it will be how much? 3 from here, 3 from here, it will be 6. Here it will be how much? It will be 10. Then here it will be 6 plus 4, 10. Here it will be 20. Here it will be how many? 5 from here and 10 from here, it will be 15. Here it will be 35. Sorry, 35. Here it will be 6 from here, 15 from here, 21. And 35 and 21 at B will have 56. Right? So इतना भी टफ नहीं है, जस्ट थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. Now let's try to solve that question. This. So I need to go from A to B, right? So again 1 1 1. So 2 3 4 5 and 6. Here it will be 1 plus 2 3 6 10, 15 and 21.
Now here it will be how many? 3 from here, 1 from here, it will be 4. 4 from here, 1 from here, 5. It will be here 6, right? Here it will be 7. Here it will be 8. Now at this junction, how many will have? Here it will be 6 ways only, right? यहाँ पे 6 ही होंगे because यहाँ से कुछ नहीं आ रहा है. At this moment it will be 13. At this point it will be what? 13 plus 8, 21. Here it will be 6 only, right? ऊपर से ही रास्ते आ रहे हैं बस ये. यहाँ पे हो जाएंगे 13 यहाँ से और 6 यहाँ से. It will be 19. At this moment it would be 21 from here, 19 from here. It would be nothing but 40, right? At this moment यहाँ से ऊपर से 6 आ रहे हैं और यहाँ से भी कुछ आ रहा है, right? तो I'll need to count here first. So this was 21. ये भी 21 है, तो यहाँ पे कितना होगा? 15 only. ये जो 15 आ रहा है, right? At this point 15 and this 21, ठीक है? 15 plus 21, this would be 36. Here it will be 15 only because ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है. 36 and 15, it would be nothing but 51, right? Yeah. Now at this moment कितने रास्ते होंगे? यहाँ से 15, यहाँ से 6, तो this will be 21. At this moment 21 plus 51, this would be 72. यहाँ पे कितना होगा? ये 19 यहाँ से, ये 21 यहाँ से, this would be 40. ये 40 और ये 40 यहाँ पे होगा 80, ठीक है? यहाँ पे कितना होगा? 40 और 72, this would be 112, and the last at this point it would be 80 and 112, 192 is the final answer. Right? Seemingly difficult question, no doubt about it, but if you prepare well, it can be done. Okay, not at all tough one. So let's try the other question. Again, this can be solved only by Pascal. There is no quick way to get to this, right? So again, I need to go from here to here. A से B जाना है. No backtracking allowed. So again, I'll write 1 here, 1 here. सिर्फ इन दोनों जगह पे आएगा 1, 1, 1 and 1. So at this point कितने ways होंगे? 2. At this point कितने ways होंगे? 3. Here it would be 2 plus 1, 3. Here it would be 2 plus 3 plus 1, 4. Here it would be 5. At this junction it would be 6. Here it would be 10. Right? अब ये जो 3 रास्ते यहाँ से भी ये 3 ही होगा, तो this point it would be 9. This point it would be 19. अब ये जहाँ से 3 आ रहा है तो यहाँ पे भी 3 ही होगा, right? There is no other way कि यहाँ पे कोई और पॉइंट है. Here it would be 9 plus 3, 12. Here it would be 19 plus 12, that is 31, right? Now coming here it would be at this point ऊपर से 19 and यहाँ से आ रहा है 5, that is nothing but 19 plus 5, that is 24, right? And at this moment it would be 13 from here, 24 from here, 55. So 55 has to be answer of this particular question. So I hope you are getting the hang of it. Please practice it. You'll get the questions right. Let's try 1 or 2 questions more. Yeah. This is a CAT 2008 question, right? So let's solve the question number 5 first. What it says, Neelam rides a bicycle from her house at A, right? And she needs to go to the office at B along the shortest path. That is the keyword. So find number of the shortest path possible. Now this shortest path, obviously this will be along the diagonal, right? It will be along the diagonal. So how it will be how my route will be? Let's say this particular point as X and let's say this particular point as Y. So I'll first go from A to X, right? In fact, that Neelam will go from A to X and then X to Y and Y to B. Now this can be solved by our preliminary method as well. ठीक है, नॉर्मल जो फर्स्ट वाली मेथड थी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल. फ्रॉम A to X, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल आर देयर? 1 and 2.
vertical 1 and 2, right? So if I look at only a to x, so there are 2 horizontal brackets and 2 vertical brackets. So 2 plus 2, that is 4c2 should be a to x. Now from x to y, I have a diagonal road available, and that would be the shortest way. So I'll only go by one way, that is along the diagonal from x to y. Now y to b. Y to b, how many horizontal are there? 1, 2, 3 and a 4. 4 horizontal and 1 and 2, 2 vertical. So answer will be horizontal plus vertical, that is 4 plus 2, 6c2. Okay, so this should be my answer. Let us solve this. It will be 4 into 3 by 2, 2 ones are 2 twos are 3 twos are 6 into 1, and this will be what? 6c2, 6 into 5 by 2, that is 15. So 6 into 15, 90 should be my answer of this question. Fourth option. Yes. Let's look at the second question of this. Question number 6. What it says, Neelam wants to go from A to C here. A to C, but via B along the shortest route again, then also again along the diagonal. So how her route will be? She will first go from A to B and she will then go from B to C. We have already calculated the answer of A to B, right? In the last question, what was it? 90. So my common sense says whatever value of BC it would be, but it would be surely multiple of 90. So my answer also has to be multiple of 90. Let's look at the options, right? Because there are 5 options. So obviously 792 is not a multiple of 90. 1200 is also not a multiple of 90. 936 is also not a multiple of 90. This is a multiple of 90, 630. So I have eliminated 3 options. So my answer has to be either first option or the second option. Now let's solve this. So B to C, if I want to go, let's apply here Pascal method. From B, I need to go to C. Okay. So if this is 1 and this is 1, right? Till C I need to go, so I need to stop here only. So here it will be how many ways? Here it will be, let's write 1 first. Yeah. So here it will be 2, here it will be 3, at this point it will be 4, at this point it would be 5, at this point it would be 6, right? And this one here, it would be 7. So ये भी कितना होगा? D पे there will be 6 ways only, because ऊपर नीचे से कुछ नहीं आ रहा और यहाँ से भी कुछ नहीं, तो these are only 6 way. So at C, this 6 and this 7, 6 plus 7, it would be 13. So from B to C, I have 13 ways to go. So B to C, I have 13 ways to go. That comes out to be 1170. 13 9s is 117. So that should be my answer. So answer of this particular question is 1170. Okay. So just don't think earlier only कि मैं हमेशा यही method use करूँगा. Be conversant with both the methods. You can have liberty to use any of them in the question. Let's solve another question. This is a CAT 2011 question, a very easy question. Okay, so obviously it can't be solved by the horizontal wala method. Pascal triangle se quickly answer aa jayega, right? So A to B I need to go. It would be 1. It would be 1, 1 and a 1. So here it will be how many ways? 2 ways. It would be 3 ways. Here it would be 4 ways. It would be 2 here only because और कहीं से कुछ नहीं आ रहा. Here it would be 2 from here, 3 from here. It would be 5. At this moment it would be 5. It would be 4. So it would be 9. यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा. आपको सिर्फ डायरेक्शन याद रखनी है, किस डायरेक्शन में जाना है, राइट? A to B. So I need to go in this direction. So बस उस डायरेक्शन में आप ऐड करते जाना है. Numbers will not make any mistake. So 9 plus 5, 14 is the final answer of this question. Right? Pretty simple it was, provided you know the way of it. Okay. Let's look at the next question. Okay, it's a set of 2 questions. Let's solve it. So here it is diagram given. These are the typical note. Let's solve the first question. 8. I need to go from in how many ways a person at node 9 reached to B. So P
P से मुझे B तक जाना है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. P से, तो डोंट स्टार्ट फ्रॉम E, राइट, P से. So here it would be 1, here it would be 1, here also 1, 1 and 1. So at this point it would be how much? 1 from here, 1 from here, it would be 2. At this point it would be 1 from here, 2 from here, it would be 3. At this point it would be 4. Now यहाँ से कितने होंगे? ये तो 1 ही है, तो this would be 2 from here, it would be 3. Here it would be 3 from here, and also 3 from here, it would be 6. Here 6 from here, 4 from here, it would be 10, right? Now this 3 also, this will be 3 again. At this point this 6 roots are coming up, this 6 and this 3, it would be 9. At this point 9 from here, 10 from here, it would be 19, right? So far here it would be 3 only, right? So at this moment 9 from here, 3 from here, that is 12. And last, this is 12 from here, 19 from here, 31. So 31 should be the answer of the first question. Clear? Okay. So let's solve the 9th question. I'm erasing it. For the 9th question, what it says, how many ways a person can travel from A to B traveling via node Q? So Q से हमको आगे जाना है, right? Okay, so let's start from here. So first I'll go from A to Q, right? So it is 1 here, this is 1, this is 1, this is 1. Don't go above because वो Q के ऊपर हो जाएगा, आपको backtrack करना पड़ेगा, and backtracking is not allowed, right? You either can move to the rightwards or the upwards. तो अगर मैं एक step ऊपर चला गया Q के, तो मुझे डाउनवर्ड वापस आना पड़ेगा, विच इज नॉट अलाउड, राइट? सो मैं सिर्फ Q के लेवल तक ही मैं 1 लिखूंगा. सो Q के लेवल तक मीन्स दैट मीन्स दिस 3, राइट? सो दिस पॉइंट, इस पे कितना आएगा? 1 plus 1 2. दिस पॉइंट इट विल बी 2 plus 1 3. दिस पॉइंट 3 plus 1 4. हियर इट वुड बी 2 ओनली. 2 plus 3 दिस विल बी 4. Not sorry 4. 2 plus 3 it would be 5. At P it would be 5 from here, 4 from here, it would be 9. ठीक है, यहाँ पे कितना होगा? ये 5 ही रास्ते आ रहे हैं यहाँ तक, so it would be 5 here. 9 plus 5 it would be 14 at this junction. Okay, now rightward यहाँ पे से 14 है, तो यहाँ पे भी 14 ही होगा, right? That is only way coming. ओके, अभी मुझे Q से 14 B तक जाना है. अब 2 वे है, मैंने A to Q निकाल लिया 14, मैं Q to B फिर से 1 लेके निकाल सकता हूँ, बट 1 की जरूरत नहीं, जब यहाँ पे 14 है तो आई कैन टेक 14 ओनली. ठीक है, 14 को ही लेके चलते हैं. तो ये 14 है, तो यहाँ तक तो 14 ही आ रहा है, राइट? सो ये दिस विल बी 14, दिस विल बी 14, दिस विल बी 14 एंड दिस विल बी 14. ठीक है, सो ये कितना होगा? 14 plus 14 28. This 14 plus 28, this will be 42. Similarly, 28 plus 14, this will be 42, and 42 plus 42, this will be 84. So answer of the 9th question is 84. Okay, so I hope you got this funda of how to calculate this pathways and routes. A very important topic. You will surely find questions in mocks, and you can get in CAT as well. Okay. So, okay, if you have any doubts, you can ask in the comment section, or some tricky question related to the arrangements of the digits. These are some questions which I selectively picked up, which students recurringly ask me, right? Not at all the easy questions related to digits. Okay, so the first type of the question is the application of the partition theory, what we did, right, in the last class. So basically it is a type 5 which we did in the last class, that is a both high and low limit question, right? So where we stopped in the last class, we are continuing from there only. So it is a both high and low. Now what is the question? How many 4-digit numbers can be formed such that sum of the digits is 10? That means let's say A, B, C and D. इन सब का डिजिट का सम आना चाहिए 10, राइट? नाउ A, B, C, D are the digits, right?
but remember a is at the first place, so obviously my a cannot take 0, because अगर मैंने a को 0 दे दिया, so it would not be a 4-digit number. अगर मैंने first digit 0 रख दिया, it would be automatically a 3-digit number. So my a cannot take 0. So the lower limit of a, it has to be, so lower limit of a, it would be nothing but 1. a has to be at least 1. So a का range अगर मैं देखूँ, a will be in the range 1 to 9. So this is what I'm talking. The a has the lower limit of 1 as well as higher limit of 9. Whereas b, comma c, comma d, they don't have any lower limit. b, c, d can take 0, but as they are digit, there is a higher limit. We don't have any digit more than 9. So max it can take is 9, right? So these are the two cases we need to keep in mind. So let's first tackle a. A का lower limit, that is 1. So give 1 to a. So अगर मैं इसको 1 दे दिया, बच्चा कितना 10 में से 1 गया, that is 9, and this 3 plus 1, 2, 3. So it would be 12 C3, right? Now lower limit tackled. Now let's look at the high limit. What is the high limit for all of them? A, B and C and D. For all of them, the high limit is 9. So that means at most, or the maximum, or the high limit, that is 9. So this is allowed, which is not allowed. So what we do, because we know the technique for low limit, we convert high limit question to the low limit question. So as we know maximum 9 is allowed, so इसके जो ऊपर की केसेस है एटलीस्ट 10 वाली, वो सारी केसेस हम माइनस कर देंगे, राइट? सो वी जनरली कन्वर्ट एट मोस्ट क्वेश्चन टू द एटलीस्ट क्वेश्चन. सो ऐसे डिजिट जहां पे 10 या 10 से ज्यादा ले, दैट वी नीड टू सबट्रैक्ट. सो लेट्स सी. So this is my focus कि ऐसे कितने digits 10 ले सकते हैं, that I need to see and then I need to reject this part. So a, tell me अगर मुझे a को 10 बनाना है कितना देना पड़ेगा? Keep in mind that a has already got 1. So अगर मुझे उसको 10 बनाना है, मुझे उसको और 9 देना पड़ेगा, right? So अगर मैंने उसको 9 दे दिए, मेरे पास 9 ही थे, so 9 में से 9 गया, remaining is 0. Now apply our method. So this is 0, 1, 2 and 3. 0 plus 3, 3, that is 3C3. ठीक है, A done. Now tell me, can we make, so at this moment this A is done, right? अगर मुझे B को बनाना है 10, is it possible? No, I can't make B 10 because to make B 10 I need to have 10, but 10 is not there because A को तो मुझे कंपलसरी 1 देना है, तो 1 देने के बाद कितना बचा? 9 ओनली, और 9 में से मैं 10 नहीं दे सकता, तो none of the B, C, D can be made 10, तो my answer stops here only it will go to A only 1 person, right? So this is the answer of this question, right? So I hope everyone got this point. ठीक है, so answer of this question will be 12C3 minus 3C3. Let's take the another question. Okay, here how many 4-digit numbers? Again, a plus b plus c plus d equal to 15. Again 4-digit numbers, so low limit is for a, that is at least it has to be 1 and max it has to be 9, and whereas b, c, d, they can take anywhere from 0 to 9, right? So let's give a फर्स्ट. तो a का 1 गया, कितना बचा ये? 14. So 14, 15, 16, 17. So it would be 17C3. Now let's tackle the higher limit. So higher limit is 9, right, for both of them. So let's take the first case, that is of a. Case 1, a का max limit कितना है? Max is 9, right? So what we do, we convert this max into mean or the at most into at least. So minimum a जब 10 लेगा, I need to reject that cases, right? So to make a as 10, मुझे और कितना देना पड़ेगा यहाँ पे? Already 1 is given, so it would be 9 given here. So 9 given, 14 में से 9 गया, कितना बचा? Because remember this is a continuation of the question, ठीक है, continuous चल रहा है. 14 में से 9 गया, it is 5. Now 5, this is 6, this is 7, this is 8. So it would be 8C3. Obviously it would be subtracted. Now take the case 2, which is case 2. मैं BCD को max बनाता हूँ, B, C, D, that is max. Again it is no doubt 9, but
आई नीड टू डिलीट सेपरेटली, वाई? बिकॉज एक के केस में ऑलरेडी ही हैज गॉट 1, तो इसीलिए उसका अलग था, राइट? सो आई इरेज दिस. क्लियर? नाउ माय फोकस इज टू मेक ईदर बी और सी और डी मिनिमम 10, राइट? सो अगर मुझे बीसीडी को 10 बनाना है, नीदर ऑफ द बी और सी और डी हैज गॉट एनी ऑफ द अर्लियर, राइट? तो मुझे अगर मुझे लेट से बी को बनाना है तो मुझे सारे के सारे 10 देने पड़ेंगे उसको. सो अगर मैंने बी को 10 दिए, 14 में से 10 गया, कितना बचा? 4. सो इट इज 4, 5, 6 एंड 7. सो इट वुड बी अगेन -7 C3. और मैं अगर बी को 10 दे सकता हूँ, सी को भी 10 और डी को भी 10, तो ये 3 केसेस होंगे, राइट? सो दिस इज माय आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट इन दिस. इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, राइट? लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस. जल्दी से 1 स्टेप में आ जाएगा इफ यू नो, राइट? अगेन द रिपीटेटिव क्वेश्चन, बट इट गुड फॉर अ प्रैक्टिस, ठीक है? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 12. अगेन 4 डिजिट नंबर है, सो a के लिए लोअर लिमिट आई विल गिव 1. रिमेनिंग इज हाउ मच? 11, 11, 12, 13, 14. सो इट वुड बी हाउ मच? 14 C3 माइनस, पहले a का लोअर लिमिट टैकल कर लेते हैं. तो a को कितना मुझे मिनिमम, मैक्सिमम 9 है, तो मिनिमम 10 बनाना है. he has got already 1, so to make it 10 I just need to give 9 to a. तो a को मैंने 9 दिया, तो बचा 2, 2, 3, 4, 5. so it will be 5 C3. so instead अगर मुझे b के बजाय, a के बजाय b c d को किसी को देना हो तो, just a moment. So if I want, this is 11, b को देना हो तो I need to give 10 to it, right? Because at most 9 ये केस तक चलेगा, एटलीस्ट 10 वाले मुझे केसेस रिजेक्ट करने हैं सारों के लिए, a के लिए, b के लिए, c के लिए और d के लिए, राइट? सो दिस आई नीड टू फाइंड इट आउट. सो मैंने b को अगर 10 दे दिए, बचा कितना? सिर्फ 1, 1, दिस इज 2, 3 एंड 4. सो इट वुड बी 4C3 into 3. मैं C को भी दे सकता हूँ, D को भी दे सकता हूँ. So that would be answer of this particular question, right? Now, yeah, this is question number 2. Now, if you look here, what is saying? How many integers between 1 and it is how much? So how many digit it is can be the sum of the digits of that number, right? So maximum it can go, it is till up to between bola, right? So I'll not include this figure. It can go up to 6 digits. तो अगर मेरा कोई भी नंबर हो अप टू 6 डिजिट, राइट? सो रिमेंबर दिस पॉइंट. यहाँ पे इस बार नंबर ऑफ डिजिट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में इट वाज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ 4 डिजिट. उसने बोला 1 से लेके 6 डिजिट तक कोई भी चलेगा. अब यहाँ पे केसेस मत बनाते बेटो, 1 स्टेप में ही आंसर आ जाएगा. सो मैक्सिमम हम कितने डिजिट का बना सकते हैं? 6. सो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एंड प्लस एफ, दिस हैज टू बी इक्वल टू 18. Now look at the limits. So अगर ये जो भी है a, b, c, d, f. Now a will have how much lower limit? Maximum limit तो 9 है. अब a का भी lower limit 0 हो जाएगा. Now it doesn't matter because I don't need a fixed number of digits. So अगर just imagine मैंने a को 0 रख दिया तो कोई इशू नहीं, मुझे 5 डिजिट का नंबर मिलेगा, that is allowed. अगर मैंने b को भी 0 रखा तो I'll get 4 डिजिट नंबर. अगर ये रख दिया तो I'll get a single digit number. तो it doesn't matter, right? So they will have the lower limit. Now let's solve this. So as in this case there is no lower limit, so we just need to take care of the higher limit. What is the, so total cases is how many possible? 18, 19, 20, 21, 22, 23. It would be 23 C5. सब्ट्रैक्ट करने मुझे क्या, मुझे हायर लिमिट को टैकल करना है अभी. सो दैट इज 9. सो आई नीड टू कन्वर्ट एट मोस्ट 9. दिस इज अलाउड. आई नीड टू सब्ट्रैक्ट द केसेस ऑफ एटलीस्ट 10. सो एटलीस्ट 10 वाले केसेस मुझे सारे सब्ट्रैक्ट करने हैं. तो लेट्स मेक इट. सो अगर मुझे a को 10 बनाना है, कितना देना पड़ेगा मुझे उसको? अभी इस बार कुछ नहीं गया तो मुझे a को सारा 10 देना पड़ेगा. लेट्स से मैंने a को 10 दे दिया. व्हाट इज रिमेनिंग? 18 में से 10 गया 8, 9, 10, 11, 12, 13. It would be 13 C
5। अब जैसे मैं A को 10 दे सकता हूं तो B को भी 10 दे सकता हूं, C को भी 10 दे सकता हूं, तो एनी ऑफ द 6 में किसी को भी 10 दे सकता हूं, राइट? सो इट वुड बी इनटू 6. So this should be answer of this question. Okay, so I hope you're getting the variations in the questions. Okay, chalo, let's do the next question. Fourth we have done. Okay, so now we are up to the second type. This type is sum of all possible numbers. Okay, I'll start with a plain simple question. Sum of all 3-digit numbers using 1, 2, 3. Let's go manually first, then we'll chalk out the method for this. So 3 digits, 3 places. I hope you remember the definition of factorial. N people, n places, answer is n factorial. So here 3 digit, 3 numbers, it would be how many numbers possible? 3 factorial, that is 6 numbers can be formed. Which are those 6 numbers? Let's chalk it down. 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Right? So if I add all of them, 2, 3, 6, 6, 6, 12, 12 plus 1, 3, 12 plus 1, 1332 should be my answer. So sum of all digits in this case should be 1332. Okay. Now obviously you can't do this in an exam जब अगर 5 digit 6 digit. Now let's see how to chalk a method for this. ठीक है, मैं तो direct formula नहीं, try to just get the logic of it. अगर आप देखोगे कोई भी यूनिट डिजिट या टेंस डिजिट, आप हर जगह देखोगे 1, 2, 3, यहाँ पे भी हो रहा है 1, 2, 3, राइट? यूनिट्स प्लेस पे भी वैसे ही हो रहा है, टेंस प्लेस पे भी 1, 2, 3, 1, 2, 3, हंड्रेड्स प्लेस पे भी वैसे ही हो रहा है. सो द फर्स्ट थिंग विच कम्स इन माई माइंड, एक तो मैं 1, 2, 3 यहाँ पे, इट शुड बी 1 + 2 + 3. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, 3 डिजिट का नंबर है. This place I call it as unit digit, right? कोई भी unit digit होता है तो I multiply it with 1, right? Tens digit gets multiplied with 10 and 100 digit gets multiplied with 100. So if I add all of them, that is nothing but 10 square plus 1, 10 plus 1. What it comes out to be? 111. Basically, जितने digit का number है उतने ones. So I'll write it down 111. Right? Now, next part. ठीक है? This 2 part done. So this is the sum of the digits whichever he has given. Next, don't do this जो मैंने लॉजिक का, सीधा इसका शॉर्टकट याद रखना, उतने वंस लिखने जितने डिजिट्स का उसने पूछा. 3 डिजिट का नंबर पूछा था तो मैंने 3 1 लिखे. एंड द लास्ट पार्ट, अगर आप यहाँ नोटिस करोगे 3 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 1 2 बार आया है एट एनी प्लेस, चाहे वो यूनिट्स हो, टेंस हो, 100 हो. नाउ हाउ टू डिराइव दिस? मुझे 3 डिजिट का नंबर चाहिए. लेट्स से आई वांट टू फाइंड कि 3 2 बार कैसे आता है. So what I'll do, I'll fix any digit for 3. Let's say मैं यूनिट डिजिट में 3 फिक्स कर देता हूँ और I had 1 2 3, right? Now 3 तो फिक्स हो गया. अब बचे कितने डिजिट्स? I had 2 डिजिट और कितने प्लेसेस बचे यहाँ पे, उनके लिए भी 2. So I need to arrange this 2 digits at this 2 places. So that is 2p2, right? So this would be nothing but my final answer. Remember, 2p2 will be nothing but 2 factorial. Arranging 2 people at 2 places is 2 factorial. Npn is always n factorial, right? Or npn is 1 n. So what will be the answer of this? So it would be 6 into 111 into 2. So if you solve this, this comes out to be 1332, right? So I'm repeating again. सम ऑफ द डिजिट्स, जितने डिजिट का नंबर चाहिए उतने वंस, और वो कोई भी एक डिजिट पर्टिकुलरली कितने बार आता है. ठीक है, say the method for this. Okay, there is another method to solve this question. ठीक है, so let's try that as well. ठीक है, इट में कम हैंडी एज वेल, जो भी आपको फिर मेथड सूट होती हो. ओके, सो दिस इज मेथड 2. I hope everyone knows the formula for sum. Sum is nothing but average into number, right? Average और the arithmetic mean दोनों एक ही होता है. ठीक है, so arithmetic mean का क्या फॉर्मूला होता है? और average is nothing but low highest value first term or the last term by 2. ठीक है, this is a formula for the arithmetic mean or the average. So what is here the first term or the smallest number you can get? You can get is 1 2 3,
and last is this 3 to 1. So my average will be nothing but sum of these two numbers. What is 1 to 3 plus 3 to 1? If you look, this is nothing but 4, 4 and 4. So average will be first term and last term, that is 444. This is the sum by 2. And how many numbers can be formed? That is nothing but 3 factorial, that is 6. So 444 into 3 is nothing but 1332. Okay? So this can also be done in such type of questions. So let's try to apply in the next question. Let's say this quickly, दोनों भी मेथड से जल्दी आ जाएगा. लेट्स से मैं अगर फॉर्मूले नॉर्मल लॉजिक से करता तो व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? ऐड ऑल द डिजिट्स 1 2 + 5 + 6. सेकेंड, कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का. सो इट वुड बी 1 1 1 4 टाइम्स 1. अब हर डिजिट कितने बार आएगा? लेट्स से 4 डिजिट का नंबर, फिक्स एनी डिजिट. लेट्स से आई फिक्स्ड अप 6. सो डिजिट्स remaining are 3 and places remaining are 3, that is nothing but 3p3. So my answer should be, this is nothing but 8 14 into 4 times 1 into 3 factorial, that is 6. Okay, so if you solve this, this comes out to be 93324. that is the answer of this question. ठीक है, और the other way जो हमने सीखा था, क्या था उसका सम? एवरेज into number. What is the average? First term plus last term by 2. What is the first term? The smallest number which you can get is 1 2 5 6. And what is the highest number you can get is 6 5 2 1. First term plus last term by 2 into how many numbers are possible? 4 numbers, 4 factorial, that is 24. So this is it. If you solve this, this will come out to be 93324. ठीक है, 4 factorial is 24. Just keep here for 24. This into 12. For such big numbers as in cat, you have the calculator allowed, so you can use the calculator in such questions. Let's go to the next question. Here, now here sum of all 3 digit numbers using digits 1 2 3 4. Here digits are 4, but we want only 3 digit numbers, so it doesn't matter. First step, 1 plus 2 plus 3 plus 4. कितने डिजिट का नंबर चाहिए? 3 डिजिट का. तो मैं 1 कितने बार लिखूंगा? 3 बार. सो 1 1 1. नाउ एवरी डिजिट विल कम फॉर हाउ मेनी टाइम्स? आई वांट 3 डिजिट नंबर, सो आई विल फिक्स 1 डिजिट. लेट्स से कोई भी डिजिट, लेट्स से मैंने 4 लिख दिया पे. सो कितने डिजिट बचे? 4 गया. डिजिट्स आर 3 and the places are 2. So here it will be 3p2, right? So let's solve this. This is the answer of this. कितना होगा ये? That is nothing but 10. 4 plus 3 plus 2 into 111. And what is 3p2? 3 into 2, nothing but 6. So 6 into 10, that is 6660 should be answer of this question, right? So pretty simple question if you know them beforehand. Let's solve another question. Yeah, so let's look at this question number 7. What it says, sum of all 4 digit numbers which are formed using 1 2 3 and 0. Here the main thing is 0. ठीक है, 0 हमको थोड़ा ट्रबल दे सकता है, तो देखते हैं इसको how to tackle this. So let's go for general wise. Sum of the digits 0 plus 1 plus 2 plus 3. 4 digit number I want, so it would be 1114 times into. Consider 0 as a proper digit now, as of now. अगर मेरा कोई भी एक डिजिट या फिक्स हो गया, let's say 3, so 3 डिजिट बचे और 3 जगह बचे, तो it would be 3p3, right? But in this particular case, I considered 0 as a digit. So ऐसे कुछ केस हो गए जहां पे 0 फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा. Let's say this number 0 1 2 3, but 0 1 2 3 is not a 4 digit number. It's a typical 3 digit number. So मुझे ऐसे सारी केसेस सबट्रैक्ट करनी है जहां पे 0 फर्स्ट पे आए और ये बाकी डिजिट इधर है, राइट? सो टिपिकली इट इज नथिंग बट आई नीड टू अरेंज दिस 1 2 3. यहां से जितने भी नंबर्स बनेंगे मुझे उनका सम सबट्रैक्ट करना है, राइट? सो डिबारिंग 0. सो लेट्स डू दिस. अभी किया हमने, तो ये मुझे माइनस करना है. सो अगेन सम ऑफ द डिजिट्स डिबारिंग 0, इट विल बी 1 plus 2 plus 3. 3 डिजिट के नंबर मुझे माइनस करना है, राइट? सो इंटू 1 1 1 इंटू कोई भी 3 डिजिट का नंबर हो, उसमें से अगर एक कौन सा डिजिट कितनी बार आता है, दैट आई नीड टू पिक हियर, राइट?
सो एक डिजिट तो यहाँ बैठ गया, लेट्स से एनी डिजिट 2, सो बचे कितने, 2 डिजिट 1 and 3 और प्लेसेस भी 2, सो इट वुड बी नथिंग बट 2p2, right? So if you solve this will be nothing but 3 plus 2 plus 1 6 into 1 1 1 1, 3p3 is 3 factorial, that is 6 minus 1 2 3 6 into 1 into 2, right? So if you solve this comes out to be 38664. You can pretty much use calculator, right? So answer of this is 38664. So I hope this concept is clear, right? So let's move to the next question. Yeah, question number 3, again sum of the digits. So again I want 3 digit number and digits are 1 2 5 6 0. अब भी हमने इसको सॉल्व किया था, कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप 0 plus 1 plus 2 plus 5 plus 6 into I want a 3 digit number. अब कोई भी डिजिट कितने बार आएगा? So fix any digit. Let's say if I fix 6 here, कितने डिजिट बचे? If 6 gone, so 1 2 3 and 4, 4 digits but places are only 2, so it would be 4p2. ठीक है? Now I need to subtract those cases जहां पे फर्स्ट पे 0 हो, राइट? जहां पे फर्स्ट पे 0 और कोई भी डिजिट फिर यहां पे आ सकता है, ठीक है? सो इसको कैसे सॉल्व करें? बिकॉज अगर फर्स्ट पे 0 आ गया तो इट विल नॉट बी अ 3 डिजिट नंबर, इट विल बी अ 2 डिजिट नंबर. सो सबट्रैक्ट 0 एट द फर्स्ट पे 0 1 plus 2 plus 5 plus 6, कितने डिजिट का नंबर सबट्रैक्ट होगा? बिकॉज ये 3 डिजिट के नंबर नहीं है, ये टिपिकली 2 डिजिट के नंबर है, तो इट वुड बी इनटू 1 and 1, राइट? अब कोई भी डिजिट यहाँ कितने टाइम्स आएगा? 0 ऑलरेडी टेकन दिस प्लेस. नेक्स्ट कोई भी डिजिट, लेट्स से 5, तो यहाँ पे अगर 5 गया, सो कितने डिजिट्स यहाँ बचे? If 5 gone and 0 already gone, so digits remaining are 5 gone, 0 gone, so digits remaining are 3 and the place is only 1 vacant, right? So it would be multiplied by 3p1, right? So I hope this point is clear. So answer of this question will be nothing but, you can solve this part, right? This will be answer of this question. Okay, let's look at the next question. Okay, here this is a very simple question as it doesn't have any 0. जल्दी से आप कर सकते हो, ऑप्शंस भी है. I think this is a cat question, I don't remember the year. Let us solve. क्या होगा? फर्स्ट स्टेप सम ऑफ द डिजिट्स. डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला, कुछ कुछ बुक में फॉर्मूले से दिया हुआ है, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, यू विल नॉट फॉरगेट इट. सम ऑफ द डिजिट्स. सेकेंड थिंग इज जितने डिजिट का नंबर है उतना वंस, एंड लास्ट 2 डिजिट का नंबर चाहिए था मुझे, राइट? तो एक डिजिट पे कोई भी बैठ गया, लेट्स से 1 2 3 4 बैठ गया, तो कितने डिजिट्स बचे? 4 अगर गया, so digits remaining are 1 and 2 and 3 and place remaining is only 1, so it would be 3p1. So let's solve this. This is 10 का मल्टीपल है तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, फर्स्ट ऑप्शन गया, राइट? 10 into 11 का मल्टीपल है तो ये भी ऑप्शन गया. आंसर हैज टू बी 330. लेट्स लुक एट इट. 3, या, so 330 is the answer, right? So I hope you are getting a hang of it. कुछ भी वो वेरिएशन दे दे, you should be able to tackle this. ठीक है? Now this, yeah, in this question what is the change here? अब तक के जो क्वेश्चन थे उसमें रिपीटेशन अलाउड था, नहीं था, राइट? यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है? तो सेम फंडा अगेन. सम ऑफ द डिजिट्स 1 2 5 and 6. कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 4 डिजिट का, 1 1 1 and 1 into. नाउ हियर कम्स द चेंज. 4 डिजिट का नंबर है, यहाँ पे कोई भी एक डिजिट बैठ गया, लेट्स से 6. नाउ 4p3 अगर ऐसा होता था तो क्या होता था? लेट्स से यहाँ पे 6 गया, तो यहाँ फर्स्ट प्लेस के लिए आई हैव 3 ऑप्शंस, देन आई हैव 2 ऑप्शंस, राइट? आई हैव 2 ऑप्शंस हियर, राइट? बट बिकॉज यहाँ रिपीटेशन अलाउड है तो इसलिए यहाँ पे मैं 3p3 नहीं कर सकता, राइट? बिकॉज रिपीटेशन इज अलाउड. सो एट द फर्स्ट प्लेस हाउ मेनी डिजिट्स कैन कम?
as repetition is allowed, I can't cross this 6. repetition allowed है तो ये 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पे कितने डिजिट्स अवेलेबल है? 4, सेकंड प्लेस पे भी 4 और थर्ड प्लेस पे भी 4। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 4 क्यूब। सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो ये कितना होगा? 14 into 4 times 1 into 64, whatever it is, this is the answer of this, ठीक है। सो सिर्फ एक लास्ट वाले पॉइंट में चेंज होगा, जस्ट कीप दैट इन माइंड, रिपीटेशन अलाउड हो तो। या सो जस्ट लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस, यू कैन, ठीक है। उसी टाइप का रिपीटेशन अलाउड। 1 में क्या होगा? सम ऑफ द डिजिट्स 1 + 2 + 3 + 4, आई वांट अ 4 डिजिट नंबर, 1 1 1 into अगेन द सेम लॉजिक, 4 डिजिट का नंबर था, वो पहला मैं भले ही फिक्स कर दूं, बट यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 4 डिजिट आ सकते, ये मैंने एक फिक्स किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 1 ही आएगा, राइट, बिकॉज मुझे उस पर्टिकुलर डिजिट के लिए देखने कितने बार आ सकता है। सो लास्ट इज 4 क्यूब। सो योर आंसर इज 10, ठीक है, एट द एंड 111 into 64। सो इफ यू सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी 711040। So answer of this question is 711040, right? So I hope guys you understood this, ठीक है। ये दोनों typical questions हैं जो आपको दिखेंगे कभी भी मॉक्स में वगैरह। We'll be dealing with the two concepts, that is selection of non-consecutive things, and second is a rank of a word as in dictionary. Guys, I'm very choosy in this selecting the topics and the concepts and the questions. I don't want to waste your as well as ours time solving very easy level of questions. I believe prior to 2 months before that, you must be aware with that. So I deliberately picking such a topic and such a concept which recurrently come in the mocks, and these are slightly above average level, okay. So these two topics are such category. The first is selection of non-consecutive things. So let's go to the question. So what it says, basically the selection of non-consecutive things is nothing but the application of partition theory. We have done partition theory in very much detail, right? So, and also we have done 2 to 3 applications of it. So this is another application, that is partition theory, that is distribution of identical to distinct things. So what it says, there are 12 intermediate stations between Mumbai and Nagpur. In how many ways it can be made to stop at 4 of these 12 stations such that no 2 of which are consecutive, right? So here it is Mumbai, let's say here it is Nagpur, and there are 12 stations between them. Let's say this is station 2, station 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, right? So I need to select any 4 of this station. Let's say if I select station 1, let's say this is station 2, let's say this is station 3, and let's say this is station 4, right? These are arbitrarily I selected any 4 stations. Now what it says, basically out of 12, these 4 stations are gone, right? The remaining how many stations are there at? So if you see between this station there will be some gaps. Let's say I define this gap between Mumbai and station 1 as, let's say, A, ठीक है। Between station 1 to station 2, let's say this is B. Station 2 to station 3, let's say this is C. Station 3 to station 4 is D, and station 5 is E, okay. Now see here, there is no condition that Mumbai and station 1 can't be consecutive. They can be. The condition is for this selected 4 stations, right? ये जो 4 station है, इन ये consecutive नहीं होनी चाहिए, right? So here we follow that A का lower limit 0 भी हो सकता है, as in this case, right? This Mumbai and station 1 they are consecutive, but no issues. Similarly, E can be 0, as you can see, station 4 and Nagpur they can also be 0. But gap that is B, C and D, there has to be at least 1 station between them, है ना। अगर suppose मैं B को 0 ले लिया, तो अगर B 0 हो गया तो मेरा station 1 और station 2 consecutive हो जाएगा. That is not at all possible. So this is nothing but a lower limit question which we have already done. Low limit question of the distribution of identical objects, right? So let me write here. So this 5 parameters, that is A, B, C
D and E. How many stations do I need to distribute there? Out of 12, 4 already gone, remaining are 8. Such that A has a lower limit 0, E also has a lower limit 0, whereas B and a C and a D, they have 1 each. So how many are gone? Out of it, 3 gone, that is 5. This is 6, this is 7, this is 8, this is 9. So answer of this question will be 9C5. Okay, so I hope this concept is clear. Let me repeat it once again. What it says, that you need to select 4 stations. So I selected any 4 station. This 4 will act as my partition. So the gaps created between the 4 partition will be 5, right? 1 to the left and 1 to the right. ऐसे करते करते 5 gaps बनेंगे और इस 5 gaps में मुझे remaining 8 stations arrange करने थे, such that this first and the last can have the lower limit of 0. Okay. Now let's go to the next question. ठीक है, ट्राई टू अप्लाई द सेम लॉजिक एज वी डिड. मैं एक ही टाइप के 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं सो एज टू गेट इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी. क्या दिया है उन्होंने? इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 4 कंसेक्यूटिव नॉन कंसेक्यूटिव बुक्स आउट ऑफ 10. सो 4 विल एक्ट एज योर पार्टीशंस, राइट? तो 1 2 3 4 पार्टीशंस में कितने वेरिएबल्स आएंगे? 5 आएंगे. A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E. सो आउट ऑफ 10 4 गॉन, बचे कितने? 6 मुझे इस तरह अरेंज करने हैं इन सब में, where A and E will have lower limit of 0 and B, C, D will have lower limit of 1. So let's say this is 0, this is 1, this is 1, this is 1, this is 0. कितना बचा ये? 6 में से 3 गया, this is 3, 4, 5, 6 and a 7. So this will be 7C3. If you want to solve, you can solve this. 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2. That is 6 gone. 35 will be answer of this question. Okay. Let's go to the next question. Question number 3. Now, once you get the hang of it, ना hardly a 10 to 20 second question, देखते से ही आपको बन जाएगा, right? क्या दिया है उसने? देख, how many set of 3 numbers can be found out of 1 till 20 such that no 2 consecutive numbers are in the set. Similarly, right? In the last question, 3 partitions. तो कितने variables होंगे ये? 4 variable का question है. A, B, C and D. 20 में से 3 तो मैंने already select कर लिए, right? तो अगर 3 सिलेक्ट कर लिए तो आपको अरेंज कितने करने हैं? 20 में से बचे हुए 17. एंड सच दैट दिस A as well as D, they all have lower limit of 0, whereas B, C, they have a lower limit of 1. So let's give, this is 0, this is 0, this is 1, this is 1. So remaining is 15 and this is 16, 17, 18. The answer of this question will be 18C3. Right? So I hope you are getting a hang of this question. Let's try 2 more question. उससे ही आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, अभी पढ़ते से ही आ जाना चाहिए. क्या दिया? 10 नॉन कंसेक्यूटिव बॉल्स. 10 बॉल्स मतलब कितने पार्टीशंस? 10. कितने गैप्स बनेंगे? 11. दैट इज A प्लस B प्लस C till 11th letter is your K, and 30 में से 10 gone, remaining how many is? 20. I need to distribute, right? So where A will have lower limit of 0, K will also have lower limit of 0, remaining 1 कितने को जाएगा? As these are the 11 variables, 2 को 0 गए तो remaining are 9. So 20 में से 9 गया, this will be 11. This 11 and this 10 partitions, your answer should be 10 and 11, 21C10. Okay. So answer of this question will be 21C10. Now let's look at the last question of this concept. क्या दिया उसने? Same type 10 bats I need to select out of 30, but there should be at least 2 bats between any 2 bats, right? So same thing, A plus B till K. The only difference here it will be the lower limit of A and K will be 0, no doubt about it. ठीक है, but ये जो B, C, D है इनका lower limit हो जाएगा 2, because he is asking कोई भी 2 bat के बीच, 2 जो selected bat है उनके बीच में कम से कम 2 bat आनी चाहिए. So ये 2 2 2 2 9 times, how many gone? 18, remaining is 2, and this 10 plus, so your answer should be 12C10 or 12C2. Remember, selection is always equal to rejection, right?
and you can further solve this as well. 12c2 कितना होगा? 12 into 11 by 2, that is nothing but 66 should be the answer of this question. Okay, so as I already said, this partition theory concept is very useful and very important. Please do it thoroughly, practice it. कोई भी doubt है, you can join our telegram group given in the link below, as well as you can comment also. Now let's look at the next question. The next concept is rank of a word as in dictionary. जैसे dictionary में आता है, everyone knows कि जिन्होंने भी dictionary use किया क्या होता है, letter they go alphabetically. First they will start with A and then B and so on so forth. So here it says if the letters of the word chasm, sorry if I pronounce it wrongly, are rearranged to form in 5-letter words such that none of the words are repeated, they are arranged in as in dictionary, find the rank of the word chasm. Okay, so I'll discuss the two methods. Let's do the general method first. The very first word will start with the letter A, right? So let's say if I fix A here, this can be done in only one way. Now the remaining 4 letters, that is C, H, S and M, in how many ways they can be arranged here? 4 letter, 4 word, 4 letter, 4 places, they can be arranged in 4 factorial ways. So it will be nothing but 24 here, right? Now after A, we don't have B here, so obviously the next word will start with C. Okay, okay, this can be done in only one way. After C, what will be the second letters? After C, the second letter will be A, right? So I want C, A, but I don't want C, A. So let's say C, A is fixed. So remaining, leaving C and A, what are the letters remaining is H and S and M. They can be arranged at these 3 places in 3 factorial ways. Okay, if I place C here and if I place A here, the remaining 3 letters will be arranged here in the 3 factorial ways, that is 6 ways. Okay, so again if I fix C here in one way, after A, which is the next letter which can come? It is H only. After A, we have H here. So this is one way, this is also one way. After H, which can be the letter at the third place? It would be A, right? So third letter A here, CHA. This is also I want. Okay, this is after A, this will be nothing but M and this is S. I don't want this one, so let's say plus one more. The next word will be my word, that is C, H, A will be fixed, right? MS का बाद में क्या होगा? अगर मैं इसको, it would be nothing but S and this would be M, right? This can be arranged in 2 ways and this is the second way. So 24 plus 6 plus 2, that is 32 will be the rank of the 32 will be the rank of this word. So 32 should be my answer. But this is a very tedious way, okay? Often complicated if the word is very big or if there is a repetition, right? So let us do some, there is some shortcut. Just remember that अगर ये standalone question है आया तो, ठीक है? एक simple सा technique है. Just remember this technique. What it says, ये मैं ऐसे पहले वर्ड लिख लूंगा CHA S एंड अब क्या करोगे? जो भी अल्फाबेटिकली पहले आता है वो उसको लिखोगे. सो अल्फाबेटिकली सबसे पहला लेटर कौन सा आता है? दैट इज A. उसके नीचे मैं 1 लिखता हूं. सेकेंड लेटर इज C2, देन 3, देन दिस इज 4 एंड दिस इज S इज लास्ट 5. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. तो ये फर्स्ट स्टेप ये था. नाउ एट द सेकेंड स्टेप व्हाट यू शुड डू, जैसे फर्स्ट इज 2 के राइट में कितने नंबर 2 से छोटे हैं? जस्ट काउंट दैट. सो 2 के राइट में देयर इज ओनली 1 नंबर दैट इज स्मॉलर देन 2, दैट इज 1. तो आई विल राइट इट 1 हियर. सिमिलरली 3 के राइट में कितने नंबर्स है? ऐसे 1, एक ही है. 1 के राइट में आपको राइट जाना है. 1 के राइट में देयर इज नो. 5 के राइट में यस देयर इज 4 एंड 4 के राइट में देयर इज नो नंबर. आई होप दिस इज क्लियर. ये 1 1 0 1 0 कैसे आया? नाउ व्हाट आई विल डू, I'll start writing factorial from the back. So here write 0 factorial, here write 1 factorial, here 2 factorial, 3 factorial and a 4 factorial. Now multiply them. So this will be, just multiply all of them and add them. So what will be the first case? 4 factorial into 1, nothing but 4 factorial into 1. Next will be 3 factorial into 1, then
2 factorial into 0. I'm writing here, you can directly do this. 1 factorial into 1 plus 0 factorial into 0. So what is 4 factorial into 1? That is 24. 3 factorial into 1 is 6. This will be 0 and this will be 1. This comes out to be how much? 31. Your answer will be the next word. Okay, so you need to do this plus 1 here. So this comes out to be 32. So just remember this. It's a very simple method for a simple question, a standalone question है. इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. चलो जल्दी से कुछ 2-3 क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से सचिन. ठीक है, तो वेरी फर्स्ट लेटर वी गेट इज A. सेकेंड आता है C, राइट. आफ्टर C we get is H, right, then we get is I. ठीक है, फिर आता है N and लास्ट में आता है ये, right. Now what we need to do, जस्ट राइट साइड में जाते जाते आपको सिर्फ नीचे देखना है. तो जैसे 6 से नीचे 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है, 4 भी छोटा है, 5 भी छोटा है. तो देख 5 नंबर्स हो गए. तो मैं यहाँ 5 लिखूंगा. यहाँ पे 1 से छोटा राइट में है क्या? कोई नहीं है. 2 3 4 5 सारे बड़े हैं. 2 से छोटा कोई है क्या राइट में? नहीं, 0. 3 से छोटा है क्या राइट में? कोई नहीं. 4 से छोटा है क्या? कोई नहीं. और 5 से भी नहीं, राइट. नाउ व्हाट टू डू? 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 factorial, 4 factorial and 5 factorial. Now just multiply and add them. So 5 factorial is how much? 5 factorial, remember 4 factorial हमेशा 24 होता है, 5 factorial 120 होता है. This should be rectified, yeah. 2 factorial is 720. So 5 factorial is 120 into 5, 120 into 5 and rest will always 0, right. 4 factorial into 0, anything into 0 is 0, 3 into 0 तो बाकी तो सब 0 हो जाएगा. So your answer would be 600 प्लस 1. नेक्स्ट एक ऐड करना मत भूलना इफ यू आर यूजिंग दिस मेथड. तो योर करेक्ट आंसर वुड बी 601. ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन एंड देन विल स्विच टू द जेनिथ. ठीक है, द वेरी फर्स्ट लेटर यू विल गेट इज नथिंग बट E, राइट. देन सेकेंड इज I. Just a second. Second will be H and then third will be I. Then it will be N, that is fourth. Fifth will be T and Z will be 10. Sixth, right? Yeah. So 6 के नीचे कितने हैं? फिर से वही 6 के नीचे 1 2 3 इनफैक्ट सारी है. So again 5 factorial, right? 1 के नीचे nothing. Sorry, not factorial here. Yeah. 1 के नीचे 4 के लिए कितने हैं? 2, राइट. 4 के राइट में 3 is also smaller, 2 is also smaller, तो I'll write it 2 here. 3 के यहाँ पे there is only 1, that is 5 के राइट में 1 and this is 0. Now 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial. So similarly 5 factorial into 5 is nothing but 120 into 5, right, that is 600. Then 4 factorial into 0 will be nothing but 0, right, this part. This will be how much? 3 factorial into 2, that is 6 into 2. 6 into 2, that is 12, plus 1 into 2 factorial, that is nothing but 2 only, and 1 into 1 factorial will be nothing but 1 plus 0, and your answer would be next to this. So ये कितना आया? 600 plus 15. Your answer should be plus 1 more. So correct answer of this question will be 616. Right? Now question number 9. Here what is the difference? Here in the letters of the word Ashish, here repetition is there, right? So let me take another example first and then we'll solve for this. Okay. Let me take my name only. If I want to arrange the letters of the word Nitin, okay? Yeah. So if I start, which is the first letter? The first letter according to the alphabet will be 1, that is I. इसको 1 दिया तो इसको भी 1 दो. The next comes is N. इसको 2 दिया तो इसको भी 2 दो. And next is T, that is 3. ठीक है. Now
राइट साइड में देखो 2 से छोटा कोई लेटर है क्या यहाँ पे? 2 से छोटे कितने हैं? 1 और 2, राइट? छोटा देखना है, नॉट लेस देन और इक्वल टू. आई वॉन्ट टेक 2, सो लेसर विल बी 1 ओनली, तो आई विल राइट इट 2 हियर. ऑल्सो रिपीटेशन कितना है यहाँ पे? तो n is repeated 2 times, I is repeated 2 times, right? तो I should divide it by 2 factorial and a 2 factorial. This is additional step. ठीक है? Just remember this. Now coming to I. राइट साइड में I से छोटे कितने हैं? एक भी नहीं है. I that is 1. 1 से छोटा कोई नहीं हुआ है यहाँ पे. So यहाँ लिखूंगा 0. नाउ राइट साइड जाते हो रिपीटेशन देखोगे तो आप सिर्फ I का रिपीटेशन है, n को मत लेना बिकॉज वी आर गोइंग राइट वर्ड्स. सो ओनली डिवाइडेड बाय 2 factorial, that is for 2 I's. 2 same I's can be arranged in 2 factorial. ये t से राइट 3 से ये 1 भी छोटा है, 2 भी छोटा है, so it will be 2. There are 2 numbers smaller to 3. Is there any repetition after t? No. Right? 2 words right? No. Similarly I का जो है 1 से छोटा कुछ नहीं है, 0. This will be also 0. ठीक है? So I hope this point is clear. जब भी repetition है ये चीज ध्यान रखना. फिर अब इसके बाद वाला स्टेप सेम है. 0 factorial, 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial और ये 4 factorial. Just solve this. क्या आएगा ये? 2 divided by 2 factorial is nothing but 2 only. 2 into 2 into 4 plus is 0 by 2 तो 0 ही हो जाएगा. No need to worry about this. Then 2 into 2 factorial that is 2. Then again is 0, right? So basically this is कितना? ये 2 plus 2 2s of ये 4 कट जाएगा, right? This is 4 factorial, my bad. This will be 24. So 24 by 4, this is how much? 6 the 12. ये 12 and this is 4. And your answer should be next to it. ये हमेशा +1 मत भूलना. So your answer is 17. So the rank of the word Nitin as in dictionary will be 17. ठीक है? So I hope this point is clear. Let's solve now for that question, Ashish. I'll request कि आप लोग try करो पहले. So A S H I S H. Right? Now the first letter which will be coming is H. Second will be I. Oh, I'm very sorry. Thoda. The first letter will be A, obviously. Why I have taken? Yeah. Sorry. The first letter will be A. Second will be H. Third will be I, and then this will be fourth, right? Now, 1 से right में कितने छोटे हैं? There is no small number than 1, right? Look at the repetition. Repeat क्या क्या हो रहा है? S 2 times repeat हो रहा है और H 2 times repeat हो रहा है, right? So it would be divided by 2 factorial and a 2 factorial. ठीक है? Now, second, 4 से right में कितने नंबर छोटे हैं? 2 छोटा है, 1, 2 and 3. Don't take 4. ठीक है? So कितने? 3. Repetition, this S and this H, 2 factorial, 2 factorial. Then 2 से कितना छोटा है? कोई भी छोटा नहीं है, right? It will be 0 and repetition only H is repeated, that is 2 factorial. 3 से छोटे कितने? बस एक ही नंबर छोटा है, that is 2 divided by no repetition, right? 3 से 4 से कितने नंबर छोटे? एक ही नंबर छोटा है, that is 2 and last में 2 से छोटा कोई नहीं है तो इसलिए 0. Right? Now here 0 factorial, here 1 factorial, here 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial and 5 factorial. Now just try to solve it, you'll get your answer. So what it is, ये फर्स्ट थिंग तो 0 हो जाएगी because 0 into any damn thing is 0. सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं. क्या है ये? 3 upon 4, 2 into 2, right? Into 4 factorial, that is 24 plus again ये भी 0 हो जाएगा, that is 0. Next will be nothing but 2, that is 1 into 2 and next will be 1. So 4 into 6, that is 6 3s are 18 plus this 3 and remember not to forget plus 1, so your answer should be 22 for the rank of the Ashish. So correct answer for this is 22. So I hope you got these two concepts. These are very standalone concept दोनों भी, but एक में beautiful application था partition theory का and second is the
डिक्शनरी के क्वेश्चन जिसमें यू हैव अ गुड शॉर्टकट एज दिस. जस्ट प्रैक्टिस व्हेनेवर यू गेट. The two important concepts, that is the first is the application of Fibonacci series and next is the derangement. ठीक है, both are very easy questions. You might get into your mocks and actual CATs and other exam as well. So let's start with it. So this first question, a staircase has 10 steps. You can walk up either one step at a time or a two step, and how many ways you can go up. So there are two methods. First I'll take the general method and then we'll do the shortcut of it. ठीक है. So let's first take the general way. Now, how many cases I can make? The case first can be either I can go one step. एक के मैं सारे 10 step ले लूंगा, right? 10 times if I take one का step, I will be there. In how many ways this can be done? This can be done only one way. The number of ways. Because all are same, so it can be done by only one way. Now, the second case can be if I take one step of 2. ठीक है, अगर मैंने एक step of 2 ले लिया तो I will cover 2 staircase. Remaining are 8. I will take one के 8 steps. So in how many ways this can be arranged? As there are 1 8 times and this 2, the total are 9 digits. This can be arranged 9 digits in 9 factorial ways. But 1 is repeated 8 times. So I should divide it by 8 factorial. So this will come out to be 9 into 8 factorial by 8 factorial. That is nothing but 9 ways. Now third case, if I take 2 steps of 2, कितने हो गए? ये 4 हो गए, बच्चे 6 है. So 1 1 1 I will take 6 times. So that is ये 6 और ये 2 8. 8 factorial. 2 is repeated 2 times, so I should divide it by 2 factorial. 1 is repeated 6 times, so I'll divide it by 6 factorial. ये कितना होगा? 8 into 7 into 6 factorial divided by 2 into 6 factorial. 6 6 gone, 2 1s are 2 4s are, so this should come out to be 28. What can be next case? Case 4. If I take 2 2 के 3 steps, so I'll cover 6 staircases. Remaining 4 I'll cover with 1. So arrangement ways will be nothing but this 4 1 के step and 3 के 2, so that is 7 steps can be arranged in 7 factorial. 2 repeated 3 times, 3 factorial divided by 4 factorial. So it can be written as 7 into 6 into 5 into 4 factorial divided by 3 factorial, nothing but 6 into 4 factorial. This 4 factorial will cancel out. 6 also gets cancelled out, so remaining is 35. Right? Now next, for fifth case can be if I take 2 steps, 4 step ले लेता हूँ तो 8 हो गए, 1 1 के 2. कितने वेज आएंगे इसमें? 4 और 2 6 factorial by 2 is repeated 4 times and 1 is repeated 2 times. So this can be solved as 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 2, so it will come out to be 15, right? And last case, if I take all the steps of 2, 5 step ले लूंगा, 10 staircase I'll cover. This can be done in only one way. So final answer will be, if I add all of them, that is nothing but this 1 plus 9 10 plus 28 38 plus 35 plus 15 plus this one, this will come out to be 89, and 89 is the answer of this question. Okay, so I hope you are getting the general method. Now let's solve it by the other way. Okay, obviously that will not take so much time. Now what is the other way? I need to take 2 steps and 1 step. So just let me again logically first इसको normal से ही देखते हैं. 1 step लेने के how many ways I have? That is 1 way only, right? So for 1 step I have only 1 way. This is number of ways. For 2, how many ways are there? There are 2 ways. Either I will take 2 का एक step or I will take 1 1 का एक step, right? So 2 के लिए I have 2 steps. Now 3 के लिए think how many ways are there? Either I take 1 1 के 3 steps or first step of 1 or second step of 2, or I can take first step of 2 and second step of 1. So for 3 there are 3 ways. एक और ले लेते हैं, 4 के लिए कितना होगा? ठीक है, 4 के लिए if you see
there will be 1 1 1 1, right? Or 2 1 1, right? First step of 2, and then, or this can be written as 1 2 1, or this can be taken as 1 1 2, and the last step of 2 and a 2, right? So these are the 5 steps, or the 5 ways I can take the 4 steps, right? So now if you observe the pattern, this particular pattern is known as Fibonacci series. What it does, I just need to get the first 2 terms, फिर आगे के टर्म्स मुझे उन दोनों को ऐड करते करते मिल जाएंगे, राइट? तो इफ आई ऐड 1 plus 2, what I get the next term, that is 3. If I add 2 plus 3, what I get the next term, that is 5. So obviously for 5 के लिए कितने steps होंगे बताओ? और it would be nothing but 5 plus 3, it would be 8, and I need to go till 10th step. So 7 8 9, this particular figure I want, ठीक है? So just keep on adding. So 8 plus 5, it would be nothing but 13, right? 13 plus 8, it would be nothing but 21. 21 plus 13, it would be 34. 34 plus 21, it would be 55. And last 55 plus 34, it would be 89. And that is my answer. So I hope you are getting this. So just एक इतना याद रखना इसमें कि क्विकली हम कैसे लाएंगे, ठीक है? तो जब भी 2 कंसेक्यूटिव स्टेप्स हो, जस्ट रिमेंबर दिस शॉर्टकट, ठीक है? व्हेनेवर यू गेट दिस कंसेक्यूटिव टर्म्स 1 and 2, 1 and 2 आर कंसेक्यूटिव टर्म्स, राइट? तो 1 के लिए कितने स्टेप्स होंगे? 2 to the power 0, दैट इज 1 स्टेप ओनली, राइट? यही मिला था ना हमको, 2 to the power 0, 1 स्टेप. और 2 के लिए 2 का पावर 1 2. तो जैसे ही मेरे 2 टर्म्स आ गए, आई कैन गो विद द फिबोनाची सीरीज, राइट? So if they are in the continuous step, you can directly do this, no need of doing this whole thing, ठीक है? So let's apply this thing to the next question. I'll not go with the general method. I need to go to the staircase. If I can use 1 or 2 or the 3. Can you see all 3 are in the consecutive? All 3 are consecutive. So you can directly apply the shortcut. What are the shortcut? So let's say this is 1. This is 2 and this is 3. This is the steps, right? Now number of ways कितना होगा? अभी बताया था 1 के लिए, for 1 it will be 2 to the power 0, for 2 it will be 2 to the power 1, and 3 it will be 2 to the power 2. बस. और because ये 3 steps है, तो you will keep on adding 3 at a time, ठीक है? So ये कितनी values होती है? ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 4. So I need to go against 10 steps. So 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है? This I need to find out. So if I got till 3, and this is the steps of 3 only, so 4th step will be nothing but 2 plus 1 plus 4. How much it is? So 4 के लिए there will be 7 ways. 5 के लिए कितना होगा? 2 plus 4 plus 7, that is 6 plus 7, 13 ways. 6 के लिए कितना होगा? 4 plus 7 11, 11 plus 13 is 24. Next 24 plus 20, it would be 44. Then 44 plus this 13 plus 24, this would be 81. ठीक है? Then 81 plus 44 plus 24, this has to be 149. This is the 9th step, and last your answer 149 plus 44 plus 81, it should be 274. That is the answer of this question. Okay, so I hope you are getting this point. कितना भी हो, जस्ट रिमेंबर 2 स्टेप हो तो आपको 2 के पेयर में ऐड करना है, 3 स्टेप्स हो तो 3 में, बट कंडीशन हैज टू बी, दे हैज टू बी कंसेक्यूटिव. कंसेक्यूटिव ना हो, नॉर्मल अगर मुझे दे दे, लेट्स से आई कैन टेक 1 स्टेप और 3 स्टेप, तब आपको नॉर्मल वे से करना पड़ेगा जो हमने शुरुआत में किया था, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इट सेज, हाउ मेनी वेज यू कैन यू स्टेप अप 8 staircase if you can use up to 6 steps. Up to 6 steps, that means either I can take 1 step, or I can take a step of 2, or I can take a step of 3, or I can take a step of 4 or 5, or a step of 6. So are they consecutive? Yes. So can I apply that shortcut? Yes, pretty much. और कितने के गुच्छे में ऐड करना पड़ेगा आपको? 6 में, राइट? जब 2 स्टेप्स होते थे हम 2 ऐड करते थे रिकर्सिवली, यहाँ पे 6 करना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ स्टेप्स, इफ आई राइट हियर स्टेप्स, ठीक है?
I 1 2 3 4 5 6, I want till 8, this I want, right? I know number of ways कितना होगा, no need of going with the general way, I know the shortcut for it. 1 का कितना होगा, 2 का पावर 0, 2 का पावर होगा 2 का पावर 1, 3 का होगा 2 का पावर 2, 4 का होगा 2 का पावर 3, 5 का होगा 2 का पावर 4 and 6 का होगा 2 का पावर 5. So how much it is? This is 1 plus 2, this is 4, this is 8, this is 16 and this is 32. Now for 7th, how much I need to add? All of them. So add all 6 of this, 32 plus 16 plus 14, 20. So this should come out to be 63. I got it for 7. Now the last will be add next 6 numbers. So this should be my answer. 63 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2. This comes out to be 125. So 125 is the correct answer of this question. Okay. So I hope you got this angle, guys, how to use the Fibonacci series and this shortcut. ठीक है? So कुछ भी इसमें doubt हो, you can ask, you can join our Telegram group as well. ठीक है? Next, let's look at the next concept, that is dearrangement. Up till now we have done arrangement. ठीक है? अब तक हमने जोड़ने का काम किया था. अभी इसमें थोड़ा तोड़ने का काम करते हैं. ठीक है? What is the dearrangement means? Let's take a case of key and a lock. Let's say I have a 3 pairs of key and a lock. 3 pairs mean 3. कितने तरीके से अरेंज होंगे ये फिर? 3 factorial, that is 6 ways, right? If I have 3 keys and 3 locks, that is n people, n places, they can be arranged in how many ways? 3 factorial. So let me write the cases first. Okay, let's say, just give me a moment, I'll write it. Okay, let's say this is lock 1, lock 2, lock 3. These are the ठीक है, दिस 3 केस हो गए. जस्ट लेट मी राइट 3 केस मोर सो यू विल गेट द बेटर क्लैरिटी कि व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एग्जैक्टली इन दिस कंसेप्ट. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे क्या क्या केसेस हो सकते हैं? 6 केसेस है. नाउ एक केस हो सकती है कि सब लॉग अपने अपने की में, सबके अपने अपने लॉक में जा रेस्पेक्टिवली, तो लाइक दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ऑल करेक्ट पेयर्स. यहाँ पे हो सकता है कि ये सिर्फ एक पहला पेयर करेक्ट हो, बाकी ये दोनों पेयर गलत हो जाए, राइट? K2 चले जाए L3 में और K3 चले जाए L2 में. या फिर सेकेंड वाला पेयर सही हो, फर्स्ट एंड थर्ड गलत हो जाए. या फिर थर्ड सही हो, फर्स्ट एंड सेकेंड गलत हो जाए. बट आर दिस कंप्लीट डी अरेंजमेंट? नो, बिकॉज हमको यहाँ पे एक पेयर सही तो मिला है. बट इफ आई से ये K2 जाता है L1 में और K3 जाता है L2 में और K1 जाता है L3 में और K3 जाता है L3 जाता है K2 एंड दिस इज लाइक दिस. दिस टू आर द कंप्लीट डी अरेंजमेंट सेट, राइट? यहाँ पे कोई भी की किसी भी अपने रेस्पेक्टिव लॉक्स में नहीं गई है, राइट? तो यहाँ पे कितना हो गया? 3 पेयर्स के लिए आई हैव 2 केसेस ऑफ डी अरेंजमेंट. क्लियर? नाउ हियर इज अ फॉर्मूला. सो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, फॉर्मूला भी और लॉजिक भी बताता हूं आपको. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? द नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट. ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डी अरेंजमेंट. व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज? यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला. n फैक्टोरियल ब्रैकेट 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल. अल्टरनेटिव साइन प्लस माइनस देते जाना है एंड लास्ट में 1/n फैक्टोरियल. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. सपोज मेरा n 3 था, तो अगर 3 था तो क्या होता था मेरा वैल्यू? जैसे अभी हमने 2 पूरा डायग्राम बना के निकाला, ऑब्वियसली विल नॉट डू दैट इन एग्जाम. सो दैट 3 के लिए इट वुड बी 3 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल minus 1/3 factorial. If you solve this, that is nothing but 6. 1/2 minus 1/6, basically it would be nothing but 6 into, इसको into 2 3 कर दो because LCM should be same. 3 minus 1, it would be 2/6. So final it will be 2, right? We got that only value. So this is a formula for dearrangement. ठीक है, अभी suppose if I say
देयर इज अ पैटर्न एज वेल, अगर आपको फॉर्मूला नहीं करना है पैटर्न से भी ला सकते हो. लेट्स से देयर आर 5 पेयर्स ऑफ कीज एंड अ लॉक्स. ठीक है, अगेन आई विल टेक द सेम थिंग, कीज एंड लॉक्स. So if I give some questions, let's say first question, in how many ways can all be correct, all correct. ठीक है, मुझे सारे पेयर्स करेक्ट लगाने. या सेकेंड 4 आर करेक्ट, 4 पेयर्स आर करेक्ट. ठीक है, 4 पेयर्स करेक्ट, या फिर 3 पेयर्स आर करेक्ट, राइट, और 2 पेयर्स आर करेक्ट, एनीथिंग, राइट. So let's check the first case. All correct का कितना पॉसिबिलिटी होगा? There is only one way, right? कि सब रिस्पेक्टिव कीज अपने अपने रिस्पेक्टिव लॉक्स में जाए, राइट. सो टू मेक इट ऑल करेक्ट there is only one way, इसमें कुछ नहीं है. Now second 4 पेयर्स आर करेक्ट. अब यहाँ पे थोड़ा सोचो, अगर मेरे पास 5 पेयर्स है, अगर मेरे 4 पेयर बराबर लग गए तो जो बचा हुआ एक पेयर की और लॉक है वो ऑब्वियसली पेयर होगा, बिकॉज उसके पहले जो चारों पेयर थे वो अपने अपने चले गए, राइट. सो 4 पेयर करेक्ट, दिस कैन नेवर बी पॉसिबल, नेवर पॉसिबल, राइट, बिकॉज व्हाट इट मीन्स 4 करेक्ट पेयर करेक्ट हो तो एक पेयर इनकरेक्ट होना चाहिए. वो कैसे होगा? जो एक बचा है एक की और लॉक वो उसी का है, बिकॉज उसके पहले के 4 सब अपने अपने पेयर लग चुके, राइट. सो 4 पेयर करेक्ट कभी पॉसिबल नहीं होगा. अब जब मैं 3 करेक्ट की बात करता हूं, सो 3 करेक्ट, दैट मीन्स 3 करेक्ट होनी चाहिए एंड 2 इनकरेक्ट होने चाहिए, राइट. दैट मीन्स मुझे 2 को डीअरेंज करना है. एम आई क्लियर? सो ये 3 को करेक्ट करना है, दैट मीन्स आई नीड टू अरेंज दिस, एंड 3 को इनकरेक्ट करना है, 2 को इनकरेक्ट करना है, दैट मीन्स आई वांट टू डीअरेंज दिस. अब इसको कैसे करोगे आप? सिंपल है, राइट. पहले ये करेक्ट वाला हम कर लेते हैं, जिनको अरेंज करना है. 5 में से जो 3 करेक्ट करना है उनको पहले सिलेक्ट कर लो, वो वाले 3 पेयर कौन से होंगे. सो 5 C 3. अब उनको अरेंज करने का एक ही तरीका है, जो भी की और लॉक है वो अपने अपने की और लॉक में जाए. ठीक है, सो ये जो केस था, दिस केस इज ऑफ अरेंजमेंट. अब जो बचे 2 पेयर को इनकरेक्ट करने का एक ही तरीका है, की 1 लॉक 1, की 2 लॉक 2. इसको डीअरेंज अगर मुझे करना है, देयर इज ओनली वन वे, दैट इज की 1 जाएगा L2 में, L1 जाएगा की 2 में. यू कैन ऑल्सो गेट इट बाय फॉर्मूला. व्हाट वाज द फॉर्मूला? 2 फैक्टोरियल, एक ही वैल्यू है तो ये 1/2 फैक्टोरियल हो जाएगा. 2 कट के देयर इज ओनली वन वे, राइट. सो डीअरेंज करने का फॉर दैट इज D2, दैट इज ओनली वन वे. दिस वन इज फॉर D2, that is dearrangement of the 2 pairs, right. Now let's take one more example. If I want to make 2 correct, मुझे 2 पेयर्स को करेक्ट करना है और 3 को इनकरेक्ट करना है. ठीक है, तो कैसे होगा ये? 2 का करेक्ट और 3 का इनकरेक्ट. फर्स्ट सेलेक्ट 2 पेयर जिसको मुझे करेक्ट करना है, तो वो होगा 5 C 2. वो जो 2 सिलेक्टेड पेयर है उसको अरेंज करने का एक ही तरीका है, दैट इज वन वे. दिस इज ऑफ अरेंजमेंट. अब डी अरेंजमेंट, 3 लोगों का डी अरेंजमेंट हमने निकाला था, राइट, विद द फॉर्मूला. कितना आया था वो? D3 आया था मेरा 6 वैल्यू. अगर नहीं भी याद हो, डोंट वरी, मैं एक पैटर्न भी बताता हूं इसके बाद, उससे याद हो जाएगा. सो D3 का वैल्यू आता है 3 पेयर को D3 का मेरा 2 वैल्यू आया था, आई एम सॉरी, D3 का मेरा 2 आया था, राइट. डी अरेंजमेंट ऑफ 3 पीपल, टोटल वेयर द 6 केसेस, उसमें से 2 केसेस ऐसे थे जो डी अरेंज थे. सो इसका फाइनल आंसर होगा 5C2 into 2, राइट. नाउ लेट्स लुक एट द पैटर्न अगेन. एक तो तरीका है ये फॉर्मूला निकालना, राइट. DN का मैंने बताया था क्या फॉर्मूला है. डी अरेंजमेंट ऑफ n पीपल इज n फैक्टोरियल, अगेन आई एम राइटिंग इट 1/2 फैक्टोरियल minus 1/3 factorial plus 1/4 factorial and so on so forth till 1/n factorial. You need to do it. ठीक है, बट अगर आपको फॉर्मूले से नहीं करना है, there is a pattern. What is that pattern? Suppose एक पेयर को आप डीअरेंज कर सकते हो. नो, राइट, एक पेयर को डीअरेंज नहीं किया जा सकता. एक ही पेयर है उसको क्या डीअरेंज करोगे, राइट. 2 पेयर हो तो देयर इज ओनली वन वे ऑफ डीअरेंजमेंट, दैट इज अ क्रॉस, राइट. अब यहां से आप एक पैटर्न नोट करो. ठीक है, आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर. D3, D4, ठीक है, D5, D6 तक इनफैक्ट वैल्यूज लर्न ही कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा. D6 एंड लेट्स टेक D7 एज वेल. ठीक है, सो व्हाट इज द पैटर्न?
D3 का मुझे वैल्यू पता था 2 आया था, राइट? कैसा आएगा वो? 0 plus 1. What is 0 plus 1? It is 1. Now 1 into 2. This is 1 into 2. So 0 plus 1, that is 1. I'm writing it here, 0 plus 1, ठीक है, into 2. ठीक है, don't use board mask. यहाँ पे मैं पहले 0 plus 1 करूंगा और फिर इसको into 2 करूंगा. So next I'll get as 2. Now next will be what? 2 plus 1. What is 2 plus 1? 3. 3 into 3. ये into होगा. 3 into 3, this is 9. Right? Next will be what? If you want, you can solve it by here. आपको 9 ही आएगा. Let's say अगर आपको दिखना है तो D4 मुझे चाहिए था, right? This will be 4 factorial. It was 1 by 2 minus 1 by 6 plus 1 by 24 होगा, right? So if you solve this, this comes out to be 9, right? So D4 is 9. What will be D5 then? D5 होगा 2 plus 9. What is 2 plus 9? 11. 11 into 4. इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 44 and so on so forth. Similarly, if you want to use the next, you can go ahead like this. Okay. Now, so let me go to the next, solve the questions now. Question number 6. What it says? There are 4 men A, B, C, D. Each has a son. The 4 sons are asked to enter a dark room. So we enter the dark room, and each of them walks out with just one child, and none of them comes with the own son. So ये जो line है, what it says, I need to dearrange them. Right? Dearrange करना है completely. तो basically what is asking nothing but D4. अभी हमने D4 देखा था. D4 का वैल्यू राइट क्या था? एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ. D1 का था 0 अरेंज करने का. 2 कपल को डीअरेंज करने का एक ही तरीका है. D3 कितना आया था? There is a pattern as I said. 0 plus 1. This is into 1 into 2, this is 2, and D4 which is asking 1 plus 2, that is 3, and this 3 into 3, that is 9. So 9 has to be answer of this particular question. ठीक है? You can also use the formula. Yeah. Next question. It's a very simple concept, but छोड़ना नहीं है. Okay. अब ये क्या है? In how many ways you can put up 7 letters into the respective envelope such that exactly 3 go into the right envelope. What is saying? Out of 7, 3 into right. That means I need to do 3 correct and 4 incorrect, right? 3 correct and 4 incorrect. So पहला काम तो ये करो, जो 3 करेक्ट ढूंढने उनको ढूंढ लो, जो 3 करेक्ट करने. कैसे आप सिलेक्ट करोगे? 7 में से 3 सिलेक्ट करना है. 7 C3. अरेंज करने का एक ही तरीका है, जो अपना एनवेलप है उसी लेटर में जाएगा, राइट? जो सो दैट इज ओनली वन वे. ये क्या हो गया? ये मैंने करेक्ट किया, दैट इज अरेंज्ड देम. अभी जो मुझे करना है, डी अरेंज करना है. कितनों को डी अरेंज करना है? आई नीड टू डी अरेंज हाउ मेनी पेयर्स? 3 हो गए, 4. D4. ये जो D4 का तो वैल्यू लर्न ही अभी जस्ट निकाला था. लास्ट लाइन में कितना था? 9. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस इज 7C3 into 9. यू कैन सॉल्व इट फर्दर. 7 into 6 into 5 divided by 3 into 2 into 9. So that is 35 into 9 is the answer. Right? So please remember this, a very easy concept. You can remember it, right? So next thing, question number 8. What it says? In how many ways you can call letters of the word rainbow be written here? Spelled disagrees completely with the rainbow. That means I need to completely dearrange this rainbow, right? That is R cannot go at the first place. R first पे छोड़ के कहीं भी जा सकता है. I cannot go at the third place, वो कहीं भी जा सकता है. तो टेक्निकली कितने लेटर का वर्ड है ये? 1 2 3 4 5 6 7. I need to calculate D7, right? So I am leaving this question as homework to you. मैंने इसका पैटर्न भी बताया, फॉर्मूला भी बताया. लेट्स से मैं इसका आंसर भी दे देता हूँ. इसका आंसर आता है 1854. प्लीज सॉल्व इट. ठीक है? अगर किसी को डाउट है पैटर्न में तो एक बार प्लीज वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, राइट? पिजन होल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. I'll try to go from as small and as basic examples as possible because this is very favorite of cat and mock cat setters. आपको दिखेंगे ये क्वेश्चंस पक्का. ठीक है? So what is the pigeon hole principle?
this is a theorem. What it is states that if k plus 1 or more objects are there into k boxes, then there is at least one box containing 2 or more of the objects, right? Suppose if I give the example, ठीक है, जैसे एक दो में लॉ एग्जांपल देता हूँ, that let's say there are classes from Monday to Friday, ठीक है, तो कितने दिन हुए ये? Monday to Friday there are 5 days, right? So if I say in this 5 days I arrange 6 classes, right? So I can say at least एक दिन होगा जहां पे 2 क्लासेस होंगे. There will be at least one day, because अगर मैं रोज एक क्लास भी लेने की कोशिश करूं तब भी मुझे एक क्लास किसी एक दिन तो रिपीट करना पड़ेगा, राइट? और सपोज इफ आई से देयर आर 368 people, just an example, ठीक है, मुझे ये चाहिए कम से कम ऐसे कितने लोग हैं जिनका बर्थडे सेम दिन आता है. आई वॉन्ट कम से कम, लीस्ट आई वॉन्ट. सो जब मुझे लीस्ट चीज में क्या करूंगा, सबका बर्थडे डिफरेंट रखने की कोशिश करूंगा, राइट? What is the maximum number of days possible? Even if I consider a leap year, there are only 366 days. So अगर मैंने सबके अलग अलग भी बर्थडेज रखे, फिर भी एटलीस्ट 2 people will be there, right? 2 extra people होंगे. In fact, at least 3 people will be there who will be sharing same birth date, right? So that is what it says. ठीक है, तो जब भी pigeon hole principle आए तो हमको worst scenario में देखते जाना है, ठीक है, worst possible cases. So this is what it is like. These are 3 holes, but there are 4 pigeons. तो एटलीस्ट एक होल तो होगा जहां पे pigeon रिपीट होंगे, एटलीस्ट 2 और more than 2, right? Now let's take an example. I'll start with a very basic example. Just pay attention, and then I'll gradually take up the past cat question and mock cat questions. So let's say this is question number 1. A box contains 5 pairs of white socks and 5 pairs of black socks, right? Pairs है मतलब कितने होंगे, 10 होंगे. एंड सॉक्स में देयर इज नो लेफ्ट एंड राइट जनरली, ठीक है, तो सॉक्स में कुछ पेयरिंग वैसा लेफ्ट राइट का नहीं होता है. हाउ मेनी सॉक्स मस्ट बी एंश्योर्ड टू पिक अप अ मैच पेयर? मैच पेयर मींस एक तो ब्लैक आना चाहिए या व्हाइट आना चाहिए. क्या क्या हो सकता है? गो विद द वेरी बेसिक एग्जांपल. लेट्स से केस 1, राइट? मैंने फर्स्ट सॉक्स निकाला, वो भी व्हाइट आया. सेकेंड सॉक्स निकाला, वो भी व्हाइट आया. सो इज दिस अ बेस्ट सिनारियो or a worst scenario? It is a best scenario, right? But I don't want a best scenario, I want a worst scenario, because ensure करना, ये तो lucky case था ना. Same case में दोनों black भी आ सकता है, but this is a lucky case type. So what I say कि let's say क्या हो सकता है कि let's say first वाला मैंने white pick up किया, because I don't want a match pair, ठीक है, इसके against जाना है, तो second has to be black, राइट? अभी अब थर्ड सॉक्स ले लो, कोई भी हो, इधर इट कैन बी व्हाइट और अ ब्लैक. अब कुछ भी हो जाए, यहाँ पे आपका पेयर तो बन जाएगा ना, व्हाइट हो तो व्हाइट से पेयर बन जाएगा, ब्लैक हो तो ब्लैक से पेयर बन जाएगा. तो दो पेयर विच इज द नंबर ऑफ सॉक्स विच मस्ट बी टेकन आउट टू एंश्योर अ पेयर इज 3, ठीक है. दिस इज माई वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो. तो नेवर टेक इन पिजन होल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, नेवर टेक बेस्ट सिनारियोस टाइप, ठीक है. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3 एंड पे अटेंशन टू द क्वेश्चन. यहाँ पे सिर्फ मुझे पेयर बनाना था, कोई कलर से कुछ इश्यू नहीं था यहाँ पे, ठीक है. नाउ लेट्स टेक द सेकंड क्वेश्चन. द सेकंड सेम चीज है, 5 pairs of white socks and black socks. यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 1 socks of each color, राइट? तो एटलीस्ट एक सॉक ईच कलर का चाहिए, राइट? सो व्हाट आई कैन डू, फिर से भाई, अब मुझे यहाँ पे कंडीशन किस पे है? My condition is on color. How many socks must be picked to ensure that there is at least one sock of each color? मतलब यहाँ पे 2 कलर्स है ना. So इसका हमको क्या सोचना है? worst possible condition. Let's say आपने फर्स्ट सॉक्स निकाला, let's say white है, सेकेंड निकाला, वो भी व्हाइट निकल रहा है, थर्ड निकल रहा है, वो भी व्हाइट निकल. तो ऐसे कितने व्हाइट पॉसिबल है? 5 pairs, so there are 10 व्हाइट, राइट? और फॉर दैट मैटर 10 ब्लैक भी हो सकते हैं. तो जो इनिशियल के है 10, एक तो सारे के सारे आपके व्हाइट निकल रहे या फिर सारे के सारे ब्लैक निकल रहे, राइट? बट व्हाट ही वांट्स एटलीस्ट 1 ऑफ ईच. तो अगर आपके व्हाइट निकले तो अभी व्हाइट यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए. जो नेक्स्ट आप निकालोगे बॉक्स में से, वो श्योर है कि दैट वुड बी ब्लैक.
तो यहाँ पे आपकी कंडीशन मीट हो जाएगी, यू गॉट एटलीस्ट वन ऑफ ईच कलर। और इन दिस केस अगर ब्लैक है 10, तो यहाँ पे 10 ब्लैक एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड नेक्स्ट फॉर श्योर विल बी व्हाइट, तो यहाँ पे व्हाइट आ जाएगा। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 11। Now question number 3. It's a sort of same question. 5 pairs of white socks, 5 pairs of black socks. How many socks must be picked up to ensure there are at least 3 socks of each color, right? तो similar है पिछले जैसा ही है, आपको हर कलर के 3 चाहिए एटलीस्ट। तो इनिशियली 10 जो है, एक तो सारे आपके व्हाइट आएंगे या सारे 10 आपके ब्लैक होंगे। नाउ व्हाट यू वांट, 10 लेट्स से ये फर्स्ट केस 1 में सारे 10 व्हाइट आ गया, व्हाइट एग्जॉस्ट हो गया आपके बॉक्स में से, द रिमेनिंग आर ब्लैक ओनली, जो बॉक्स में बचे, राइट। सो अगले 3 अगर श्योर है कि ब्लैक ही आएंगे, राइट, तो हियर इट वुड बी व्हाइट एंड ब्लैक के 3-3, और अगर ब्लैक निकल रहे तो ब्लैक एग्जॉस्ट हो जाएंगे, जो अभी नेक्स्ट 3 आएंगे वो व्हाइट आएंगे, राइट। सो इन दिस केस 13 वुड बी माई आंसर। ठीक है, so just pay attention to the language what it is asking. I'm just giving the variations to it. 4, 5 pairs of white socks again. Now he's saying there is at least 1 pair of each color. What is saying? 1 pair of each color. What is a pair? Pair means at least 2 socks, right? So same logic, मैं पहले फिर से कलर पे कंडीशन है। सो मैं पहले 10 सारे ले लेता हूँ लेट्स से व्हाइट के, तो ऑब्वियसली मैंने 10 के व्हाइट लिए, तो आई गॉट 2 ऑफ द व्हाइट। नाउ माय इंटेंशन इज टू गेट 2 ऑफ द ब्लैक। और अगर मेरे सारे 10 ब्लैक आए तो 10 में तो ऑब्वियसली 2 तो ब्लैक के मिल गए। नाउ माय इंटेंशन विल बी टू गेट 2 व्हाइट। अगर 10 मेरे व्हाइट हो गए तो ऑब्वियसली व्हाइट आर एग्जॉस्टेड, ब्लैक में से मैं 2 ब्लैक निकाल लूंगा। सो दिस हियर आई विल गेट अ पेयर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 12. Okay, pretty much basic question. Then I'll connect it to the tougher one. Now the 5 white pair of now here what is the change? Here it is shoes. Now shoes, in shoes please remember there is a left and a right. shoes में left right एक नहीं होता, दोनों left पैर के shoes से आपका कोई purpose solve नहीं होगा, right? socks में it doesn't matter, ठीक है। शूज में बट इट डज मैटर कि ये शूज लेफ्ट का है या राइट का है, तो जस्ट पे अटेंशन हियर व्हाट इज सेइंग। यहां तो मैच पेयर ही है बस। सो व्हाट इज अ मैच पेयर? अब यहां पे किस पे कंडीशन है? पेयर। पेयर मींस व्हाट? लेफ्ट एंड राइट। तो यहां पे आपको क्या सोचना है भी? वर्स कंडीशन। तो यहां पे जो कंडीशन है आप कलर पे नहीं लगाओगे, पेयर पे लगाओगे, इनफैक्ट लेफ्ट और राइट। तो सपोज आपने पहला जूता निकाला, लेट्स से दैट इज व्हाइट, बट दैट व्हाइट इज ऑफ लेफ्ट लेग। आपने सेकंड शूज निकाला, लेट इट बी व्हाइट और लेट इट बी ब्लैक, बट वो भी लेफ्ट लेग का ही है, विल इट बी अ पेयर? नो। तो यहाँ पे जो आप पेयर्स बनाओगे इट इज विल बी बेस्ड ऑन द लेग्स। तो अगर मैं पहले 10 जूते लेता हूं, अभी ये जो 5 पेयर्स है इसमें मेरे पास 5 व्हाइट लेग लेफ्ट पैर के होंगे, 5 व्हाइट राइट पैर के होंगे, राइट। सिमिलरली इन ब्लैक में भी 5 लेफ्ट होंगे, 5 ब्लैक होंगे, राइट होंगे, ठीक है। सो ये जो मेरे इनिशियल के 10 शूज है, ये लेट से मैं सारे के सारे निकाल रहा हूं और सारे मेरे लेट से लेफ्ट पैर के ही निकल रहे हैं। इज इट अ पेयर? नो, बिकॉज सारे लेफ्ट पैर के कोई काम के नहीं है। हाँ, इसमें से 5 होंगे व्हाइट, 5 होंगे ब्लैक, बट इट डजंट मैटर बिकॉज कलर पे तो कंडीशन है ही नहीं। अब इसके बाद आप कोई भी जूता निकालो, कलर कोई भी हो, राइट, बट लेफ्ट के तो सारे एग्जॉस्ट हो गए। ये मेरे 5 वाले लेफ्ट, दिस हैज गॉन एंड दिस इज ऑल्सो गॉन, राइट। अब जो भी मैं अगला शूज निकालूंगा, एक तो वो ये राइट ही निकलेगा, इधर व्हाइट या ब्लैक, उन दोनों का मेरे पास पेयर है, राइट। सो जैसे ही मैं एक शूज निकालूंगा माय पेयर विल बी कंप्लीट। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 11, राइट। आई होप यू आर गेटिंग अ हैंग ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कंडीशन लेग्स पे थी, कलर पे नहीं थी। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज सेइंग? सिमिलर सॉर्ट ऑफ है, 5 पेयर ऑफ व्हाइट शूज, black shoes. How many shoes should be picked up to ensure that there is at least 1 shoe of each color? Now see here is the condition on the color. So अब यहाँ पे मैं कलर पे देखूंगा, राइट। सो एटलीस्ट एक चाहिए, अब कोई भी एक ले लो। लेट्स से मैंने 10 निकाले, मेरा पहला भी निकला व्हाइट, सेकंड भी निकला व्हाइट, ऐसे मेरे पास कितने व्हाइट अवेलेबल है, राइट। आई हैव 10 शूज अवेलेबल, राइट। सो 10 व्हाइट निकले, तो ऑब्वियसली ये कुछ लेफ्ट पैर के होंगे, कुछ मीन्स एग्जैक्टली 5 ये राइट पैर के होंगे, ठीक है, बट दैट डजंट मैटर, माय कंडीशन इज ऑन द कलर।
राइट? सो ऑब्वियसली जैसे ही मेरे 10 सारे व्हाइट एग्जॉस्ट हो गए, जो नेक्स्ट होगा it would surely be a black and I will get a one of each color. So answer of this question will be 11. These are all pretty basic questions. किसी में भी डाउट हो तो just pause and revise, you will get hang of it. ठीक है, now this is the last question on this type. 5 shoes white, 5 shoes black. He needs to find at least again 3 shoes of each color. ठीक है, फिर से भाई कलर पे कंडीशन है. सो 10 के 10 सारे पहले लेट से व्हाइट निकाल लो और ब्लैक वॉट एवर निकलेंगे. लेट से व्हाइट सारे एग्जॉस्ट हो गए, जो अब 3 बचेंगे ऑब्वियसली वो तीनों सारे ब्लैक आएंगे, और अगर ब्लैक निकले तो सारे बचे हुए 3 व्हाइट आएंगे, राइट? सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 30. Okay, so these are the pretty basic examples pertaining to pigeonhole principle. Now let's see the actual questions or the application of this. ठीक है? Now question number 8. What it says, there are 34 consecutive natural numbers that is starting from 1. 18 numbers are to be selected such that there always exist 2 numbers जिनका सम हमेशा s आएगा, आपको वो s निकालना है. So before going to such a big number, let's take some small number पे एक बार खेल के देखते हैं. ठीक है, मैं 2 केसेस ले रहा हूं. लेट्स से 1 2 3. मैं 6 नंबर लिख रहा हूं, 6 नेचुरल नंबर, बट इन दिस मैनर. ठीक है, और एक और केस लेता हूं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, नाउ पे अटेंशन है. ये जो फर्स्ट केस है, जो इक्विडिस्टेंट पेयर है, इक्विडिस्टेंट मीन जो फर्स्ट एंड द लास्ट, राइट? इफ आई राइट इट लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट एंड लास्ट का सम हमेशा कितना आएगा? द सम विल ऑलवेज बी 7. इन दिस केस सेकंड एंड सेकंड लास्ट का भी 7 आएगा, थर्ड एंड थर्ड लास्ट का भी हमेशा 7 आएगा, राइट? सो मुझे बताओ, अगर मैं कभी भी कोई भी 2 नंबर पिक करूं तो सम 7 आना पॉसिबल है क्या? That can happen अगर 1 और 6, but that is what I want is always, कोई भी मैं नंबर कहीं से भी 2 उठाऊं हमेशा 7 आएगा, जरूरी है क्या? 1 और 6 उठाऊं तो टिपिकल एक लक वाली केस होगी, राइट? दैट इज अ बेस्ट सिनेरियो. बट आई वांट 100% श्योरिटी वाला केस कि मैं आंख बंद करके भी 2 नंबर पिक करूं, मेरा सम 7 आना चाहिए. वो कब होगा? तो वो कब होगा जब मैं मिनिमम, देखो यहाँ पे ये 1 का पेयर 6 से होता है, राइट? ये 3 नंबर्स में से आप कोई भी 2 उठा लो, जरूरी नहीं है, राइट? सो आपको मिनिमम नंबर उठाने पड़ेंगे 4, क्योंकि 1 2 3 हो गया. अब जैसे ही 3 नंबर हो गया, चौथा नंबर आप इस सेकंड वाले रो से उठाओगे. आप इस सेकंड वाले रो से कोई भी नंबर उठाओ, उसका पेयर तो बन जाएगा ना. जैसे मैंने सपोज लिया 5 7 बनाने के लिए किससे पेयर बना देगा? 2, विच इज अवेलेबल टू अस, राइट? और इफ आई लेट्स से पिक अप 4, वो किससे बना लेगा पेयर? 3 से बना लेगा, राइट? So minimum numbers to be picked up to ensure a sum of 7 in this case is 4. क्लियर है? कोई भी 3, लेट से मैंने 6 5 4 ये 3 उठाया तो चौथा इस रो से मैं कुछ उठा लूंगा. नाउ लुक एट द सेकेंड वाला केस हियर. इन दिस व्हाट इज इक्विडिस्टेंट का सम? यहाँ पे सम है 8. तो मेरा क्वेश्चन है मिनिमम आपको कितने नंबर्स उठाने पड़ेंगे टू मेक श्योर अ सम ऑफ 8? ऑब्वियसली लेकिन पहले 3 से नहीं होगा. क्या पहले 4 से होगा? नहीं. अगर मैं पहले 4 नंबर उठाता हूं, ठीक है, सो ये हो सकता है 4 और 3 7 हो जाए. 4 किसी के साथ भी 8 नहीं बना रहा है, राइट? या सिमिलरली 3. बट जैसे ही आप इस रो में चले जाए, 4 के बाद 5वां नंबर आप कोई भी उठा लो. लेट्स से मैंने 6 उठाया, 6 किससे 8 बना देगा? 6 8 बना देगा 2 से मिलके, राइट? या 5 किससे 8 बना देगा? 5 बनाएगा 3 से मिलके. तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम नंबर पिक करने पड़ेंगे, ये 4 और एक 5वां, ठीक है? तब जाके आपका सम हमेशा 8 आएगा, राइट? सो दिस क्वेश्चन इज प्योर एप्लीकेशन ऑफ दिस स्मॉल कंसेप्ट. सो लेट्स सी व्हाट इट सेज. देयर आर 34 consecutive natural number. तो लेट मी राइट इट 1 2 3 till this much 17 18 and so on so forth. This is 34, this is 33, this is 32. अब मुझे हमेशा एक सम चाहिए, तो वो सम वाला कौन सा फंडा है? मैंने जो कहा था अभी, इक्विडिस्टेंट, राइट? कौन सा सम है? 1 + 35. वो कब होगा? उसने 18 नंबर्स पिक किए, है ना? अगर मैं 17 नंबर्स पिक करूं तो क्या सम 18 आना पॉसिबल है? लकी एक केस में आएगा, बट इज एवरी टाइम पॉसिबल? मैं 17 और 1 18 पॉसिबल है, राइट?
बट एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि श्योर है मिलेगा ही मिलेगा। बट मैं जैसे ही सेकेंड रो में चले जाता हूँ 17 प्लस एक नंबर में यहां से कहीं से भी उठा लूंगा, राइट? सो आई विल गेट व्हाट इज द इक्विडिस्टेंट सम हियर, 1 and 34 दैट इज 35, 2 and 33 35। सो एज सुन एज गो टू द 18 नंबर, कोई भी नंबर हो, लेट्स से मैंने 32 पिक किया, 32 किससे ऐड होके उस पेयर बनेगा, एक्सट्रीम वाला बताओ, 32 बनेगा 3 के साथ, आई विल गेट अ सम एज 35। अब कोई भी नंबर पिक करो, मेरा 18 बन जाएगा सम 17 के साथ। अगर मैं यहाँ पे 20 पिक करता था, एग्जांपल 18th नंबर, ये 17 नंबर तो ये तो उठा नहीं और मैं 18 नंबर ये उठाता हूँ, सो 20 15 के साथ हो जाएगा, राइट? सो एज सुन एज यू गो टू द 18 नंबर्स, राइट, दिस विल मेक श्योर दैट यू ऑलवेज गेट, कोई भी नंबर हो, यू ऑलवेज गेट इक्विडिस्टेंट वाला सम। एंड व्हाट इज दैट इक्विडिस्टेंट वाला सम? दैट इज नथिंग बट 35। सो दैट सम इज 35 व्हाट इज आस्किंग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 35। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट कंसेप्ट है ये, बट एक बार प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? Now similar sort of question, what is the minimum? जब भी ऐसा minimum बोले क्वेश्चन में, always think of the worst scenario, ठीक है? Selected from first 100 natural numbers such that one ensure that 4 of the natural number, मुझे 4 नंबर उठाने, adds up to 102. So 100 natural number, let me write it, 1 2 3, it would be till ये 50, 51, ये 100, 99। अब अगर आपको ये ट्रिक पता हो तो हार्डली कितने देर का क्वेश्चन है बताओ जल्दी मुझे। इक्विडिस्टेंट पेयर का सम क्या आता है? इफ यू सी, इक्विडिस्टेंट एक पेयर का सम आता है, इक्विडिस्टेंट पेयर सम आएगा 100 प्लस 1 101, ठीक है? और मिनिमम नंबर्स कितने इंश्योर करने पड़ेंगे टू गेट 101? इट इज नथिंग बट एक तो ये पूरा मुझे उठाना ही पड़ेगा 50 का, राइट? प्लस एक और कोई, राइट? सो 50 प्लस 1, राइट? सो आई विल गेट 101। कुछ भी मैं नंबर कोई भी उठा लो, अगर 51 उठाता हूँ 50 से बना लेगा 101, 99 उठाता हूँ तो 2 से बना लेगा वो। बट आई डोंट वांट 101, व्हाट आई वांट सम इज 202 व्हिच इज डबल ऑफ 101, राइट? सो टेक्निकली आई नीड 2 इक्विडिस्टेंट पेयर, राइट? 2 इक्विडिस्टेंट पेयर मींस मुझे 2 पेयर्स बनाने हैं। तो अब मैंने जब ये +1 लिया था 50 तो ठीक है, +1 से मेरा सिर्फ एक ही पेयर एक्स्ट्रा बना था, राइट? जैसे 19 लिया तो एक और मुझे नंबर उठाना पड़ेगा यहां से कोई टू गेट अ 1 एडिशनल पेयर, राइट? सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 52। इफ यू पिक अ 52 नंबर, व्हाटएवर यू डू, कहीं से भी आप वो उठाओ, राइट, यू विल श्योरली गेट दैट इक्विडिस्टेंट पेयर्स, ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, this is a CAT 2003 question. 3, 11, 19, 67. How many terms are this? These are in AP, right? What is the AP? AP is of 8. Common difference कितने का? ये 8 है. So number of terms of AP का formula है, number of terms of an arithmetic progression is last term minus first term upon common difference plus 1. So if I do this, कितना आता है नंबर ऑफ टर्म्स? 467 minus 3 upon 8 plus 1. So this is 464, right? So 8 5s are 40, 8 8s are 64 plus 1. So there are 59 terms. ये भी odd number of terms है, right? So जैसे हमने तभी लिया था 7, उस टाइप का है, तो 59 टर्म्स है ये, ठीक है? सो 50, मैं ऐसे टर्म्स लिख देता हूँ पहले, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। व्हाट इज द 59 का हाफ? 59 का हाफ विल बी ये 1 2 3, ये जाएगा 28, राइट? दिस विल बी व्हाट? 28। Sorry, not 28, 29, right? 29 का double is 58, right? So 29, this number will be 30, then this will be 31, and so on so forth. ये last होगा 59 and 58 and so on so forth, right? ठीक है? नंबर्स कोई भी हो, ये नंबर्स डजंट मैटर, नंबर्स 3 हो, ये जैसे ये वाला नंबर 3 है,
ठीक है, फर्स्ट वाला नंबर 3 है, सेकंड वाला 11 है, उसने क्या पूछा, हाउ मेनी नंबर्स इट शुड पिक अप, ठीक है। सो डजंट मैटर विच आर दोज नंबर, आई जस्ट वांटेड कितने नंबर्स उठाने, तो इसलिए मैंने ये 3, 11, 19 को अवॉइड ही कर दिया, डोंट वरी। नाउ व्हाट इज सेइंग, S is a subset of T such that sum of no two elements. Now this is a very important line. किसी भी दो एलिमेंट का सम 470 नहीं आना चाहिए, द मैक्सिमम नंबर। लेट मी राइट, अभी फर्स्ट वाला नंबर कौन सा था मेरा, 3, सेकंड क्या था 11, देन क्या था 19 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये लास्ट वाला टर्म क्या है, जस्ट सी, इट इज 467, इट इज 459। कैन यू ऑब्जर्व, इट इज नथिंग बट इक्विडिस्टेंट पेयर। जो उसने 470 पूछा है, ये इक्विडिस्टेंट पेयर है ना, 3 + 467, राइट, 3 + 467। ये मेरा इक्विडिस्टेंट पेयर कब आता है, फॉर श्योर जब ये तो मैं उठा ही लूंगा यहाँ से 29, बट 29 उठा के भी श्योरिटी नहीं आएगी, राइट, पेयर बनने की। ये 30 से भी नहीं आएगी, राइट, तभी हमने एग्जांपल लिया था। इफ यू वांट आई जस्ट लेट रिपीट द एग्जांपल, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मुझे सम चाहिए 8, है ना, मिनिमम कितने नंबर उठाने पड़ेंगे टू इंश्योर द सम ऑफ 8, राइट। सो ये 1 2 3 से तो नहीं होगा, ये 4 उठाया मैंने, 4 भी 8 नहीं बनाएगा किसी से, बट जैसे ही ये 4 के अलावा मैं आगे जाता हूं, जैसे ये 5 लेता हूं, 5 किससे पेयर बना देगा, 3, 6 लेता हूं तो 6 2 से, कोई ना कोई तो पेयर पक्का बन जाएगा। सो दैट इज हाफ में +1 ये चौथा नंबर, एंड मिनिमम नंबर आई नीड टू पिक हियर इज 5, राइट। सो सेम लॉजिक, यहां पे मिनिमम कितने पे 470 सम आएगा, ये 30, राइट, ये 30 नंबर। जैसे ही मैं नेक्स्ट नंबर उठाता हूं, कोई ना कोई नंबर तो, बिकॉज उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्टनर है, दे आर इन द सिलेक्टेड रोज, तो यहां से मैं कोई भी नंबर उठा रहा हूं, उनका जो पार्टनर है दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड। सो 30 एंड 31। सो मिनिमम नंबर टू मेक श्योर कि आपका ये सम आ जाए 470 is 31, बट व्हाट ही वांट्स, ही डजंट वांट टू गेट अस द सम ऑफ 470, राइट, उसको सम नहीं चाहिए, और उसके लिए उसने मुझे मैक्सिमम टर्म्स पूछे एलिमेंट्स में। मुझे पता है मिनिमम 470 कब मिलता है, 30 पे, तो मैक्सिमम कितने पे नहीं मिलेगा, मैक्सिमम इन विच आई विल नॉट गेट इज इट नथिंग बट 30 तक देयर इज नो श्योरिटी that you will always get this 470 का sum. So answer for this particular question is 30. Okay, so please एक बार अगर ये concept में कुछ doubt है तो just revise, ठीक है, and still if you have doubt you can reach to me. Now this is again a good question. What it says, there are 50 basket of apples, each basket contains no more than 24 apples. 24 से ज्यादा उसमें कैपेसिटी नहीं है। There are at least n baskets containing the same number of apple. What is the value? At least मतलब मुझे minimize करना है, right? Again the worst scenario. So let's say ये basket 1, ये basket 2, ये basket 3, and so on so forth. Let's say this is basket 50, right? As I know, now see here there is no limitation on the apples. ठीक है, apples आपके पास कितने भी है, आपके लिमिटेशन है सिर्फ बास्केट पे, और सेकंड लिमिटेशन है बास्केट की कैपेसिटी पे, दैट इज 24 एप्पल, राइट। बट टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स कितने वो दिया भी नहीं है, एंड इट डजंट मैटर एज वेल, ठीक है। बस मुझे इतना करना है कि कम से कम ऐसे बास्केट चाहिए 50 में से जिसमें सेम नंबर ऑफ एप्पल्स हो, राइट। सो आई ट्राई टू कीप मैक्सिमम जितने बास्केट है उसमें अलग अलग एप्पल्स रखने के, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अगर पहले बास्केट में मैंने एक ही एप्पल रखा, दिस इज नंबर ऑफ एप्पल्स, ठीक है, मैंने पहले बास्केट में एक ही एप्पल रखा, तो दूसरे बास्केट में भी 2 रखूंगा, एक नहीं रख सकता बिकॉज मुझे सेम नहीं रखना है। तीसरे बास्केट में 3 रखूंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो ये कब तक मैं डिफरेंट रख सकता हूँ, बास्केट नंबर 24 तक, ठीक है। सो 24वें बास्केट में मैं 24 एप्पल्स रखूंगा, बास्केट 23 में मैं 23 एप्पल्स रखूंगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अभी 24 से मैं ऊपर रख नहीं सकता। अभी जो ये 25वां बास्केट है, इसमें मुझे कोई तो नंबर रिपीट करना पड़ेगा, राइट, इधर ऑफ दिस 1 2 3 कोई तो रिपीट होगा। तो लेट्स से मैं फिर से 1 से ही शुरू करता हूं। सो बास्केट 25 में 1, फिर से बास्केट 26 में फिर से 2, राइट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बास्केट 48 में क्या होगा, फिर से मेरा 24 तक आ जाएगा, ये है ना। बास्केट 47 में फिर 24 आ जाएगा, सो 23 आएगा। सो एटलीस्ट 2 बास्केट तो रिपीट हो रही है। स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 2 बास्केट्स, राइट। 48 तक ही पहुंचे ना। अब 49 में
फिर वही है, इन 24 में से मुझे कोई तो नंबर रिपीट करना पड़ेगा, लेट्स से 1 ओनली, एंड बास्केट 50 में लेट्स से 2 ओनली. नाउ टेल मी कितने बास्केट है जहां पे सेम नंबर ऑफ एप्पल्स है. सो इफ यू कैन सी बास्केट नंबर 1 इट हैज सेम 1, राइट, यहां पे भी 1 और यहां पे भी 1. सो देयर आर एटलीस्ट 3 बास्केट कंटेनिंग same number of apples, right? So this is the concept of it. Now the same, ये मैंने easy number पे दिया था, ये same question आ चुका है CAT में. Just let's see. Yeah, this is that question. That out of 128 boxes of oranges, ठीक है, each box contains at least 120 and at most 144 oranges. तो कितने number of oranges हुए ये? 120 से लेके 120 होगा, 121 होगा, so on so forth till 144. How many are these numbers? These numbers are 144 minus 120 plus 1. Don't forget this. This is 25. अच्छा, one more thing, just I forgot to mention. ये जो last हमने ये जो question किया इसमें एक shortcut भी है, ठीक है. So answer of this is 3. Let me give that shortcut. अगर इतना नहीं करना है, what is that shortcut? Just remember this shortcut. Simple सा question है. You can. कितने basket है total? 50. एंड कितने बास्केट की कैपेसिटी है? 24. जस्ट डिवाइड दिस, दैट विल कम आउट टू बी 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, राइट. सो योर आंसर विल ऑलवेज बी नेक्स्ट इंटीजर. 2 पॉइंट समथिंग समथिंग का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? 2 के बाद विच इज द इंटीजर? सो इट इज 3. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3. ओके, सो पर्टिकुलर अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आए तो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो कितने डिफरेंट टाइप्स के आप मैंगोज ये नंबर्स रख सकते हो ऑरेंजेस के इन दिस क्वेश्चन? 120, 121 से लेके 144 तक, राइट. सो कितने नंबर्स हुए? ये टोटल 25 नंबर्स हो गए जो आप रख सकते हो. सो व्हाट इज सेइंग? द नंबर ऑफ बॉक्सेस कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज एट लीस्ट. ठीक है, सो एक तो शॉर्टकट से आप आंसर निकाल सकते हो. 128. व्हाट इज द कैपेसिटी? डिफरेंट नंबर्स कितने हैं? जैसे 25 है ना, 25 नंबर्स आप रख सकते हो. सो दैट इज 128 by 25. So this is 5 is a 5 point something something. So आपका आंसर होगा नेक्स्ट इंटीजर. व्हाट इज द नेक्स्ट इंटीजर? नेक्स्ट इंटीजर इज नथिंग बट 6. तो आंसर हैज टू बी 6. ओके, दिस इज बाय द शॉर्टकट. ये जो भी हमने शॉर्टकट बताया था उससे एक बार बट नॉर्मल वे से भी देख लेते हैं. ठीक है, टोटल बॉक्सेस कितने आपको फिल करने हैं? 128 एंड द लोएस्ट इज व्हाट? 120. मैक्सिमम इज 144. देयर विल बी सच 25 नंबर्स. सो लेट्स से मैंने शायद एक स्लाइड से करते हैं. हाँ, सो ये बास्केट नंबर 1, इसमें आप कितना रखोगे? लोएस्ट 120 रख सकते हो. बास्केट 2 में आप रखोगे 121 एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये कितने बास्केट हो जाएंगे यहां तक? ये हो गए 25 बास्केट, राइट. अभी जो 26वीं बास्केट है इसमें से आपको कुछ तो रिपीट करना ही पड़ेगा. लेट्स से 26 बास्केट में आपने 120 रिपीट किया एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये हो जाएगा मेरा बास्केट नंबर 50, राइट. ठीक है, नाउ सिमिलरली ये कितना होगा? बास्केट नंबर 51. फिर से वो 120 से लेके ये लास्ट वाला 144. कितना होगा ये? 144. दैट इज 25 ऐड हो जाते जा रहा है. बेसिकली दिस विल बी बास्केट इज 75. रिमेंबर वी हैव हाउ मेनी बास्केट? 128 टू फिल अप, है ना. फिर ये होगा बास्केट 76. इसमें मैं 120 रखूंगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये होगा बास्केट 100. ठीक है, बास्केट 100 में 144 एप्पल्स आएंगे. दिस इज द नंबर ऑफ एप्पल्स. नीचे वाला ऊपर में बास्केट का नंबर है. फिर होगा बास्केट 101. इसमें भी 120 एंड लास्ट वाला होगा बास्केट 125, राइट. और ये होगा बास्केट 126 से लेके बास्केट 128. ठीक है, इसमें आएंगे 120. नाउ सी कितने आपके ये हो गए जिसमें रिपीट हो रहे हैं? कोई भी एक पेयर देख लो. सो मिनिमम एज यू कैन सी इसमें भी 120 है, इस बास्केट में भी 120 है, इस बास्केट में भी 120 है. कितने बास्केट हुए ये? दिस आर नथिंग बट द 6 बास्केट. 1 2 3 4 5 एंड 6. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर विल बी 6 बास्केट एट लीस्ट इन दिस केस, जहां पे आपके नंबर ऑफ ऑरेंजेस इट विल बी सेम, राइट. सो आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 6.
ठीक है, एज वी ऑल्सो गॉट इट बाय द शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या था, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके पास कितने हैं और हर बॉक्स में मैक्सिमम कितने कैपेसिटी है, तो आप 25 नंबर्स तक डाल सकते हो। ठीक है, सो आई होप आई वुड हैव मेक दिस कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक अ बिट सिंपल। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो आपको, प्लीज फील फ्री टू रीच अस, राइट।